How are you all? Okay. Last time we were doing gravitation. I was solving a problem in to calculate moment of inertia. Should I share it with you? Right. जरा देखिए question. But looks very simple. It says that there is a rectangular plate. Okay. Length is L. The breadth is B. And the question is, calculate moment of inertia about a diagonal, about the diagonal. Mass is M. It's a rectangular plate, and we want to calculate moment of inertia about the diagonal. निकाल सकते हो? Want to try this? Every time we have a class, I'll bring up some questions from the backyard. जो पहले आपने topics किए ना, so that it'll keep you active on those questions, on those topics also. The moment of inertia about the diagonal of this rectangular plate. Open the door. डायगोनल की लेंथ निकाल के बैठ गई. Acha, instead, see, how do you start thinking? That's the most difficult problem which students ask me, that how do you start approaching the question? If you could know the approach, then things will fall in line. Now, when I say that, how do you approach a question, then you go slightly backwards and think, why is this question a rectangular plate? Had it been a square plate, I mean, when I say a rectangle, I'll immediately coordinate it with or link it with a square plate. Okay, had it been a square plate, length L by L, and the question was find the moment of inertia about this, it would look so simple. And why so? Because both these diagonals are perpendicular to each other. If these two diagonals are perpendicular, that is 1, and 2 is that moment of inertia about this diagonal, because of symmetry, will also be equal to moment of inertia about this diagonal. So both the moment of inertias are same, and both the axes are perpendicular, which gives me an opportunity to use perpendicular axis theorem. So if I were to call this as Ix, and moment of inertia about this as Iy, which incidentally is equal to Ix, I know they're perpendicular also. So then that means that if I wish to calculate moment of inertia about this moment of inertia about this axis and about this axis will be same. Now, I also know that if in the same square plate, what is the moment of inertia about this? And what is the moment of inertia about this? They're again perpendicular. Therefore, the moment of inertia about this axis will be the perpendicular axis theorem. This plus this will be equal to the moment of inertia about this axis. If this is Iz, if this is Iy, and this is Ix, yes? Right. Now, I know that the moment of inertia about this axis is ml square by 6. Now, I can also say that the moment of inertia about this plus this, that is, say 2ix or 2yiy, is also, so Iy is, so if it is a square, then moment of inertia about this diagonal is ml square by
Now, when I approach this question, the first thought which comes to my mind is, if I were to use the same approach in this question, and I were to take this diagonal, they're not perpendicular. They're not perpendicular. So I cannot use the same technique in this question. And that is why this question becomes important. So the next thing is that since I cannot use this theorem, so the relevance of this diagonal and this diagonal is irrelevant. There is no use. What do I do then? What do I do then? Now, if I see it very closely, agreed that these two diagonals are not symmetrical or are not perpendicular to each other. If symmetrical, yes, but not at least perpendicular. But one thing is clear, that about this axis, this element and this element are definitely symmetrical. That means if I can somehow find the moment of inertia of this triangular plate about this and multiply it by 2. Yes or no? So the next question is, in case of a triangular plate, how do you calculate moment of inertia? Now, this question actually becomes this. I have this length L, this breadth B, and I want to calculate moment of inertia about this axis, about the third side. It's a triangular plate. Now comes an important theorem of a triangle. Do you know that theorem? Bataun aapko. If you have any shape of a triangle, be it regular, be it an isosceles, be it an equilateral triangle, any shape of a triangular plate, the moment of inertia about, say, this axis is equal to mh square by 6, where h is this height. Suppose I want to calculate moment of inertia about this axis. I need to drop a perpendicular here. Measure this, maybe I call it h dash, then the moment of inertia about this will be m dash. आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए. Note it down, please. Then I'll take it forward. Clear? इस थ्योरम को लिख लीजिएगा आप, काम की चीज है ये. Is it clear, girls? Now, moving forward, if I wish to calculate moment of inertia about this axis, I need this height. अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया है कि h कैसे निकालें. h आते ही question is over. How do you calculate h? You want to try it? बताना. क्लियर है? नेक्स्ट आगे दिखाना, चेक कर लेता हूँ. नेक्स्ट, ठीक है, पीछे ले जाओ.
Right, girls. Now let's see. Tell me one thing. What is the area of this triangle from this rectangle? Which is also equal to half h into this length. Which means h is LB which means the moment of inertia of this part, the total mass was m, so the mass of this will be by 1/6 into square of h into 2, because this is for this and this will be for this. Do you understand this? So when the perpendicular axis theorem cannot be used, then we use symmetry. We use the properties to find out the moment of inertia of these quantities. Is that clear? This is one thought I want to share with you. The second thought, can I rub this off? The second thought I wanted to share with you was that a lot of students who inquire, ask that how do you find the direction of friction in pure rolling? ये आपका भी concern है? लिखिए. Now let's understand one thing. If I'm standing on a frictionless surface and somebody pushes me from the back, will I topple or will I slide? Slide. Slide. It's irrespective of my height. Even if I have a huge height and somebody was to push me from wherever he wants to, from my head, from my back, I'm going to go to slide. But if this surface has a certain amount of friction and there is somebody who's pushing me, there are two things which are possible. A, I topple or I slide and then finally topple. Either I slide or I topple. So the essential requirement of toppling is friction. And when I say rolling about the center of mass, it also means rotation about the lowermost point. मालूम है या नहीं है? What I'm saying is that if I say that this body is undergoing a pure rolling motion, which means pure rolling motion is with respect to the center of mass. It means the center of mass has a certain velocity, VCM, and an axis is passing through the center perpendicular to the plane with the angular velocity, omega. So I say that the body is pure rolling, which also means that this point of contact has no velocity. So which actually means that the whole thing, which is rolling about the center, is rotating about this point of contact. Which means this body is actually toppling about point P. Topple ही हो गया ना? If it's a pure rotation,
इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी hinged है. It's sort of a hinge which keeps changing every time. It's not a fixed hinge. The next moment, this point is going to come down and this will become the hinge. But at that moment, this whole body is going to remain hinged at the point of contact. And the point of contact keeps changing. Which means that it's like toppling about point P. And I just now told you that if you have to topple a body, you need friction. But the question is, how much friction? One thing is for sure, that you require friction. Without friction, toppling is not going to happen. Without friction, rolling is not going to happen. But how much friction do you need? Now, friction lies between a minimum to a maximum value. The minimum value is 0, and the maximum value is mu n. Mu into n. अब क्या वैल्यू होगी प्योर रोलिंग के लिए? 0, mu n, या कहीं बीच में? Up, if it is mu n, then the body will start sliding. And if it is 0, then what happens? The body again slides. If there is no friction, you apply a force, the body starts moving. But the tragedy is, and it is ironical, that a body slides when there is no friction, or the body slides when it's maximum friction. You agree? That means if toppling has to happen and no sliding has to happen, I mean, either it can be toppling or sliding. So if it is sliding, it is a maximum frictional force, mu n. So that means if it is toppling, it has to be less than the maximum frictional force. ये बात पक्की है, that if a body topples or a body rolls, the friction has to be greater than 0 and has to be less than mu n. So one thing is for sure, that when I'm talking about a rolling motion and I need to know the role of friction, for sure, friction has to be greater than 0 and less than, not, I would not say equal, will be less than. You agree? But ये क्वेश्चन तो अभी भी unanswered ही रह गया. कितना? रेंज मालूम हो गया, पर कितना? Now, आप एक बात समझिए. Why are we so finicky about the role of friction in a rolling motion? Maybe in a rigid body, we are very serious, or we want to be very clear that what is the role of friction in a rigid body. Thought will come, जैसे मैंने आपसे कहा, हमेशा relate करो. If it is not a rigid body, then what happens? Then what is the role of friction in a non-rigid body? Let's see. A non-rigid body would mean a dimensionless body. A practically it is not possible. You cannot have a practical dimensionless body, but you can definitely have a body whose mass or size is very small as compared to the surroundings. A point mass is not what you say. If I say that the coefficient of friction is 0.2, and the mass of the body is, say, 1 kilogram, and I am applying a force of, say, 30 newtons. Even before starting the question, the first thing you would do is to find the maximum value of frictional force. Mu into n, 0.2 into 1 into 10, which is. So even before I started the question, on a point mass, a non-rigid body, I have already calculated the maximum frictional force. And I also know that right now, because the applied force is greater than the maximum frictional force, so the frictional force which is acting right now is 2 newtons. Also, I know that the direction of this frictional force will be backwards, which means 30 minus 2 by 1, which is 28 meter per. So in a point mass system, everything is clear. I know the direction of friction. I know the magnitude of friction. Everything is so clear. But just have a look at it. If I replace this body, say with a ring or a disc or any rigid body, and I do the same thing by applying a force, maybe here or maybe here,
or maybe anywhere in the middle. The same force, the same mass. Let me take the radius as 1 meter. As I told you, if this body is pure rolling, if this is pure rolling, then frictional force could lie anywhere between these values. So I'm not aware of what the frictional force is. Number two, I'm not even clear what is the direction of frictional force. I don't know whether it is acting forward or it is acting backwards. So I have to assume the magnitude and the direction of friction in questions related to pure rolling. Like for example, I decide that आपको क्या लगता है फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए ना, काम करते हैं, डिसाइड करते हैं फ्रिक्शन सपोज आगे लग रहा है. Now we'll prove that if I have taken friction in the forward direction, which I don't know, so if my assumption is wrong, then the answer should be different. But we'll prove that irrespective of the direction of friction, the acceleration does not change. If it is forward, friction will be plus, positive. And if I have calculated, I've taken it wrongly, then friction automatically will be negative. Like for example, if I were to write this equation, क्या लिखोगे आप equation? Suppose I take this as mass m, radius r, and moment of inertia ic, and this force is F. What will be your equation? So pure translational will be and pure rotation about the center of mass is going to be and my constraint equation is going to be that since this body is pure rolling, therefore the net acceleration of this point in the tangential direction is 0. ये body को ऐसे rotate कराएगा ना, ये इसको ऐसे कराएगा, ये इसको ऐसे कराएगा. इसका tendency ऐसे होगा, इसका tendency ऐसे होगा. क्योंकि आपने इसको FR को बड़ा माना है, तो उसका net tendency. So this R alpha is going to go backwards, ACM going to be forward. So I can say ACM equals. Can you solve these equations and tell me the value of frictional force? निकालना. Solve these three equations and find the value of the frictional force. Yes, you can take a cube as a rigid body for sure. We can definitely take cube as a rigid body. Jaldi, jaldi, jaldi. Move fast. Find the value of frictional force. Anything, ICM. The moment of inertia of this rigid body is ICM. So let it be a general case. क्या आंसर आ रहा है? What difficult है? Very difficult. क्या आंसर आ रहा है?
want me to solve it for you? मतलब हाँ, इसका मतलब चुप मौन रहने का मतलब हाँ ही होता है. Tell me one thing. इसको मल्टीप्लाई कर दूं R से और इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या आ गया? And what is alpha equal to? आ गया आपका ACM. ACM कॉमन ले लूं, R से मल्टीप्लाई कर देता हूं. वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना? दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. So that means acceleration center of mass is along the positive x-axis. Friction कैसे निकालोगे? इसको यहां साफ कर देता हूं दोबारा. F कितना आ गया? What is ACM? F कॉमन ले लेता हूं. कितना आ गया? रिस्पॉन्ड आया ना? स्लीप मोड पे तो नहीं हो ना? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि ठंड बहुत लग रही है तो क्लास के बीच बीच में हल्का हल्का सा, ऐसा तो नहीं है ना? Very good. You know the importance of these classes, don't you? You know the importance these 2 years is going to make to your life. Are you clear on this? Every time, I mean, I always ask my students to keep a sheet which says, एक नोट, एक लाइन लिख लो और उसको अपने बोर्ड पर लगा लो जहां भी आप पढ़ाई करते हो. This is my reason to become successful in life. This is my reason to crack IIT-JEE. Never forget that. It's called, very famously it is called the Y sheet. क्या बोलते हैं इसको? Always have it with you. The Y sheet has those things which are very important to you. My parents, I'm doing it for my parents, I'm doing it for myself. I'm doing it because nobody has done it in my family. Why is it so important for you to crack this exam? Keep a Y sheet. When you have a Y sheet, then you will not sleep. It'll keep you awake. So my dear girls, what did I finally find out? Respond. What is the value of frictional force? सब लोग जोर से बोलेंगे बिना देखे. आवाज नहीं आ रही. Louder. जोर से एक साथ सब बोलेंगे एक स्वर में. मैं बोलता हूं भी. I become a musician. ऐसे करते ना? What is so special about this result? It tells you two things. That if ICM is mr square, which is in the case of a ring, the value of frictional forces, theoretically yes, you don't require friction.
if you're applying a force here, in case of a ring. It also tells you that suppose I take a disc. What is ICM for a disc? Wow. फ्रिक्शन कितना हो गया? इसी जन्म में बता दो, इसी जन्म में प्लीज, आई बेग. कितना? क्या? राइट? टक टक. कितना आ गया? So it's so beautiful, it's so amazing. अब आपको मालूम है कि if the force is acting here and he says at disk, where is the frictional force acting? It's positive, it's acting forward. What is the magnitude? The magnitude is F by 3. And if he says इस वक्त mu इस surface को कितना चाहिए कि ये pure roll करे, तो आपको लिखा है ना, बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा था मैंने, that F has to be less than, which means what? Which means mu n is greater than, so mu has to be greater than, इसको ले लेता हूं. Oh, I like it. Oh, I love it. अब J में क्वेश्चन आएगा, applied force equals 4 mg. What is the value of coefficient of friction to start pure rolling? ये कितना हो जाएगा? 4 mg. तो कितना हो गया? Fantastic. लाइफ चेल हो गई. लाइफ बिकम सो सिंपल. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आप तैयार हो गए. हाँ है ना? नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन. अभी तक आपसे जो क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे, अब हो जाएंगे. प्लीज एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ए अगेन इन दिस क्वेश्चन. ओके, ये दिस इज परफेक्टली फाइन. I've just multiplied those two equations, added them, we get ACM. अच्छा, what is so special about this ACM? Just imagine, अभी हमने F कितना लिया था? आवाज नहीं आ रही. फू 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 क्या? फू फू. आवाज निकालो जोर से. 4 mg. तो अगर मैं F को 4 mg ले लूं और डिस्क ले लूं, ACM निकालना. Calculate ACM. If F is 4 mg and it's a disk, ACM कितना हुआ? देखते रहो उसको घूर घूर के, कर मत लेना. इसी जन्म में जीवित रहते हुए देखना चाहता हूं. मेरी ये इच्छा तो आप पूरी कर ही सकते हैं. 16 कितना आवत है? ओए हाय, इसमें भी 1 साल लगा दो. 16 जी भाई, मजा आ गया. पक्का. अब एक होमवर्क दे रहा हूं आपको. क्या दे रहा हूं? जो कि हमें करना नहीं होता. होमवर्क का मतलब पता क्या होता है? ये तो हमें करना ही नहीं. जीवन में मैंने देखा है, जिसको मैंने होमवर्क दे दिया, कभी जवाब ही लौट के नहीं आया. लेकिन आई एम श्योर कि ये लड़कियां तो तूफान मचाने वाली हैं, तो ये तो मौका छोड़ेंगे नहीं. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दैट विल बिकम अ जनरल केस. लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी? आप मुझसे अगला सवाल आपका होना क्या चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होना क्या चाहिए? रिजिड बॉडी नहीं तो फिर गला ही घोट देंगे. बात तो रिजिड बॉडी की ही हो रही है. रिजिड बॉडी ना हो तो फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं. रिजिड बॉडी है, लेकिन बोलो लेकिन सरफेस, हाँ वो भी कर सकते हैं. दैट्स अ गुड थॉट. एक काम करते हैं, अभी आपने वेयर डिड यू अप्लाई द नेट फोर्स? कोई कसम थोड़ी खा रखी टीका लगा के कि जे में क्वेश्चन फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगी. कहां लग सकती है? कहीं पर भी. द गुड आंसर इज कहीं पर भी. तो चलिए कहीं पर भी लगा लेते हैं, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द सेंटर को ले लेते हैं. कैन यू राइट द इक्वेशंस?
in my entire lifetime, if ever I've asked a student which topic in physics you find difficult, rotation. 11th में आने से पहले सबसे डिफिकल्ट रोटेशन, 11th करने के बाद रोटेशन, 12th करने के बाद मेरी तरफ करके दिखाओ उसी आवाज में रोटेशन. अभी हम क्या कर रहे हैं? रोटेशन. आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे ये रोटेशन के अंदर दिस यू शुड बी द मास्टर्स इन दिस. कोई भी चीज जो आपकी कमजोरी है सबसे पहले उसको ठीक करना है ना? नहीं तो फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ सिस्टम हिला डोला सा रहता है. यू आर सॉल्विंग ग्रेविटेशन बट योर माइंड इज इन रोटेशन. यार वो है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पहले सारी चीजें सेट कर दूं. तो मचाइए, फ्रिक्शन कहां लूं? वेरी गुड. इक्वेशन बताना, प्योर ट्रांसलेशन. ये चलेगा? प्योर रोटेशन बोलना. राइट. एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन. पक्का निकाल सकते हो एफ की वैल्यू? मजा सा आ जाएगा. आपको पता है ना करना क्या है? पहले एफ को उड़ाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? आर से. मचाओ मचाओ. जल्दी जल्दी मूव मूव जल्दी. हाथ तेज चलना चाहिए. मूव मूव योर हैंड फास्ट. और मेंटल कैलकुलेशन करते रहो, मुंह से अपने आप बोलते रहो. आ गया? क्या है? अल्फा भी तो एलिमिनेट कर. अल्फा नहीं एलिमिनेट करेगी. यस, आपको अल्फा भी तो एलिमिनेट करना है. क्या आ रहा है तेरा? कुछ तो गड़बड़ है. ये क्या एसीएम निकाला है? फिर फ्रिक्शन निकालो उसके बाद. दिखाइयो. मतलब तेरा ये आर ऊपर आ रहा है. एफ आर इंटू एफ आर, आर प्लस एक्स. लुक्स गुड. फ्रिक्शन निकालो. दिखाओ. ये क्या है? एक है जबरदस्ती. जबरदस्ती एसीएम ना. फ्रिक्शन निकालो ना. जल्दी 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 जल्दी. मूव फास्ट मूव फास्ट. Yes, I have multiplied f by x because I'm calculating, Mr. D.K. Gupta, I'm calculating torque about the center of mass. So if this force is F and the distance of this application of force from the center of mass is x, then the torque will be F into x.
Yes, my dear. What is the value of ACM? FR into? Fantastic. Very nice. And F? Bolo. Yes, girls, jaldi. इसीलिए that is why I'm deriving this for you, because you have to remember this result. क्या आ रहा है फ्रिक्शन? सॉल्व कर इसको और सॉल्व छोटा कर. यस माय डियर. कितना बताया? M You are absolutely fabulous, girls. I want you to remember this result, and I want you to remember this result forever. For the value of friction and for the value of ACM. अभी आपने देखा कितना सारा टाइम लगाना करने में, तो ये एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा. I can't do it in exam. I need to remember these results. करो करो जल्दी करो. Now see the advantage of this result. Suppose he says that there is a rigid body. And it's a disk. He says, I'm applying a force F. And the body starts pure rolling. And the body starts. Where should I apply force F so that the body starts pure rolling? ठीक है? Okay? Or he says, where should I apply X so that friction is in the forward direction? MRX has to be greater than or equal to. So my X has to be greater than or equal to. For a disk it is. Yes or no? आप जानते हो उसका मतलब क्या हुआ? अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, I have a disk. This is the center. This is R/2. And I am okay. This is R/2 ना? R/2 हुआ ना ये? ये क्या मतलब हुआ इसका? X greater than R/2 का मतलब क्या हुआ? रिंग के पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपने क्या प्रूव किया? MRX is greater than ICM. Should be greater than ICM for friction to be forward, which means X should be greater than, which means the friction is not acting in the forward. हाँ या ना? आई बात सही में? क्योंकि अगर मैं मैक्स वैल्यू, सपोज मैं कहता हूं मैं तो R/4 पे लगा रहा हूं फोर्स. कहां लगा रहा हूं? And I have a disk. Let me calculate the value of friction. What is the value of friction? यही है ना? सिर्फ डालना है, fill in the blanks करना. F into M R into minus
अपॉन कितना वैल्यू आया? Calculate it. What is the value of frictional force? जल्दी, नेगेटिव आ रहा है ना? कितना कितना कितना? आप जल्दी करिए। माइनस समझे बात? नहीं। Question is, I have a disk. I am applying a force at a distance r/4. Where will the frictional force act? And what will be its magnitude? ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको. What I'm trying to say is, if you have this expression and you know x, you can find the direction of whether it is forward or, if it is a plus, it's forward because you've taken friction as in the forward direction. लिया ना आपने? And if f comes to be negative, then the friction is acting in the, note it down please. So these two expressions are extremely important. Should I explain it again, or you are clear with this? Pakka na? Because there are a lot of questions in which the value of friction, the direction of frictional force is asked. A question likho. This problem came in J 2002. Draw an inclined plane. एक inclined plane बनाइए. The question is that a body, a rigid body, or a cylinder rolls up the inclined plane ऊपर जा रहा है, reaches a certain height and then rolls down throughout the motion. What will be the direction of frictional force as the cylinder goes up and when it comes down? किया आपने पहले? कहां पर? नहीं, कहां करा आपने? ये आपने क्वेश्चन आया था. अब एक काम करिए, ये अप्लाई दिस फॉर्मूला करना जरा. So when this body is going up or it is coming down, friction की वैल्यू कितनी आएगी? First of all, where will the force act? At the कितना? ठीक है. Let me take the direction of frictional force upwards. The fill in the blanks करना. It's a solid cylinder. So solid cylinder means ICM is mr square by, निकालना f का वैल्यू. जल्दी जल्दी जल्दी.
Why so much of time? कितना आ रहा है? F by 3. Positive, negative. Where is it acting? Now you also know the magnitude of friction. आपको पहले आपने उससे किया होगा ना कि ऊपर जा रहा है तो clockwise torque होगा, anti-clock. But if they ask you what is the magnitude, you know it. If they ask you what is the direction, now you know it. This is called completion of a concept. एक और सवाल लूंगा and then I'll move on to properties of matter. एक लिखना बड़ा interesting question था ये. See, he says that there is a circular platform in a horizontal plane. लिखो, a circular platform is free to rotate. A circular platform. ये तो मैंने बता दिया ना. Why have we multiplied with x? This is done. In the previous questions, my dear, this is a solid cylinder. And he says it is pure rolling. So I can directly use this expression for friction. The value of friction is F mrx minus ICM अच्छा जो मैंने बोला ओके रिपीट दिस क्वेश्चन अच्छा वो तो मैं बता ही रहा हूं अभी आप सबसे पहले क्या बनाया आपने a circular platform in the horizontal plane rotating about an axis fixed at the center. Now what happens is ऐसे सिंपल है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये एक्सिस पास कर रही है रोटेट कर रहा है अभी क्या होता है it's like this okay ये axis है now what happens is it's a platform it's a disc it is rotating now suppose I construct a path एक rod रख दिया मैंने a massless rod this mass is not going to interfere with anything else this is the axis about which the whole thing is rotating now what happens is there is a boy who's standing here and he starts moving with respect to this platform with a constant speed velocity v and the radius is r clear now he gives you 4 options regarding the angular velocity of this platform with respect to time so I'll just make those 4 options. This is the first option. It started with an angular velocity omega naught. So with time, the angular velocity will change or not. That is what he's going to ask you. He's asking you, this is time. The second is, the third is and the fourth is this. Sochna. Which is a possible option? A, B, C, D. Now there are 2 ways to handle this question.
A, I solve it. B, I don't solve it, but yet I get the answer because I have less than 2 or 3 minutes. If I have to solve it, मैं आपको वो भी टेक्निक बता देता हूँ. If I don't have to solve it, आपको वो भी टेक्निक बता देता हूँ. आप मुझे एक बात बताओ. Assuming that this body had a moment of inertia ICM. When this object is here, when this man is here, what will the moment of inertia then? ICM plus one thing is for clear, one thing is for sure, that the angular momentum of the system with respect to this is going to remain. Why? Because when this man is starting moving, he will apply a frictional force. There will be a frictional force on this man in the forward direction and on this in the backward. So the net force is, it's in the horizontal plane. Mg has no role to play. That means the net torque about this point is, therefore the angular momentum of the system can be, ये तो ठीक है ना? अच्छा, बचपन में इसका angular momentum कितना होगा? या फिर अगर ये आदमी बचपन से खड़ा था तो फिर ये होगा into, when this boy comes here, will this distance be less or more than this? Will the moment of inertia increase or decrease? Decrease. Will it decrease or increase? This length is decreasing, so this value will start decreasing. Therefore the angular velocity will start. Therefore this is incorrect. This could be correct. This is definitely incorrect. I mean, even this could be correct. This is called method of elimination. आपने दो ऑप्शंस पहले खत्म कर दी, अब आपको इधर ध्यान नहीं देना. There are only two options, you know. Yes or no? Now when you see these options, there is a thought which comes to your mind. I mean, this looks like a parabola and this looks like a straight line. This looks like a, अब देखना यह है कि इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगी, वो सब इस पर डिपेंड करेगा. तो आर स्क्वायर जब आएगा तो क्या आएगा भाई? आप क्या करोगे? सपोज ही स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इन टाइम टी ही मूव्स अ डिस्टेंस. बोलो हाय ना. राइट, आई नो दिस लेंथ. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. I can find this length. If I know this and I can also find this length. It will always be a square function. And the square function is always moment of inertia. Square तो आना ही है. Distance का square. और distance में vt आएगा. तो मतलब v square t square आएगा. और t square आएगा तो parabolic होगा. तो कहानी खत्म होगी बस. Are you understanding? So this is what this knowledge, one thing. Art of attempting a paper is a separate thing. आपको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, वो आपको आर्ट सीखनी है. क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, नाउ आई कैन मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. स्लाइड 1 दिखाइए. What is this chapter all about? Properties of matter. Matter is solid, liquid, and gases. तीन चीजें ना? Solid, liquid, and. So in this chapter, we are going to study solids, and then liquids, and then gases. The most important property which solids have or should have is elasticity. So this chapter starts with elasticity. Just read it. जरा ध्यान से पढ़िए तो सही इसको. जोर से पढ़ के बताएगा कोई? क्या लिखेंगे आप? पढ़िए जरा. It says in a rigid body. चलो, I'll read it for you. कुछ मत करना तुम लोग, सिर्फ बैठे रहना, डाउट्स पूछते रहना. In a rigid body, the distance between any two points is fixed. Do you agree? Right? When external forces are applied, the body may get deformed. Obviously, all deformed bodies regain their shape or size after removal of the deforming force. And this is because of,
So somebody asks you, sir, आप deforming force लगा रहे हो, ये वापस क्यों आ रहा है? Restoring forces, elastic forces, internal forces. The characteristic of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after removing the deforming force is called perfect. Perfectly elastic bodies. Obviously, force हटाने के बाद जो अपनी position perfectly inelastic or plastic bodies आना ही नहीं. And what are partially elastic bodies? They partially regain their form. It is quite possible that a pure elastic body or a perfectly elastic body after some time start behaving as an elastic body. एक रबर बैंड है, खींचा आपने, वापस आ गया प्योर इलास्टिक, और खींचा वापस आ गया परफेक्टली इलास्टिक, और खींचा पूरा वापस नहीं आया, तो क्या हो गया वो? ईक्स. तो क्या बन गया वो? So same rubber band can behave differently also. Next slide. Now we define something called a stress. Stress क्या होता है? ये तो हमारे लिए बड़ा कॉमन है ना. I'm not talking about psychological, emotional stresses. Stress in a solid. What is stress? It's a restoring force. If I place a body on my hand and apply a force, it starts moving. No stresses. है ना? Stress कब होगा? गलत. This is true for strains, not for stresses. You can have a stress in a body, but not yet have strains. मैं समझाता हूं. You have an elastic rod and is kept on a frictionless surface. So if I'm applying a force here, the body accelerate karegi. But will the stresses be there or not? Will this body have stresses or not? Tension develop होगी. आप एक बॉडी को जब एक्सेलरेट करते हो, सिंपल मास लेंथ L, when you accelerate this body, will the tension force act in the body? Why not? No, sir. No force, sir. पूछो क्यों? पूछो फिर बताऊंगा. हाँ, यूं नहीं बताता मैं. पूछो पहले. मैं ही बता दूं जवाब, मैं ही आंसर दे दूं, मैं ही सवाल बता दूं. यूं तो बड़ी गलत बात से है जी. हाँ बता रहा हूं. आपके पास एक ब्रॉड है. फोर्स कहां लगा रहे हो? इधर. ये क्यों मूव कर रही है? ये पार्ट क्यों मूव कर रहा है? ये सेंट्रल पार्ट क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ टेंशन. और टेंशन क्या होती है? रेस्टोरिंग फोर्स. तो लगे कि नहीं लगे स्ट्रेस? हुए नहीं हुए पैदा स्ट्रेस? हुए. वेरी गुड, आई लाइक इट. अब हाउ मेनी स्ट्रेसेस कैन यू हैव? इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिक्स, जेई, कोल्ड, विंटर्स, इसके अलावा कुछ रेगुलर स्ट्रेसेस की बात करते हैं. We define stresses as normal stress. क्या होता है normal stress? When you are applying a force on a body normally to its cross-sectional area. ये body है, इसका cross-sectional area trapezium type है. Trapezium type है ना? And I'm applying a force like this. Actually like this. So it's normal. अब चाहे ऐसे लगाऊं, चाहे ऐसे लगाऊं, if my force is perpendicular to the area of cross section of the body, then that stress is called, नाम ही कितना सिंपल है, नॉर्मली है. और क्या हो रहा है? वेरी सिंपल. सो क्या लिखा मैंने? The intensity of the internal force perpendicular or normal to the section is the area of cross section, is called the normal stress or the axial stress. That is taka tak tak. If restoring force developed is perpendicular to the cross sectional area chosen, then the corresponding stress is called the normal stress. It is also known as. This will be with you. मैं नहीं चाहता कि मैं इसको लिखूं, आप इसको लिखें, मजा नहीं आएगा. This is in the slide. Please mail it to them. So you will all have these notes. Easy हो गया ना काम?
We're saving a lot of time. Slide 2, मतलब 4. Normal stresses are of two types. As I said, भाई एक तो आप body को pull कर सकते हो और एक body को push कर सकते हो. Tensile stress is when you are applying a force outward. If the area of cross section is this and you are applying an outward force, it is called tensile. पढ़ के देखिए. अच्छा, जब आप outward force लगाओगे तो उसकी length increase करेगी, decrease? Oh, I like it. So if there is an increase in the length or extension of the body in the direction of force applied, the stress setup is called a tensile stress. So when a solid cylinder is stretched now, ये तो बड़ी गलत बात से, ये ऊपर ने लगा लिया, नीचे लगाना पड़ेगा ना. Very bad. इसको छोड़ दो आप. तो क्या लिखा है जी? When a solid cylinder is stretched by two equal forces applied normal to its cross-sectional area, the restoring force per unit area is called a tensile stress. Next slide. Second is, तो वो जो फिगर दूसरा था ना, वो इसका था, बट दोनों फोर्सेस लगानी पड़ेंगी आपको. आपने कभी नोट किया है in both the diagrams I've shown two forces. काय को मूव कर जाएगा, स्ट्रेस होगा क्यों? स्ट्रेस तो तब होगा ना जब वो मूव, या फिर इन सर्टेन केसेस मूव करेगी और इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होंगे, स्ट्रेन्स पैदा नहीं होंगे. बट व्हेन यू हैव टू अप्लाई a stress, it has to be equal and opposite forces on both sides of the body. Clear? Next. Tensile or compressive stress can be termed as I told you, it is also called longitude, because it's along the length. It increases the longitudinal length. If the two parts of the body on the two sides of cross section, what I'm trying to tell you is, suppose you have a body and you're applying forces on both the directions. Somebody says, sir, मेरे को तो ना इस part को देखना है. I want to understand this part. If there is no acceleration, इस point पर भी जो force लगेगी वो force F ही होगी ना. If the acceleration is 0, then every section has a net force 0. Any section. So if I split this section, bring it here. So अगर F इधर लग रहा है तो इस section पर F, ऐसा section 2. That means when we are talking about a single rod, any part of the rod also experiences the same stress as the entire rod. इसको दिखाने का मतलब यही है कि अगर एक rod है, उस पर stress इस वजह से क्योंकि net force 0 है, तो any section of the rod also has 0 force and is experiencing the same stress as a single body. Clear? Similarly, take this. This is tensile and this is compressive. Similar thing. Next. Now, examples of normal stresses. A wire, elastic wire, hang a mass. The force is perpendicular. Second case, it's a floor and you place a concrete. ईंट रख दिया, ईंटा, तो क्या करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए स्टार्ट करिए. पढ़िए तो. करिए. You know, why this question is given is,
It's a beautiful question in a way. You're hanging a 600 thing here. Its weight is 600, and the weight here is 6,000. He says, identify the stronger material. अब देखने से stronger material तो यही लगता है. But the strength of the material is not the weight it supports, is the stress it can bear. So this is the basic first question which will tell you the difference between when you say a stronger material. It is not just about weight it holds on to. It is the stress it can hold on to. And stress will be also dependent on the area of cross section of the wire. So when you say 600, then you see this. And when you say 6,000, then you see this. You have to compare F by A1 and F by, so इसके हिसाब से A is a more strong. So the very fundamental and a very basic question. Note किया आपने line? That stresses, I mean, a stronger body is not which holds on to more weight, but a stronger body is one which can hold on to great stresses. इसीलिए हम एक term use करते हैं breaking stress and not breaking force. आपने कभी सोचा हम stress पढ़ ही क्यों रहे हैं? What was wrong in force? So this question tells you the difference between a force and a stress. Clear? Next slide. Now, yes, there is a second category. आप जानते हो, मुझे पता है. You must be aware of it. क्या है second category? Shearing or tangential stress. Where do you experience shearing stresses? Have you observed somewhere? Notice क्या shearing stresses क्या होते हैं? Scissor. Scissor is a case of shearing stress. बिल्कुल सही बात है. And the most interesting part about a shearing stress is it is a tangential stress. See, अभी आपने बोला if the restoring force is perpendicular to the area of cross section. क्या बोला आपने उसका नाम? Normal stress. So there has to be a tangential stress also. So if you're applying a force tangentially, but this looks very funny. How can you have a force acting tangentially and producing stresses? ये कैसे possible है? But till the time you don't apply a force practically, it should not develop stresses. But how do you have a tangential force developing stresses in a body? You can take a case like this. जैसे आपकी ये notebook है. It's a very prime example, a very simple example also. Udaan textbook. Wow, I like it. मैंने इसका वो भी कर दिया publicity. Okay. So you have this book like this. Now, अगर मैं इस नीचे वाले surface को fix कर दूं, तो मैंने ensure कर लिया कि relative motion होगा ही होगा. Now, if I am applying a force tangentially, what happens? It goes like this. बड़ी पक्की bind करा रखी है. इसका दूसरा मतलब ये कभी किताब कभी जीवन में खुली ही नहीं. ये हजारों पेन हटा दूं आपके, इन हजारों पेन को. This is much better. So if this is fixed and apply a force like this tangentially, ये ऐसे मूव करेगी ना, आप इसको रिलीज करके वापस आ गए ना ये. So this is tangential stress. The notebook is a good example. लीजिए हजारों पेन के साथ. Third, repeat the question. Difference between stress and pressure बताइए. भाई दोनों की यूनिट सेम है. Stress is force upon area and pressure also is. What is the difference? Absolutely. You define stresses in solids and you define pressure in fluids, liquids. Next. Next slide, sir. Yeah. A way to show you the difference. Like suppose there is a body. I'm applying a force at a certain angle. This will become the normal force and this will become a tangential force. This will give rise to a normal stress and this will give rise to. I'll take a question on this. Next slide लेना sir. अभी अगला सवाल से सब समझ में आना. Next लो. Next. आगे. हाँ, यही समझाएगा आपको सवाल. पढ़िए तो. This question will explain what you didn't understand earlier. It's a cylinder. बड़ी अच्छी बात है. A bar of a cross-sectional area A is subjected to two equal and opposite tensile forces at its end. He says, consider a plane section of the bar
whose normal makes an angle theta with the axis of the bar. समझे आप? ये क्रॉस सेक्शन है. This is the axis, right? This makes an angle theta. What is the tensile stress on the plane? और इसका C पार्ट भी करिएगा. For what value of theta is the tensile stress maximum? करिए. Tensile is the normal stress. करिए. So pressure also appears in solids. See, अच्छा अभी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं पहले. He says pressure also exists in solids. So why do we say it's only in liquids? Any idea? मैं बताता हूं. Liquids में when you define pressure, you don't define pressure, instead you call pressure intensity, because you calculate force on a unit area and a very small area. When you talk about stresses, then the area is not small, it is area of cross section. So actually, if I were to say, then if I want to use pressure in solids also, then I will take pressure intensity for liquids. Are you getting my point? So when it is for a very, very small area, you use it for pressure in liquids, and in solids you use stresses. And the other difference is scalar and vector. A stress is a vector and a pressure is a, but कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बोल सकते हो pressure intensity, बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. Stress can also be called as pressure intensity, doesn't make any difference. जी करिए. ये क्या शो कर रहा है एरो? इल्ले. Wrong. What is it showing? It is showing you the area vector. Area scalar है, vector है. What is area scalar? अब प्रॉब्लम हो गई, पूछो कैसे? Suppose I take this cylinder. एक सिलेंडर assume करो आप. लिक्विड इधर से एंटर करता है, इधर से एग्जिट करता है. ठीक है. आप अगर इस सिलेंडर को मैं रोटेट कर दूं और फिर लिक्विड को भेजूं, तो क्या सारा लिक्विड क्रॉस करेगा? एक ऐसा करते हैं. चलो. ओ गॉड, कौन है ये? पीछे घूम रही है, हाथ धो के पीछे पड़ी है. वेरी बैड. इमेजिन माई हैंड. लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस. If I say how much liquid passes through this, आप कहोगे सर सारा. और अब सारा नहीं. और अब इस हाथ से बिल्कुल भी नहीं. अब इसमें कैसे, how do I define this? Liquid is same, area is same, area is length into breadth, fixed है. Liquid जो आ रहा है उसका volume भी fixed है. But by moving this hand, the volume of the liquid which is passing through this changes. So instead of area, we define area vector. कैसे? मैंने कहा ये मेरा हैंड है. एरिया वेक्टर, सर ये सीबीएसई वाला क्या करता है? ठीक है. ये हैंड है मेरा. आई एम डिफाइनिंग एन एरिया वेक्टर विच मीन्स अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू माई हैंड. ठीक है. आउटवर्ड नॉर्मल दिखाते हैं. आउटवर्ड मतलब अगर मैं इधर खड़ा हूं तो ये डायरेक्शन होगी, और मैं इधर खड़ा हूं तो फिर ये डायरेक्शन होगी. अगर ये टिप को मैं डायरेक्शन मानता हूं तो. अब देखो एडवांटेज क्या हुआ. सपोज आई डिफाइन द वॉल्यूम एंटरिंग दिस हैंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लो डॉट ए. ए इज द एरिया वेक्टर. एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 180. डॉट कितना हो गया? 1 और -1. नेगेटिव मींस अंदर जा रहा है, पॉजिटिव मींस बाहर जा रहा है. अब सपोज मैं ये लेता हूं, ये क्या हुआ? एरिया वेक्टर हुआ ना, और लिक्विड का डायरेक्शन ये हुआ. सो व्हाट इज v डॉट a इक्वल टू? मैक्सिमम.
V भी इधर है, A भी इधर है, तो एंगल कितना हुआ? 0. सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू? मैक्सिमम V डॉट A, राइट? अब अगर ये एरिया ऐसे होता, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती? और लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे ऐसे. एंगल कितना हुआ? तो वॉल्यूम कितना फ्लो हुआ? So in certain quantities where the orientation of angle became important, instead of using area as scalar, we started using it as a vector. Are you understanding now? So the concept of area vector is shown here. ये क्या है? क्या है ये? एरिया. तो ये क्या होगा? So ये इसके perpendicular है. And this is making an angle theta with the axis. अब जरा बताइए, what will be the value of normal stress? Take your time. Whether I calculate shearing stress or tensile stress, will the area of cross section change? It is the direction of force which will change, है ना? अगर ये एरिया है, अभी क्या है? ये सिलेंडर था, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया. पेन दिखाइयो. ये हुआ ना एरिया वेक्टर? हाँ है ना? अब if my force is in this direction, it will be tensile, and if my force is in this direction, it will become tangent or tensile or shearing. So area will not change. Area तो यही रहेगा, but force का direction अगर इसके area vector के along है तो normal है, और अगर वो उसके perpendicular है तो shearing है. अब करिए. कर लिया? नहीं भाई, क्यों नहीं भाई? आगे. Wrong. Try again. आप बताता हूं आप मिस्टेक कर क्यों रहे हो. पूछो. सर हमारी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि आपने साइंस ली. आपकी गलती है आपने पंगे लिए हमको इंजीनियरिंग करनी है. सोचो कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने मजे लेते होंगे. क्यों? तो पढ़ना बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है?
How many of you feel studying is interesting? सच्ची चीज, झूठ नहीं, मतलब हाथ उठा के बता दिया जी सबको, अभी हम तो सभी इंटरेस्टेड है, क्या बात है? समझ में आता है वो इंटरेस्टिंग लगता है, या जो इंटरेस्टिंग होता है वो समझ में आता है, ये ठीक है। कि मेरे ख्याल से व्हेन यू अचीव समथिंग यू फील बोर्ड ऑफ इट। हाँ, yeah, of course, so you need something new, something more challenging. I mean, if IIT decides that all these girls will be given a seat in IIT, will you feel good for some time? Effort in Imara. It's like defeating Bangladesh. Even if you're thrashed by Australia and you score well, like we are, and yet we are getting defeated, nobody's asking questions. यार टीम बहुत अच्छी के साथ खेल रहे थे, इतने रन बनाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये बांग्लादेश ने हमारा हाल किया होता ना, अब तक धोनी के पुतले जला दिए होते लोगों ने, उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए होते। तो see, the point is, even when you're preparing for IIT and you get into, say, Delhi College of Engineering, everybody will say, good yaar, good job done. बोर्ड्स में क्या है, 20% बोर्ड्स में मार्क लाना इज नॉट एन अचीवमेंट। सोचो 95% बोर्ड्स में लाना अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज एवरीबडी फील्स एवरीवन कैन डू इट। पढ़ोगे तो नंबर आएंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम में you have to score only a 50% or a 40% to get selected to write the next level of exam, and it is so proud moment, oh your mains में select हो गया। क्यों? उधर 95 लाने पर फायदा नहीं, इधर 50% लाने पर ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। जैसे अब वो बच्चा पूछ रहा था, या पता नहीं कोई तो था, कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। एक और भी डिफरेंस बोल सकते हो आप, स्ट्रेसेस आर इंटरनल इन नेचर, प्रेशर इज एक्सटर्नल, इसलिए आप प्रेशर के साथ हमेशा एक्सटर्नल यूज वर्ड करते हो। सोच सकते हैं आप, ऐसे भी सोच सकते हैं। स्ट्रेस इज इंटरनल, स्ट्रेस इज नॉट दिस फोर्स अपॉन एरिया, इट्स द रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये बात और है कि जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही रेस्टोरिंग हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका अंडा है, 0 है। ठीक है, अब अब कौन है? अच्छा ठीक है, कोई तो है। अब इधर चलते हैं। आप जानते हो गलती क्यों कर रहे हो? क्यों? हम accept your defeat first, please. I'd like it. You want to ask me something? What is it? You're not understanding something. What is it, by the way? बोलो। ईगो। हाँ, मैं जानता, ईगो बोलता है आप। अगर ये एरिया ए है, if this area is A, will this area will be A? कौन है यस सर? कौन बोला यस सर? ये एरिया आपको सेम लगता? ये ज्यादा कम? ज्यादा, of course ज्यादा। I mean, this area compared to this area is less, and this is more. हाँ या ना? Okay. आपने क्या किया? It's ऐसे है ना, ये बुक है, इसके एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी भी आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो लग रहा है, बट मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? सुना मेरी बात ध्यान से। अगर ये ए है और ये से एंगल थीटा बनाता है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, ये इसके बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये ए है एंड इफ दिस एंगल इज थीटा विद द वर्टिकल, तो ये एरिया कितना होगा? विल इट बी ए कॉस थीटा और a by cos theta? अच्छा, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, तो cos लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है? cos थीटा लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है? लेस देन 1 होता है, ग्रेटर, ये तो पता है। तो अगर a cos थीटा a से छोटा होगा, बड़ा होगा, अगले जन्म में जवाब देना, हम अगली बार एक नए अवतार में मिलेंगे, छोटा होगा। a cos theta will be less than a because cos theta is less than 1, and a by cos theta will be more than a or less than 1? Less than a, more than a. So when you tilt it, is the area more or less? So it should be a by cos theta or a cos theta?
टक. So if mathematics is not helping you, अब कंफ्यूज हो रहे हैं यार, ये cos थीटा लें, बाई cos थीटा लें, छोड़ दो, दिमाग लगाने का भगवान दिए. एरिया ज्यादा मतलब cos थीटा नीचे आना, तो a बाई पक्का. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी a बाई, ये f है, ये कितना हो गया f? So f by cos theta by a by cos theta कितना हो गया? f cos square theta by a. लिखने का एक घंटा हो रहा है. वो कॉफी थी वो तो हो गई ठंडी. बोलो एक अच्छी तेजी बाहर से चाय पिला दे. एक चाहिए अच्छी चाय. Okay, girls, are you clear? Now, when will this value be maximum, by the way? F cos square theta by A. When is the value of cos square theta maximum? सोच के बताओ. हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो. चार्ट आई ना मार दो उसको. Of course, when theta will be, आप सोच के देखो, होगा भी मैक्सिमम तभी ना. एरिया ये और फोर्स ये, इफेक्ट कब होगा? मैक्सिमम होगा ना. अब शेयरिंग का बात करते हैं. That gentleman was also asking about sharing. In that case, if this is f cos theta, this will be, and you see it is tangential to the surface. अब आंसर कितना होगा? Will the area of cross section change? वो तो a by cos theta ही रहेगा. Force कितना हो गया? So f sin theta upon a by cos theta. So it becomes f sin theta cos theta by a. Now when is sin theta cos theta maximum? When theta is 45 degrees. Note करिए please. इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना अच्छी तरह से. नॉर्मल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. Strain. You know what is strain? Strain is the ratio of change in deformation upon. अगर stresses दो तरीके के हैं, normal and sharing, तो strains भी तो ही होंगे. Next slide. See? दिखाई दे रहा है? One will be longitudinal strain. The type of strain is produced when a deforming force causes a change in length of the body. It is defined as a ratio of change in length to the original length. ये ठीक है, हमको मालूम है. नेक्स्ट. अच्छा, एक केस समझ लेना. इसमें जो स्ट्रेन होगा पॉजिटिव होगा और इसमें स्ट्रेन. नेक्स्ट. करिए. A steel wire of 2 meters length is suspended from the ceiling. When a mass is hung at its lower end, the increase of the length recorded is 1 centimeter. Determine the strain in the wire. यूनिट्स का ध्यान रखिएगा. इस क्वेश्चन में यूनिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. आपने सबने मचा दिया 1/2.
और उसमें एक ऑप्शन भी होगी, सी ऑप्शन होगी। 1/2 आपको लगता है ए, तो सी ये, और आंसर दिखाएगा 0.5। भाई साहब क्या फोड़ दिया मैंने सवाल। 5 इंटू 10⁻³ क्या है ना? अभी भी नहीं समझे तुम? तो समझ चुके, तो समझ के क्या कर लिया तुमने? बड़ा समझ लिया तुमने, मैंने समझ लिया क्या मतलब क्या है? ओरिजिनल लेंथ इज 2 मीटर्स ना, सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल कितना हो गया? 5 इंटू -3, दैट्स द राइट आंसर एंड नॉट 0.5 जो आपने पहले बोला था, हाफ। ठीक है, इसलिए मैंने ये चुंगू सा क्वेश्चन दिया था। मुझे पता था कि इसके अंदर हम सब मुंगू बनने वाले हैं, और हम बन भी गए एक्चुअली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखना। ओके, सो वेयर इज माय दोस्तर? एक मूवी भी आई ना, चॉक एंड डस्टर। सो ये डस्टर। The question is, there is a rod. This is a rod. Mass M, length L. Area of cross section A. So its mass is M, length L, area of cross section A आपको निकालना है, लिखो। Young's modulus is Y. You know what is Young's modulus? Stress by strain. स्ट्रेस पता चल गया, स्ट्रेन पता चल गया, दोनों का रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस Y। आपको बताना है इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा। यंग्स मॉडुलस longitudinal stress this is denoted by capital Y. He is asking you to find total elongation. सेमिनार आज 12:30 है। कितने बजे सेमिनार है पक्का ना? मोनिका मैम को बोल दो फॉलो कर लेगी, चलेगा नहीं चलेगा पूछ लो, इंपॉर्टेंट है। mgl upon absolutely wrong answer. I like it. Absolutely the wrong answer. क्या? काट दो, कट्टे मार दो। अच्छा, तुमको लगता है कि मैं इतना स्टूपिड लगता हूं तुमको देखने में कि मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि तुम सब कर दोगे? संदीप सर अगर क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ तो इतनी तो हमको एक दूसरे के बारे में पता चल गया ना। अच्छा, जो मैं आपको पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है कितना? 100%? आप घर जाके प्रैक्टिस करते हो? मैंने अपना रोल तो कर दिया पूरा। आप जब तक अपना रोल नहीं करोगे तब तक
मूवी कैसे बनेगी, है ना? बिल्कुल तुमने सही आंसर दिया. आई हैव डन माई बिट, आर यू डूइंग योर बिट? ये बात पक्की है दैट you have to do so many things in a very small interval of time. I agree with you that 1-2 घंटे के अंदर चैप्टर करना भी है, सब कुछ करना है, बट कम से कम कोई करा तो रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है, आप उसका फायदा नहीं उठाओगे if you don't use it. Use it how? Do you have these books with you, Udaan? Did you read Elasticity when you came today? सच्ची बताना, नहीं पढ़ी ना? बस वही प्रॉब्लम है. कितने पेजेस होंगे इसके इलास्टिसिटी के? 7-8. कितना टाइम लगता? Half an hour, 45 minutes. Didn't you have 45 minutes from yesterday to today? कहां रहते हो आप? आप दिल्ली के आसपास ही रहते हो. आपको पूरे कल से आज तक क्लास 1 घंटा नहीं मिला तो करते, है ना? डॉक्टर चाहे कोई कितना भी अच्छा दवाई दे दे, अगर आप उसको खाओगे नहीं, आपका इलाज होगा? मेडिसिन दे दिया मैंने और मैंने बोला कि ये खाना नहीं है और आप वही करो अपने मन का, तो क्या आप ठीक होंगे? ये याद रखिए. टुडे आई हैड अ क्लास विद यू एट 9 o'clock. I got up at 5 o'clock. I've been teaching for so many years, but when I come to your class, I know that in a limited time I have to deliver. You can check my records on the mobile phone. I got up at 5 o'clock. I read the book. I saw the questions. I understood what I have to teach you today. And while I was doing this, I realized rotation में इनका भी कुछ points clear नहीं है. So I taught you rotation dynamics also. So if for a 9 o'clock class, I get up at 5, you should be getting up at 2. If I can get up at 5, I don't have to write the exam. You have to get up at 2 because you have to write the exam. You agree with me or not? आज से आप मुझे प्रॉमिस करिए, पहले तो मैं इसी बात पर आपसे आज झगड़ा होने वाला है. Promise me that before coming to my class, actually anybody's class, you will study and come. How many promise me this? Raise your hands and promise me this. So जरा कैमरा लाना इधर, मैं बच्चों के हाथ देखना चाहता हूं. मैंने क्वेश्चन पूछा and all the students whom I cannot see but are there on the VC, you have to tell me how many of you promise me that next time when you come to a class, you will study and come. Promise? वादा? एक दूसरा वादा, एक और चाहिए. उसको करने के लिए you just need 1 hour. Promise 2. Whatever is being done in the class, you have to immediately go and revise it. आप ये दोनों कर लो, इसका रिजल्ट 150% आएगा. आप करके देखो इसको. And just try doing it from this week onwards. And then you tell me the response. If there is a problem then also, then we'll discuss. I'm with you. I'll keep telling you the solutions. ठीक है? Now your answer is, आपका आंसर क्या आ रहा था? कापस हेड़ा बॉर्डर क्या आंसर निकाला से? क्या आंसर निकाला से? तूने कहा सर वाई क्या होता है? कुछ है ही नहीं, है जी? और स्ट्रेस कितना है जी? जितना वेट है बाय, और निकालना क्या है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन, and this is y. So I can write y as yes or no. So what is delta L equal to? ये किया ना आपने? Ouch! ये बिल्कुल गलत किया. ये गलत हुआ मेरे साथ. ये साजिश है इन लोगों की. कभी मक्खियां भेज देते हैं, कभी चेयर लगा देते हैं पीछे. Now let's understand why are we going wrong. जानोगे आपका नाम क्या है? What's your name? शिवा. शिवा से मुझसे दोस्ती करेगी तू? हाथ बढ़ा. मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है.
जो कुछ और करना चाहते हैं। तो शिवा तेरी मेरी दोस्ती, तू शिवा मैं संदीप, ये बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, पक्का? ठीक है। अब देख शिवा, प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? यहां कितनी टेंशन होगी? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। यहां टेंशन कितनी होगी? क्या जी? 0। क्यों? यार ये प्रॉब्लम क्या है? एक मूवी आई थी मक्खी, मुझे लग रहा है ये राइट। यहां कोई टेंशन होगा क्या? टेंशन इज रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब एनीथिंग विच इज, अगर यहां टेंशन तब होगी जब इसके नीचे कोई वेट होगा, पक्का? वो पीछे, व्हाट विल द टेंशन हियर इफ इट इज हाफ द लेंथ? mg/2, हाफ द लेंथ, कितना वेट हुआ? mg/2। सब जिंदा हो ना? आई लाइक इट। यहां कितना? तो यार ये तो हर जगह प्रॉब्लम है, ये तो हर जगह वेट ही अलग है, हर जगह टेंशन अलग है। तो आप इस टेंशन को कांस्टेंट कैसे ले सकते हो? कब ले सकते थे आप? यू कुड हैव टेकन इट व्हेन आई वुड हैव सेड देयर इज अ थ्रेड एंड आई एम हैंगिंग अ मास हियर एंड दिस थ्रेड हैज नेग्लिजिबल मास। आपका नाम क्या है? ये नेक्स्ट सेकंड बीच में अजीजा, आप सिर्फ ऐसे ऐसे ही करेंगी या कुछ बोलेंगी भी? क्या बोला मैंने इसके अंदर? दिस इज ऑलमोस्ट massless, this is mass m, so the weight here will be, the tension here will be mg, the tension here will be, and the tension here will be, this would have been a correct answer. So if it was a thread, this is the right answer, but this is not a thread. It will have tension and that tension will vary everywhere, therefore I cannot use this directly to solve it. मैंने स्टार्ट पे बोला था, when you get a question related to a previous thought, सर ने रॉड ही क्यों दी, सर ने थ्रेड क्यों नहीं दिया? अच्छा, थ्रेड में टेंशन कांस्टेंट होती है, रॉड में तो टेंशन कांस्टेंट। आप जैसे ही प्रीवियस थॉट पर जाओगे, you will get automatically, you will get the answer to this question. Are you understanding my point? What do we do now? There's a problem now. So if there is a problem, then you girls will have a solution. And the solution is, एक काम करते हैं, let's find out at a distance x, what is the tension here? बोलो, total weight, total length, कितने पर निकाल रहे हो? The tension here is mg by L into x. अभी क्या किए हम? एक छोटा सा एलिमेंट लिए. Why did I take this small element? So that the tension here and here is almost पक्का. अब हम क्या करेंगे शिवा, ये जो लेंथ dx है ना, इसका इलॉन्गेशन निकालेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेंशन है मेरे को मालूम है. हाँ या ना? I will like to find out what is the elongation in dx. So my L becomes dx. My T becomes, हाँ या ना? And my formula was y equals stress by strain, right? So this was like mg L by A into, हाँ या ना? So what is my delta L, by the way? mg L by AY. You agree? What is mg here? mg L by x. What is length here? Yes? A into, integrate this function. कितना आ गया? mg AL y 0 to L ना? The length here is 0 and the length here is L. कितना हो गया?
आप मुझे बता सकते हो ऐसी आंसर आना ही क्यों चाहिए था? ये why should this answer or this solution is the right solution? Can anybody tell me? Where does the weight act in a rigid body? Center of. So where is this weight actually acting? At a distance? तो मेरा आंसर क्या होगा? mg, मैं ये लिख रहा हूं, into, I like it. Small thought, but this thought will only come to you if a rod excites you to think. आप क्या करते हो? आप क्वेश्चन के बारे में सोचते हो, इसको सॉल्व कैसे करना है. मैं हमेशा जब क्वेश्चन करता था, when I was your age, I used to think, why a rod? Why a rod? Why didn't he take anything else? Okay. आप क्या सोचते हो? ये रॉड है, आप मान लेते हो, हाँ ये रॉड है, अच्छी बात है, वेट इसका mg, oh very good. एक्सेप्ट मत करो, कॉन्ट्रडिक्ट करो. There should be a contradiction in your mind. Why a rod? Why not a ring? Oh, had it been a ring? Okay. This rod is hanging. Had it been horizontal? तब क्या होता? So when you think, when you have a thought, then you have multiple thoughts. By the way, those multiple thoughts are questions. अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले नहीं आया तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में वही सॉल्व होता है जो थॉट आपका होता है. तो इफ यू नेवर हैड अ थॉट and you get a question, it becomes a tricky question because you've never thought about it. But if you have thought about it and you get a question, you feel happy. Oh my God, this is exactly what I was feeling. यही आ गया, ये तो हो जाएगा. आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं सब बातें करता हूं, उनको समझ में आती भी आती है, पता नहीं. या आई एम श्योर. और करेंगे. अब वो हॉरिजॉन्टल वाला कंडीशन लेते हैं. Okay, girls, length L, mass M, frictionless surface. I'm applying a force here. Can you find the elongation in the rod? सोच के देख लो. थिंक कर लो, थिंक. A rod horizontally placed on a frictionless surface, applying a force F, what will be the elongation of this rod? Very impressive girl, by the way. हमारा thought बहुत अच्छा चलता है. You said 0. You just thought the body will accelerate. Will there be a tension? There won't be any tension. निकाल के देखना डिस्टेंस x पर टेंशन होगी कि नहीं होगी. इसे एक्सेलरेशन, फर्स्ट राइट दी एक्सेलरेशन. कितना लिखोगे? फोर्स बाय मास F by m लिखो. अब take it at a distance x, try to find out the value of tension. F इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? It can be less complicated. Try. टेंशन निकालनी है तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने. लॉज ऑफ मोशन, टेंशन. इसी जन्म में मैं चाहता था मैं इसी जन्म में देख के जाऊं इसका.
नहीं आ रहा? ऐसा क्या हो गया भाई? मतलब बहन, what has gone wrong? Hello, oh hello, I want to find the value of tension at a distance x. By the way, tension की इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब if I take this element out, the small element out, फोर्स एक्ट कर रही है इधर, टेंशन क्या एक्ट करेगी? ऑपोजिट ही करेगी ना. What is the acceleration of this body? इसका मास कितना होगा? Please write it down. Yeah. Yes. Yes. तो टेंशन है? हाँ है. और आपको लगता है थोड़ा डिफरेंटली सोचना चाहते हैं आप. I'm saying when you apply force here, why does this end move? Because of tension. So if I take at a distance x, instead of x from here, I take it from here. Now, इसको कौन मूव करा रहा होगा? फोर्स होता कितना है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स, बोलिए जरा 4 बार बोलिए, हद हो गई. मास इनटू, इसका मास कितना होगा? ml by m by into, and what is a? So what is tension equal to? कोई प्रॉब्लम है? So if I take it from here, and if I take it from here, हाँ या ना? Yes or no? So if you have a tension, will you have a stress? Of course. अगर मैं इसकी बात करूं, स्ट्रेस कितना होगा? A से डिवाइड कर दिया. Will it have a strain? Will it have a strain? Strain is how much? Delta L by, and what is it equal to? So what is delta L equal to? निकालना. कुछ इंटीग्रेट जैसी चीज भी करोगे? करेंगे कि नहीं करेंगे इंटीग्रेशन? हाँ या ना? तो क्या लेंगे? छोटा सा एलिमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे? कितना? dx. yes or no? So मैंने वहां फॉर्मूला क्या लिखा था? y equals stress upon, right? Stress is f x by l. yes or no? Divided by स्ट्रेन कितना होगा? मतलब इलोंगेशन बाय नेचुरल लेंथ. नेचुरल मतलब लेंथ कितनी लेंगे इसके अंदर? तो dx ऊपर आ गया. यस और नो? दिस बिकम्स, ये y नीचे आ जाता है और ये क्या बन जाता है? इलोंगेशन. इसको जरा इंटीग्रेट करिए. व्हाट इज द वैल्यू? ये आ रहा है ना?
सेम, एफ की जगह अगर एम जी डाल दूं तो ये था ना, यहां पर एम जी फोर्स और यहां इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द अप्लाइड फोर्स, और इस क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स कितना है? सो इन दिस क्वेश्चन इफ आई प्लेस एफ बाय एम जी, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है. बट वन क्वेश्चन मस्ट बी बॉदरिंग यू, यहां से ये मूव नहीं कर रहा है इसलिए स्ट्रेस है. बोलो, यहां मूव कर रहा है, स्ट्रेस क्यों है? जवाब चाहिए आपको? यू नीड द आंसर. एक काम करता हूं, ठीक है? I'm saying I'm replacing this rod with this force with these two. कैसे? लिखो. अब इसका what is the acceleration now? If I'm applying an f by 2 force, what is the net acceleration? आप ऐसे सोच सकते हो. मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं that if you have a rod and it is accelerating and if it has mass, the tension will be different. So the tension is different. Or if there is a tension, there will be stress. And if there is a stress, there will be an elongation. There will be a net elongation. So this thought that if a body does not accelerate, there is no stress or there is no strain is a wrong thought. And can you believe it? If I take the value of F less than mu mg, which means there is friction and the body is still sliding, same answer aayega. And if I take the value of friction or the applied force greater than the frictional force, mu mg, तब भी यही रिजल्ट आएगा. आप इसको होमवर्क की तरह लिख के देखो. Write it this, take this as a homework. मैंने क्या बोला? If there is friction in this surface, okay? If there is friction in the surface, and I'm taking two situations. Situation one, the applied force is less than mu mg. And in the second case, the applied force is greater than mu mg. That means when it is less than mu mg, तो ये वाला केस हो जाएगा, और ग्रेटर होगा तो रॉड मूव नहीं करेगी. आप दोनों चेक करना, you get the same answer. But have you understood what I'm trying to say? I mean, if you want to understand this, आप इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो. जैसे मैंने इस केस में क्या बताया, that why is it mg by 2? Because the center of mass पर ही weight act करता है. तो effective length कितनी हो गई? L by 2. The effective length in this case is L by 2. Similarly, in a horizontal system, you can assume it like this. It's a way to tell you. I mean, why is it F by 2, by the way? For me, applied force should be F by 2. I'm applying a force F and I'm getting an answer as, तो क्या मतलब हुआ इसका? मैं F by 2 तो लगा रहा हूं. अब अगर यहाँ stresses, if there are no stresses, that means F by 2 should also be here also. So that's the logic. You can relate it like this. What's an equivalent diagram? This is the equivalent diagram. Is that clear? So that's the derivation. This is this. Third case. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप stresses निकालने के लिए you keep changing the values of force and how you apply a force. Case 3 लेते हैं. लेना, बनाओ. Should I give you a tougher situation or an easier situation? क्या चाहते हो? आसान दूं या मुश्किल दूं? मुश्किल. There is a ring. आसानी दे रहा हूं. Axis passing through the center. Mass is m, radius is r, and it starts rotating with the angular velocity omega. क्या बताया मैंने? It starts rotating with angular velocity. Young's modulus is y.
he says find the increase in radius. क्या निकालना है? What will be the first thought in your mind? सही बात है. रिंग क्यों लिया? रिंग ही क्यों लिया? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. मैं आपके आंसर देता हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो. बोलो, आपके दिमाग में रिंग क्यों लिया? सर्कुलर है. सर्कुलर क्यों लिया? रोटेट भी करा रहा हूं, क्या होगा? उससे क्या होगा? What will happen with this? What will be the direction of force? Outward or inwards? Outwards. Centrifugal forces are outward forces. उससे क्या होगा? The ring will try to. उसकी वजह से क्या डेवलप होगा? Stresses. उससे क्या डेवलप होगा? Strain. Strain से क्या इंक्रीज होगा? Circumference. उससे क्या इंक्रीज होगा? Radius. वही पूछ रहा है. This is exactly your thing. Please समझ लेना अच्छी तरह से. I mean, getting selected in Udaan classes does not ensure a rank. It will be direct function how much you want to come out of your comfort zone. आप अपने comfort zone से कितना बाहर आएंगे वो डिसाइड करेगा. जैसे suppose I'm like you. एक क्वेश्चन आया, एक रिंग है, होगी. सर विल टेल द सॉल्यूशन. मेरे को दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना. सेकंड, टाइम मेरे पास कम है. सर्कुलर रिंग, मेरे हैंड और मेरे दिमाग एक साथ मूव करेगा. रिंग रोटेट कर रही है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. वायर के अंदर इलास्टिसिटी उसको रिस्टोर बैक करने की. अच्छा, ओके. स्ट्रेस क्या होगा? टेंशन बाय एरिया. टेंशन कितनी होगी? जब एक रिंग रोटेट करती है तो टेंशन कितनी होती है? एंड आई एम गिविंग अ सिग्नल टू माय माइंड, थिंक थिंक थिंक. व्हेन आई गिव दिस सिग्नल इट सेज ओके आई विल डू इट. एंड व्हेन आई से फॉरगेट अबाउट इट, माइंड सेज आई एम ऑलरेडी फॉरगेटिंग अबाउट इट. आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. आपके लिए कह रहा हूं. इज दैट क्लियर? स्टार्ट थिंकिंग. ऑल ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड थिंक हार्ड. And I told you one formula one day. If there are radial forces because of which tension increases, there is a relation between the radial force and tension. अपने notes पीछे लेके जाओ. Flip your copy. और किसी को याद आ जाए तो मुझे पहले बता देना. I took a similar situation. Okay. एक फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे बताना डू यू रिकलेक्ट इट और नॉट. बोलू? सब लोग रेडी हो? अटेंटिव. T is F by 2 pi. बताया था या नहीं बताया था? T is F by 2 pi. Did I tell you this or not? नहीं बताया. बताता हूं आपको. आज एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं, बड़े ध्यान सुनना. Come on guys, this side. There is a ring. When it starts rotating, it starts experiencing. नाम क्या आपका? Second. Charu, I want you to reply and reply harder. What am I showing? What are these arrows showing? Charu. Centrifugal, not pedal. You cannot go wrong. Can you go wrong?
Can you after say that it was just a silly mistake? Can you say that? How many students write this exam? Number. More than 10 lakhs. How many get selected? How many? 8,000. उस 1 लाख में हमेशा बोलता हूं वो बच्चे बेस्ट बच्चे होंगे, वो क्या गलती करते आते होंगे? कैजुअल अप्रोच. मैंने कहा बाहर क्या सेंट्रीपीटल, आपने गलत आंसर किया, -1, आपके फ्रेंड ने सही आंसर किया, +3, डिफरेंस 4 नंबर का आ गया. आगे से नहीं करना. करेंगे क्या? एब्सोल्युटली. इनकी डायरेक्शन क्या है? रेडियल और नॉन रेडियल फोर्सेस. रेडियल फोर्स, सब लोग बोलिए. राइट, दे आर रेडियल फोर्सेस, FR. जब ये फोर्सेस लगेंगी, when these forces will act, what will happen to the shape? Will it remain same or deform? No, it will still remain symmetrical. Why? All the forces are acting symmetrically. Yes or no? The length will increase. मेरे सवाल का सही जवाब दो. मैंने कहा symmetrical और asymmetrical. It will remain symmetrical, but the length will. सब लोग ध्यान सुनिएगा. Suppose ये increase होके यहां पर आ गया. This is R, and this increases dr. When this length will expand, when this ring will expand, what forces will develop? Forces to bring it back? Restoring forces. In wires, in strings, what are those restoring forces called? Tension. क्या बोलते हैं? What is the direction of tension? Tangential. Tension is? Common sense. Normal forces are normal forces. Centrifugal forces are radial forces. Angular velocity is an axial vector. ये आप 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं सकते और मैं आपको भूलने दूंगा नहीं. Is that clear? आपके सबके पेरेंट्स नीचे बैठे हैं. इस इंतजार में 6 घंटे में मेरी डॉटर रॉकस्टार बन के आएगी. वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी. मेरी जिम्मेदारी है ऊपर खड़े होके ये इंश्योर करना कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे. इज दैट क्लियर? पक्का गलती तो नहीं होगी ना? राइट. टेंशन इज, कैसे कहते हैं टेंजेंट फोर्सेस? ठीक है. When this wants to get this shape, or when it tends to get into this shape. Charu, are you there? Yes. Is the system in equilibrium? Yes or no? It didn't blast, it didn't erupt, it still exists. Force लग रही है और elastic force को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ या ना? Restore back to what? Equilibrium position. So the system is in. That means the net work done on the system is 0. Force work कौन करता है? Force. And when you say work done, then you have displacement in the direction of. आपका नाम? शालिनी. ब्यूटीफुल नेम्स. अब ठंड तो नहीं लग रही ना? सर थोड़े से वार्म अप हुए तो आपकी सबकी सर्दी गायब हो गई है ना? चारू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. शालिनी, इस फोर्स का वर्क डन बता. मैं नेट फोर्स FR लिख लेता हूं, सारी है ना फोर्सेस. डिस्प्लेसमेंट बता. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड DR, बोलना कॉन्फिडेंटली. यू आर अ रॉकिंग स्टूडेंट. पक्का? इक्वल टू. शालिनी बता दे इसका आंसर. मैं बहुत खुश हो जाएगा. दूसरी फोर्स कौन सी है? टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल. टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इंक्रीज कर रहा है? सोच के बता ना. टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इंक्रीज कर रहा है? सोचो, माइंड में लगाओ. कौन सी लेंथ? यू मीन द सर्कमफ्रेंस? यस और नो? पहले सर्कमफ्रेंस कितना था? 2πr. अभी कितना है? प्लस डेल्टा आर. शालिनी प्लीज बता मेरे को, चेंज इन सर्कमफ्रेंस कितना हुआ? अमेजिंग. अमेजिंग बोलती जा.
टेंशन कितना आया? इस फॉर्मूले को याद रखना, भूलना नहीं, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क डन। क्या बोलते हैं इसको? क्या याद रखेंगे आगे से? टेंजेंशियल फोर्स शालिनी इज इक्वल टू द रेडियल फोर्स अपॉन 2 पाई। चारों क्लियर है बिल्कुल बात? शिवा क्लियर? आपको क्लियर है बिल्कुल? पक्का? ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल। तो अब देख शालिनी, क्या है कि ये सब कुछ कर लिया हमने, समझने के लिए था ये तो। अब दिस क्वेश्चन कम्स इन जेई। आपको पता है संदीप सर ने एक फॉर्मूला बता रखा, क्या बता रखा है? एफ की वैल्यू कितनी होगी शालिनी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। याद है मैंने पिछली बार बताया था, डोंट यूज एमवी स्क्वायर बाय आर, इंस्टेड यूज एम आर। फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, चलेगा। ये क्या है? पक्का? जब ये टेंशन का बात आप कर रहे हो, इसका रेडियस है कितना? मार लेता हूं आर डैश, द न्यू रेडियस परफेक्ट। चारों समझ में आ रहा है तेरे को? कौन सी रैंक निकाल के देगी मेरे को? व्हाट आर यू एमिंग फॉर? आर डबल। आगे साइन कर, आओ साइन करो यहां पर। शिवा तुझसे भी साइन कराऊंगा अगली क्लास में। इतना बड़ा रिकॉर्ड हो गया, तेरे साथ मेरी इज्जत भी स्टेक पर है। नहीं आई तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा फिर। प्रॉमिस? गुड, चल बैठ, अब मचाएंगे दोनों मिलके, अब तूफान मचाते हैं, ठीक है? क्लियर? टेंशन आ गई? सामने रखिए मेरे, मेरे को निकालना क्या है? इंक्रीज इन। अच्छा बच्चों, स्ट्रेन क्या होगा? शालिनी तू वापस आ जा, स्ट्रेन क्या होगा? चलेगा? आपका नाम क्या है? ऋतिका, अमेजिंग स्टूडेंट, तू बहुत कमाल की लड़की है। शालिनी भी बहुत अमेजिंग है। शालिनी स्ट्रेन कितना हुआ? इसको अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया? व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? एम। चलेगा? स्ट्रेन की वैल्यू बोलना। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है चारू? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी सारा कांस्टेंट है, एक्चुअली ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा खानदानी कांस्टेंट है। तो कैन वी से, हेल्प मी, आर आर डैश, मेरे को सॉल्व करना है ना इसको, के इंटू वेयर के इज, प्लीज हेल्प करो, इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऋतिका, आर डैश की वैल्यू निकाल, क्वाड्रेटिक बन रही है।
ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ ना मैं? कम ऑन गर्ल्स, डू इट, करके दिखाओ जल्दी से। क्वाड्रेटिक बन रही है ना? ये उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके बगैर हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज अ क्वाड्रेटिक एनी मोर, तो डायरेक्टली हो रहा है शायद। तो कर रहे क्या फिर, परेशान क्या हो रहे हैं हम लोग? कितना आर डैश सोच क्या रहे हो तुम इतना? ये क्या हो गया, आर आर डैश के आर डैश माइनस आर, कहां से आ रहा है? आर डैश इज इक्वल टू, अच्छा ओके, ये कह रहे हो, इसको नीचे ला रहे हो तुम? अभी मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो आर डैश कितना हो गया, या के माइनस, ये है ना? सो व्हाट इज आर डैश इक्वल टू? फैंटास्टिक, ये निकालना था ना आपको, ये के की वैल्यू ये रही। परफेक्ट, क्लियर। अभी कितना टाइम है? होगा? ओह, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, and you promise me that you will seriously try on this. In my next class, I'm going to discuss this. There is a rod, mass m, length l. एक केस लिया जब rod vertical थी. One case, the second case we took when the rod was horizontal. The third case is when the rod is rotating with angular velocity omega. Young's modulus is y. What will be the elongation in the rod? So in the next class, I'm going to discuss this. Okay? Shalom. God bless. Take care.
Thank you, sir. Dear children, सर ने जितनी तारीफें मारी हैं वो सब मुझे नहीं लगता उतनी सच है मेरे बारे में. बट यस, मैं भी आप लोगों की तरह एक गांव से हूँ. Should I speak in English? Okay. So I belong to a village, and it's education which changed my life. I did my BTech from IIT Delhi, and this issue of training girls, providing them that opportunity to prove themselves, is very close to my heart. In fact, the first girl who won gold medal for India in International Physics Olympiad. In fact, the first girl who represented India in International Physics Olympiad, Neha Ambia, was my student. She won a bronze medal, and then I remember another girl, Akanksha. She was once, during the time when she was in 10th, the senior girl, Neha, was in news at that time. And Akanksha used to ask कि ये कैसे बच्चे होते हैं और कैसे इतना पढ़ लेते हैं कि they are able to get selected in top 5 people in the country and then International Physics Olympiad. So, and I saw that spark in her eyes. I saw that dream in her eyes that she was interested in knowing how they do it. 2 years later, 3 years later, when she did her 12th, she was 18th rank in India in IIT and Akanksha, and the only gold medalist for Indian International Physics Olympiad. So I have had the privilege of teaching such students, and I've learned a lot of things in the last 16 years of being a teacher. I've been teaching physics, so I cannot teach that whole physics in few minutes to you people, but those important things that I want you people to, like, I remember I didn't go to IIT because someone taught me physics, chemistry and maths. I went to IIT because of a Hindi teacher. Now this Hindi teacher ऐसी चाबी भरते थे, बस ऐसे ऐसे डायलॉग दो चार सुना देंगे क्लास में, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एकदम he will charge me up. So, and I remember just because of his few statements which actually touched my heart, I was working hard and I was studying very, very hard and got into IIT. So I've seen, so I'll try to do that somehow. So we have a lot of, I'm sure you people are in 12th, 11th. So you have time, and I can discuss, in that case, I can discuss some concept also, one concept also. So children, there is one message that I want to give. In fact, I have requested and my team and my friend Sandeep कि भाई मुझे भी जाके कुछ तो contribute करना है इन बच्चों को. So finally I got the honor and privilege that I am here with you people. IIT में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कुछ भी करने के लिए ऐसी क्या चीज है जो होनी चाहिए और IIT में श्योर हो जाएगा वो इंसान. तो I'll share one story with you. Few stories, interesting stories of students. तो एक आकांक्षा के बारे में आपको बताया कि कैसे एक बच्ची एक सपना ले रही थी और पूछ रही थी एक टीचर से कि भाई ये कैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में चले जाते हैं, और फाइनली वो खुद गोल्ड मेडल जीत गई. So even my own story, lot of my thousands of my students, उनकी stories, बहुत सारी stories हैं आपसे share करने के लिए. तो लेकिन मैसेज एक है जो मैं देना चाहता हूँ, वो है कि जब मैं गांव में था, खेती करता था, फावड़ा, घास काटना, ये सारे काम करते हुए थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ भी इंक्लिनेशन था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था, तो थोड़ी सोसाइटी अच्छी बन गई थी. वो बोलते हैं ना, सोसाइटी मेक्स अ मैन. सो एक दो दोस्त ऐसे बन गए थे जो पढ़ते थे, और वो ऑलवेज मुझे, तो एक तो वी शुड बी वेरी चूजी अबाउट आवर फ्रेंड्स. उनका इन्फ्लुएंस जो होता है, मैंने ऑलवेज देखा है कि क्लास में एक ग्रुप होता है ना, तो वो ग्रुप में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे कामयाब होंगे, जो ना पढ़ने वाले हैं वो एक क्लस्टर सा बना लेंगे, वो सारे के सारे डूबेंगे. तो इस तरह की कहानी ऑलवेज होती है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन द काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट योरसेल्फ विद. किस तरह के दोस्त आपके हैं,
उनके विचार आपके दिमाग में हर वक्त पेनिट्रेट करते हैं और उससे आपकी सोच बनती है, पर्सनैलिटी बनती है और उससे आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन गए उस स्कूल में। उन लोगों ने बताना शुरू किया कि यार ये आईआईटी एक ऐसी चीज है, अगर इसमें सेलेक्ट हो गए तो लाइफ बन जाएगी। अब गांव में खेती करते हुए, फावड़ा चलाते हुए नींद बहुत आती है, भूख बहुत लगती है, खाता बहुत था, खेलता बहुत ज्यादा था, कुश्ती कबड्डी सब चीजों का शौक था। बट एक दोस्त ने ये सपना मेरे दिमाग में डाल दिया कि भाई आईआईटी में अगर हो गया तो मतलब लाइफ बन गई, फिर कुछ करना ही नहीं। मुझे नहीं पता था आईआईटी जाके फिर 4 साल और पढ़ना पड़ेगा या फिर उसके बाद भी लाइफ में और मेहनत भी थोड़ी बहुत रहती है। बट उसने ये कह दिया कि अगर सेलेक्ट हो गया तो लाइफ बन जाएगी। एक चीज और, उसने इग्नोरेंस इज ब्लिस, मेरे केस में वो भी हुआ। उसने ये और बता दिया कि उसमें अगर 50% मार्क्स भी आ जाए तो सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी में। मैंने कहा यार मेरे तो कभी 70-80% से नीचे आए नहीं है। आई वाज लाइक एन एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट। मैंने कहा 70-80% से नीचे कभी नहीं आया तो 50% तो मैं ले ही आऊंगा। देखिए ये नहीं पता था कि आईआईटी एग्जाम टफ होता है और वो सब। मुझे लगा यार हर एग्जाम में मेरे तो आज तक 70-80% आए, तो 50% लाना तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते अब देखिए प्लान बनाता था। वो दोस्त बोला करता था, एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो भी आईटी हुआ, आईआरएस बन गया। तो प्लान बनता था कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा आज पूरा टाइम। 8 o'clock उठूंगा, 8 to 9 ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 9 to 9:10 ब्रेक लूंगा, 9:10 से 11:10 तक फिजिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा। ऐसे पूरा डायरी में प्लान बनाया करता था। जब रात को नींद आने का टाइम होता था तो रियलाइज होता था कि वो 15 में से 4 घंटे ही पढ़ पाए हुआ। और ये इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में कि जैसे होता है ना, हमें अपनी ट्रुथ पता होती है कि आई एम लेजी, मेरे में ये भी इनएफिशिएंसी है, मेरा मन भी नहीं करता है। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि मुझे ये बड़ा शक रहता था कि मैं बहुत बड़ा डफर हूँ। मतलब मुझे ये लगता ही नहीं था कि मेरे में थोड़ी सी भी ब्रेन है। और वो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना दूं। हुआ क्या, एक बुक थी, स्टोरी बुक। In that book there was a story about a girl who was born with a birthmark on her hand, and whenever she used to see that birthmark, उसको पुराने जन्म की याद आती, and she used to recall the incidents जो which happened with her in previous birth, and through those images she traced back her previous birth, home, parents, and the whole story of how she was killed by someone got revealed and everyone was caught. And moral of the story is all of us are born with a birthmark which has a link with the previous birth. ठीक है? Now after reading this story I closely examined my body कि मेरे में भी कुछ होगा। तो मेरे यहाँ पे पैर में 2 निशान बने हुए हैं। बचपन में चोट लग गई होगी, उसके परमानेंट निशान है। तो आई वाज लाइक कि यार ये कुछ तो इनका प्रीवियस बर्थ से कनेक्शन है। अब देखिएगा ये अराउंड 8-9 में था। सो आई यूज्ड टू लुक अराउंड कि इसका क्या कनेक्शन हो सकता है प्रीवियस बर्थ से, मैं क्या था पिछले जन्म में ऐसा। तो एक दिन आई वाज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। तो हैव यू सीन गधे जो ईंटों को लेके जाते हैं कमर पे? हाँ, सो उनका एक पैर आगे का और एक पैर पीछे का बांध दिया जाता है रस्सी से। क्यों? जिससे वो रन ना करें। अगर वो ज्यादा कदम रखेंगे बड़ा तो ईंटें गिर जाएंगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, भागने लगेंगे वो। जिससे वो बहुत तेज ना भागे या डिसबैलेंस ना करें चीजों को और स्लो ही चलें, तो उनका एक पैर आगे का एक पीछे का थोड़ा सा गैप रख के रस्सी से बांध दिया जाता है। परमानेंटली कई साल बंधा रहता है। और वो बंधे रहने की वजह से क्या हो जाता है, निशान हो जाता है यहाँ। मैंने कहा ये लो भाई। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू फील अबाउट माई सेल्फ। ठीक है? सो लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज। नींद बहुत आती है जिन दिनों आदमी पढ़ता है। आप पढ़ने बैठिए, मैं जैसे ही केमिस्ट्री की बुक खोलूंगा और यूं रख के मुझे जैसे नींद ना आ रही हो, आज भी करता हूं मैं ये। हाँ, ये किसी को बताना मत ज्यादा लोगों को। तो नींद नहीं आ रही हो ना, तो केमिस्ट्री की बुक लो और यूं रखो हाथ और थोड़ा देखना शुरू करो, नींद आ जाएगी। तो जिन दिनों आदमी ब्रेन यूज करता है तो उसकी ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए शायद नींद बहुत ज्यादा आती होगी। मुझे बहुत ज्यादा आती थी।
inefficiency, laziness, sleeping, feeling that I am previous birth. हाँ, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती थी कि आई यूज्ड टू बी वेरी लो इन कॉन्फिडेंस. बट ये जो एक मेरा फ्रेंड था, उसने दिमाग में बिठा दिया कि ये लाइफ बन जाएगी और ये है. और एक दो बार उसके साथ क्वेश्चन करते हुए मैंने एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा कोई आइडिया दे दिया. उसने मुझे उसमें चढ़ाना शुरू कर दिया, यार तेरा ब्रेन बड़ा खतरनाक है यार, तू सोच लेता है. एंड ही स्टार्टेड मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ. अब देखिएगा, अब दो पैरेलल चीजें हो रही थी. एक दोस्त मुझे बिलीव करा रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे में ब्रेन है, मैं कभी कभी सोच लेता हूं, दो ही इज अहेड ऑफ मी, बट ही वाज अ ट्रू फ्रेंड एक तरह से. हाँ, और एक मुझे अपना खुद का पता है कि मेरे में तो सारी कमियां हैं, लेजीनेस, स्लीपिंग, लेस ब्रेन, लैक ऑफ ब्रेन और सब चीजें. अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब देखिएगा यहां से खेल शुरू होता है. आई केप्ट ऑन मूविंग, लगा रहा, शुरू कर दिया पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सीखता रहा एवरी डे. एक टीचर के पास पहुंचा, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई, सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, मुझे नहीं लगता मेरा होगा. टीचर ने कहा जब तक मैंने कहा कुछ एक चीज ऐसी बता दीजिए कि क्या करूं. ही सेड जब तक कोई चीज बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए, तब तक आगे मत चलो. उसको जब तक क्लियर ना कर लो, दिमाग में ये ना समझ में आ जाए इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया और ये है मीनिंग, तब तक आगे मत चलो. आधे लोग ऐसे ही मूव करते रहते हैं जल्दी जल्दी में. बस वो मैंने दिमाग में बिठा ली. और मैं जैसे कुछ पढ़ने बैठता था तो if I have studied one page, sometimes I'll be stuck on one paragraph for 1 hour and not moving ahead. And I knew कि मेरा concentration कम है, इसकी वजह से मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ. But I will not move. I will stay there. जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा, I will not move ahead. ये आदत बनाई, इससे थोड़ी conceptual clarity डेवलप होनी शुरू हुई, समझ में आनी शुरू हुई चीजें. फिर जब सेल्फ स्टडी करता है आदमी और समझ में आनी शुरू होती हैं चीजें, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होता है. फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर धीरे धीरे करके आईआईटी पहुंच गया. अब आईआईटी में पहुंच के बिजनेस मैगजीन्स, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, ये सब कॉमन रूम में रखी होती हैं. तो अब एक कहावत होती है, घर में नहीं दाने अम्मा जली बनाने. अब जिस टाइम पे सारे दोस्त जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, मैं तो बिजनेस करूंगा, अपना कुछ करूंगा, एंड लाइफ इज नो. वो सारे फंडे, वो बिजनेस मैगजीन्स पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है आदमी का. जैसी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगी, मैं पूरा वेट किया करता था. वो जो टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं ना, कि आईआईटी में टॉप 10 में रैंक आ गई है, उसका इंटरव्यू छपा है सीएसआर में, तो मैं एक हफ्ते पहले से दुकानदार के पास जाके कि सीएसआर आ गई या नहीं वाली, उसका इंटरव्यू पढ़ना होता था. तो वो चीजें ढूंढते ढूंढते अब क्या हुआ, वो ऐसी चीजें पढ़ पढ़ के दिमाग थोड़ा आईआईटी में जाके खुल जाता है. तो दिमाग में एक ड्रीम आ गया कि यार मैं तो आई विल डू समथिंग ऑन माय ओन, आई विल नेवर डू अ जॉब. तो कुछ अपने आप करने का प्लान बना लिया. एंड टुडे आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दैट. आई मीन क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट. सो वो भी एक छोटा सा ड्रीम था, और एक पैसा जेब में नहीं था, और मुंबई शहर पहुंच के कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, थोड़ा सा हो गया. What I'm trying to say is, the point that I'm coming to is कि वो जो एक छोटा सा ड्रीम होता है ना आपके हेड में, वो जो एक छोटा सा बिलीफ होता है, और वो जो एक छोटी सी फीलिंग एक फ्रेंड दे देता है कि नहीं तेरे में है ब्रेन, और एक थोड़ा सा जज्बात होता है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, बस वही खेल है. पूरा खेल उसके अराउंड सेंटर्ड है. और ऐसे ऐसे जुझारू लोग हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटर्मिनेशन वाले लोग हैं. एक एग्जांपल और दे दूं. एक बच्चे का आईएएस का एग्जाम होता है ना, एक लड़के का पहली अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में रह गया. दूसरी अटेम्प्ट में आईपीएस मिल गया उसको, ठीक है. अब उसका मन था आईएएस बनने का. उसके लिए सीट्स होती हैं जनरल कैटेगरी की 30-32, कुछ ऐसी थी उस टाइम पे. तो उसने कहा कि भाई मुझे तो आईएएस ही बनना है. तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप इस साल नहीं ज्वाइन करके, अगर आप 1 साल एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम दीजिए, अगली साल आईपीएस ज्वाइन कर सकते हैं. 1 साल का मिलता है. उसने थर्ड अटेम्प्ट दी, थर्ड अटेम्प्ट में उसका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ.
अब उसके सामने या तो लास्ट अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, और या फिर उसको आईपीएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर उसे छोड़ता है तो वो फोर्थ अटेम्प्ट दे सकता है। अब बताइए उसे क्या करना चाहिए? बड़ा प्रैक्टिकल इजी है। क्या करना चाहिए बताइए? थर्ड में प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, क्या करना चाहिए? आईपीएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन वो भाई इधर स्टील रख के बैठा हुआ था, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टील। उसने फोर्थ अटेम्प्ट दी एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1। सो ऐसे ऐसे लोग, जब आप अपने चारों तरफ एसआरसीसी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से था, और हम उन दिनों आईआईटी में पढ़ रहे थे, तो जब ऐसे ऐसे किस्से और ऐसी ऐसी कहानियां आदमी अपने चारों तरफ देखता है, तो आदमी को समझ में आता है कि यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर किसी ने मन में कुछ ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई भी काम, कोई भी चीज बड़ी नहीं है। जब मैं 3,000 रुपए लेके मुंबई गया था, तो मेरे दिमाग में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि, मैं पहले ये सोचता था कि यार आईआईटी में नंबर आ गया है, 1,000-2,000 लोगों में गिनती हो गई है देश में, तो अब तो कम से कम इतनी हजारों गाड़ियां हैं, एक गाड़ी तो होगी अपने पास। तो मेरा प्लान था कि एक मारुति 800 या कुछ ऐसे होगी कभी। बहुत लंबे सपने नहीं थे, वो सारे के सारे 100 टाइम्स ज्यादा फुलफिल हो गए। समझ रहे हो? सो ये जो थोड़ा सा प्लान, थोड़ी सी थॉट, एक छोटा सा ड्रीम, बट वो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अगर है, तो फोड़ दोगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल की, पढ़ी, और आज उनमें से कोई बैंक ऑफ अमेरिका में है, कोई गूगल में है, कोई फेसबुक में है, सब कामयाब है। ये जो एक एक क्वेश्चन और एक एक फॉर्मूला आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका सक्सेस से क्या लिंक है। बट जब आप एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करके और सेलेक्ट होके और उस दुनिया में पहुंचोगे, तो आपको रियलाइज होगा, अरे यार, लोगों को ये पता क्यों नहीं होती है इतनी छोटी सी बात कि ये पढ़ाई कितनी जरूरी चीज है। एंड दैट इज द रीजन कि आज इतने सारे लोग इतने पैशन और डेडिकेशन से सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि यू पीपल शुड स्टडी एंड गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड डू वेल। You people also need to understand the importance and uniqueness of what you are getting and value it and work hard for it. This is all I wanted to say in terms of motivation. जाते जाते being a physics teacher, तो आदमी को फिजिक्स का कीड़ा तो रहता ही है। एक छोटा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, और जिसने उसका आंसर दे दिया उसको 1,000 रुपया कैश दूंगा मैं अपनी जेब से। ठीक है? तो बी रेडी एंड अटेंटिव। बड़ा सिंपल सा है, ज्योग्राफी, साइंस कहीं रिलेटेड सा है, और क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बच्चों को जनरली कम चमकता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। उसके थ्रू भी एक मैसेज देना चाहूंगा, पर पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या। तो डे एंड नाइट इज कॉज्ड ड्यू टू, सो आई एग्जैक्टली न्यू कि ये लाइन आने वाली है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये तो क्लियर है ना कि भाई वो अपनी एक्सिस पे इट रोटेट्स, and because of that we experience day and night. Am I right? And change of weather, winters and summers, is due to revolution of the earth. Am I right? और उस revolution में हमारा क्या होता है कि अर्थ इलिप्टिकल पाथ है या सर्कुलर पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये इलिप्स है, यहाँ पे सन है एक फोकस पे, और अर्थ यहाँ पे है, तो उस वक्त अर्थ पे क्या होगा? और जब यहाँ पे है, इस रीजन में है, यही है ना? Is there anyone who differs? ये करेक्ट है? अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मतलब इसी से रिलेटेड है कि ये ट्रू नहीं कि रेवोल्यूशन जो है ना, उसकी वजह से समर्स और विंटर्स नहीं होती है। सुनिएगा, अब उसका खेल क्या है वो एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में अर्थ के एक हाफ में, एक हाफ मतलब सदर्न हाफ, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, एक हाफ में तो समर्स तब होती है जब यहां होती है, और एक हाफ में समर्स तब होती है जब इस रीजन में होती है, और दूसरे हाफ में उल्टा होता है उस टाइम पे। हाँ, हु विल एक्सप्लेन दिस? एक मिनट, हु कैन एक्सप्लेन दिस? तो मैंने आपको बताया कि ये जो समर्स और विंटर्स का खेल है, चेंज ऑफ वेदर का, ये रेवोल्यूशन से नहीं है। और अगर रेवोल्यूशन से होता तो पूरी अर्थ पे यहाँ ठंड होती ना, तो जिस वक्त इंडिया में, दिल्ली में अभी ठंड पड़ रही है, सब जगह ठंड होनी चाहिए,
बट अर्थ का एक हाफ ऐसा है जिसमें अभी गर्मी है, समझ रहे हैं? और जब यहाँ पे गर्मियां होंगी उस टाइम पे उधर, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? एक पहले हाथ उठाइए, कौन एक्सप्लेन करेगा? पूरा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से, वेग नहीं, मेरे को वेगनेस से थोड़ी नफरत है। अब हाथ उठाइए, 1 2 3, फुल कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले उसने उठाया था, पहले उससे, हाँ। टिल्ट की वजह से, अब टिल्ट की वजह से, अब लेकिन ये जो इलिप्स है इसमें तो थोड़ी बहुत टिल्ट होगी, वो तो अर्थ का रेडियस तो बहुत छोटा है और इलिप्टिकल पाथ बहुत लंबी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये टिल्ट का इतना असर होगा। और ये डिस्टेंस, भाई असली खेल तो सन से डिस्टेंस है ना, ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, असली खेल तो सन से डिस्टेंस इज लाइक ह्यूज। अब अगर सन से डिस्टेंस यहाँ ह्यूज है और यहाँ कम है, तो फिर टिल्ट का इतना इफेक्ट होगा कि वेदर उससे डिसाइड होगा और क्लोजनेस और डिस्टेंस से नहीं होगा। हु विल एक्सप्लेन? फिर से, मे बी यू आर राइट, आई एम जस्ट रेजिंग माई डाउट। ओके ओके ओके, A.T. Mishra, good. I read your answer. I will be reacting to it after listening to others also. Anything else you want to say? So there is some confusion, not lack of clarity, right? Who else? बट वो तो रोटेट कर रही है, 24 घंटे में रोटेट करती रहती है हर वक्त, तो कोई भी हिस्सा परमानेंटली उसकी तरफ और ऐसे नहीं है। रिवॉल्व भी कर रही है, हाँ। बेटा जो हिस्सा सन की तरफ नहीं है ना, उधर रात हो रही होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर रात सर्दी होती है और हर दिन गर्मी होती है, ऐसे नहीं होता है, रात में भी सर्दी होती है। एक्सप्लेन, हु एल्स? आप कुछ बोल रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको ये टोटल क्लैरिटी से पता हो और कॉन्फिडेंटली गए कि हाँ मुझे पता है? जस्ट या तो यहाँ पे यस भेज दीजिए, अरे हाँ, या तो यहाँ पे कोई यस लिख के भेज दे। ऑडियो वॉल्यूम टू बी इंक्रीज्ड, A.T. मिश्रा इज सेइंग, हाँ ठीक है। सो कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंस से बोल दे कि भाई मुझे ये क्लियर है? नहीं है ना, कंफ्यूजन है ना। अब क्या है, व्हेन यू आर लर्निंग एनी टॉपिक, बस ये मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, जब तक आप कन्विंस ना हो जाए, जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि इसका ये एक्सप्लेनेशन राइट है, उसे एक्सेप्ट ही मत करिए और क्वेश्चन पूछते ही रहिए। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, डजंट मैटर। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत ग्रे एरियाज हैं जिनमें थोड़ी सी डिस्कंफर्ट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली रोटेशन, स्पेशल बहुत सारी जगह, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में ऐसी जगह आती हैं। सो आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज एरियाज बीइंग अ फिजिक्स टीचर। द रीजन आई गॉट क्लैरिटी इज कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना, ये जो टॉप रैंकर्स आए और गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड्स लाए, इनकी एक ही ट्रेट मैंने देखी कि जब कुछ चीज इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, तो ये दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल आर्ग्यू अबाउट इट, दे विल गिव यू सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड देयर थॉट प्रोसेस अबाउट इट। They will not blindly accept and say yes yes just because oh ये प्रवीण त्यागी बहुत बढ़िया टीचर है, just say yes। जब इंटरनली आपको कुछ समझ में आ जाएगी और आप अपने आप कन्विंस हो जाएंगे, वो परमानेंटली समझ में आ गया, वो फंडा क्लियर हुआ आपका। अगर वहां आप कंफ्यूज से हैं और आपने यस बोल दिया तो फंडा नहीं क्लियर हुआ। ये वाली थॉट को आप समझ लीजिए। अब इसका मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दूं और फिर आप अपनी पढ़ाई करिए, ऑन करिएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि मैं भी जब इस डायग्राम को बनाया करता था तो मुझे भी इलिप्स में ऐसे लगता था कि कितना बड़ा इलिप्स है और यहाँ तो बहुत दूर हो गई और यहाँ तो बहुत पास आ गई।
ये जो इसेंट्रिसिटी है, ये जो डिस्टेंस का फर्क है, ये सिर्फ 3% का फर्क है। एपोजी और पेरिजी, पेरिजी इज व्हेन इट इज क्लोजेस्ट एंड एपोजी इज व्हेन इट इज फारदेस्ट, उसमें सिर्फ 3% का फर्क है। तो ये एक ऐसा इलिप्टिकल पाथ है जो है तो इलिप्टिकल पाथ बट ऑलमोस्ट सर्कुलर है एक तरह से, समझ रहे हैं। और वहां पे इस बच्ची ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा की हुई है, कहीं ना कहीं सुना हुआ है, किसी ना अच्छे टीचर से या बुक से कहीं से पढ़ा हुआ है कि इसको ये पता है कि द राइट एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअल में 66 डिग्री पे होती है। टिल्ट कितनी होती है? हाँ, कुछ ऐसा होता है। तो वो टिल्टेड है अर्थ। अब ये जो बॉल है, अब ये जो बॉल है, ये जो अर्थ है, ऐसे टिल्टेड है। मान लो से वर्टिकल होती तो यूं होता, मैं उसको ऐसे मान लेता हूं टुवर्ड्स द सन, ठीक है। अब ये जो टिल्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो सिर्फ 3% का फर्क है। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ, ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ। आई एम नॉट सेइंग सर्कुलर, है इलिप्टिकल, बट वो जो 3% है उसका इफेक्ट इज वेरी लेस। जबकि हम डायग्राम जब बनाते हैं तो इलिप्स ऐसे दिखा देते हैं कि ये तो बहुत दूर है और ये बहुत पास है, और इसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड नाउ टिल्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हिस्सा, मान लीजिए सन यहाँ पे है, अब जो हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है, इस वाले, ये इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया। अब इस वाले हिस्से पे ज्यादा सनरेज फॉल कर रही है, ऑब्वियसली यहाँ गर्मी होगी और इधर सर्दी होगी अभी इस हाफ में। और जब ये रोटेट करती 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 इस हिस्से में आएगी, तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये सन की तरफ ज्यादा होगा, इस पे गर्मी ज्यादा होगी और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए सर्दी होती है। आर यू क्लियर अबाउट इट? कितने लोगों को समझ में आ गया? अब आपको समझ में आया होगा कि प्रवीण त्यागी तो अच्छा टीचर है। प्रवीण त्यागी हमें ऐसे हर टॉपिक को पढ़ा दे तो मजा आ जाए, ऐसे लग रहा होगा, है ना। एक्चुअल में पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, बट उसके लिए सर से परमिशन लूंगा मैं और फिर मैं आऊंगा पढ़ाने, ठीक है। चलो, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ जॉय टू मीट यू पीपल, it's a joy to see such bright people listening to you sincerely, and I know you are the future stars. I know तुम में से ही कोई साइंटिस्ट बनेगा, बनेगी, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगी, कोई आईआईटी इंजीनियर बन के कहीं कटिंग एज रिसर्च कर रही होगी। और बस इतना याद रखिएगा कि प्रवीण त्यागी को इस दिन, जब आप कुछ भी नहीं बने, क्रिस्टल क्लियर पता है कि आप लोगों में वो हीरोगिरी है, ठीक है। बेस्ट विशेस, टेक केयर।
Good afternoon, everyone. In our previous lecture, we were discussing about the Le Chatelier's principle, and we discussed a couple of cases of Le Chatelier's principle. So we'll continue with that. And the case which we'll be discussing is addition of inert gas. Okay. Now, what does this mean is that, let's suppose in a container, the reaction which is happening is in between nitrogen and hydrogen, and they're reacting to form ammonia. Right? In this situation, if I add an inert gas in this container, but the reaction is at equilibrium, so what I want to know first is that, will this addition of inert gas disturb the equilibrium reaction or not, first of all? Second, if it at all will disturb the reaction or equilibrium of the reaction, then in which case reaction will move so that it can re-establish its equilibrium. ठीक है? Inert gas का logic क्या है कि भाई आपके पास अगर आप inert gas डालोगे, inert gas definitely, as the name suggests, is inert, will not react with any of the substance here. For example, आपने helium you have taken as inert gas. The moment you'll insert helium in this container, it will neither react with nitrogen, nor with hydrogen, nor with ammonia. So ideally, it should not impact anything in the reaction, and it should not disturb the equilibrium of the reaction. Ideally, यही होना चाहिए, but in some cases यही होता है, पर in some cases ये नहीं होता. ठीक है? क्यों नहीं होता? Now just link this logic back to the situation जब मैंने आपको कहा था कि gases को दो situations में study किया जाता है. One of the type of container is a rigid container, वही घर के गैस का सिलेंडर, ठीक है? And another is the cylinder piston system, something similar to होली वाली पिचकारी, ठीक है? So now you have, for example, same reaction happening here and same reaction happening here, and both the reactions are actually at the completely same equilibrium position, which means कि यहाँ पर भी reaction क्या हो रही है? N2 plus H2 forming NH3, and it's maintaining an equilibrium. In this situation as well, the same reaction is happening and actually attaining the same equilibrium. ठीक है? दोनों कंटेनर्स में रिएक्शन सेम हो रही है, सेम इक्विलिब्रियम आ रहा है, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, व्हिच मींस इक्विलिब्रियम पर इन तीनों की कंसंट्रेशन जितनी यहां पर होगी एग्जैक्टली उतनी यहां पर होगी, वॉल्यूम भी सेम है, टेंपरेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. द डिफरेंस इज द टाइप ऑफ कंटेनर आई हैव यूज्ड. अब इस डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर यूज करने से क्या हो रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर यूज करने से ये हो रहा है कि अगर यहां पर गैस एक्सपैंड करना चाहती है या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती, बिकॉज ये कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है. सो यानी कि दिस इज द कंडीशन of constant volume. So volume is constant in this situation. Now, but here this piston can move up or down, so volume of the container will change, and thereby volume of the gas will change, which means volume is certainly not constant. But इस piston के ऊपर कुछ weight रख दिया मैंने. For example, मैंने कुछ 50 ग्राम का weight लिया, 10 ग्राम का weight रख दिया, इस piston के ऊपर रख दिया. That weight is constant and supplying a constant force downward, and thereby applying a constant pressure. तो external pressure हमेशा constant है. तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, it will always try to equate its pressure equal to the external pressure. तो यानी कि गैस हमेशा बार बार एक constant pressure पे आ रही होगी, यानी कि ये condition क्या है? Constant pressure. ठीक है? अब आपने क्या किया? आपने यहां पर ये सब कुछ अब इक्विलिब्रियम पे है, सब कुछ constant है, everything is good, but we feel it very boring, so we thought let's add a perspective to it so that it can become interesting, and the perspective is to add a inert gas, let's suppose helium. So I inserted 1 mole of helium here, 1 mole of helium here, that's it. Okay? Now the moment helium would enter into this container and as well as this container, the total pressure of the system will increase. Why? Because of Dalton's law. The total pressure is equal to sum of partial pressure exerted by all the gases. So if I'll add fifth gas, it will exert more pressure, so total pressure will increase. Same case will happen here, same case will happen here, but now an increase in this pressure will actually lead to more exertion of force or pressure on the walls of the container. But क्योंकि ये घर के गैस के सिलेंडर की तरह रिजिड है, तो ये एक्सपैंड नहीं करेगा. ठीक है ना भाई? उसमें अगर मैं और गैस पंप इन कर दूं तो वो एक्सपैंड नहीं करता, लाइक बलून.
बट बलून एक्सपैंड कर सकता है, या ये सिस्टम एक्सपैंड कर सकता है, यानी कि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा, अगर पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं हुआ. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम यहां पर डिस्टर्ब हो सकता है. यहां पे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन, सो इन दिस केस नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. तो इन दिस सिचुएशन इक्विलिब्रियम विल नॉट गेट डिस्टर्ब, इन दिस सिचुएशन इक्विलिब्रियम मे गेट डिस्टर्ब. अब मैं बोल रहा हूं इसमें भी मे गेट डिस्टर्ब, कोई बता सकता है? Okay, I'll explain. In this case, why equilibrium may get disturbed? मतलब इसमें भी ऐसा हो सकता है कि equilibrium डिस्टर्ब ना हो. यहां पर equilibrium डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? Because of change in volume. वॉल्यूम के चेंज होने पर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. लेकिन अगर दोनों तरफ गैसियस मोल्स बराबर होते हैं तो डेल्टा एन जी जीरो, मतलब नो चेंज इन इक्विलिब्रियम. तो यानी कि अगर वो सिचुएशन आ गई तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो विच मींस what I can conclude is that if you add an inert gas at constant volume, no effect on equilibrium. ठीक है. But if you add an inert gas at constant pressure, then equilibrium may get disturbed because of increase in volume. So क्योंकि volume of the container is increasing, that is why equilibrium can get disturbed. When will it get disturbed? If delta Ng of the reaction is non-zero. If it's zero, then it will not get disturbed. If it's non-zero, then reaction का equilibrium will get disturbed and reaction will re-establish its equilibrium by moving in the direction of higher number of gaseous moles. ठीक है, करेक्ट है. अच्छा, अब किसी का एक डाउट है कि कांस्टेंट प्रेशर हमने यहां पर कैसे मेंटेन करा, ये मैं वापस से बताता हूं. तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रीटी क्लियर, आई एम श्योर, बिकॉज कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी दैट विल बी कांस्टेंट एंड इट विल नॉट चेंज. नाउ हाउ डू वी मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गैस? सो बेसिकली क्या होगा कि गैस का प्रेशर तो चेंज करेगा, बट आप उसको बार बार एक सेम वैल्यू पर लेके आ सकते हो. कैसे एक सेम वैल्यू पे लेके आ सकते हो? क्या होता है, लेट्स सपोज जैसे मान लो मैंने इस कंटेनर को हीट, हीलियम छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंटेनर को हीट करा, ठीक है, तो ये गैस एक्सपैंड करेगी. ठीक है, अगर ये गैस एक्सपैंड करेगी तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी. पिस्टन पे ऊपर की तरफ से भी कुछ प्रेशर लग रहा है. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है. या फिर एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं. ये पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर दूं. एक प्रॉपर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि होता क्या है. ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी हेल्प करेगा. देखो, सो गैस का प्रेशर होता क्यों है? अगर आपने इसे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, गैस का प्रेशर क्यों होता है? व्हाई डज अ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर? Because of collision of these particles on the walls of the container and the piston, so they are exerting a pressure. अगर मैंने इस पिस्टन को, this is the piston which can move up and down, I've assumed it to be massless and frictionless. ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो अगर ऊपर की तरफ से मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो ये पिस्टन उड़ जाएगी, बिकॉज यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एज सिंपल एज दैट. अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं ऊपर से एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगाऊंगा तो दिस पिस्टन विल बी एट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये पिस्टन स्टेशनरी हो जाएगी. ठीक है, राइट. तो आप ये जो प्रेशर लगा रहे हो बाहर से, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, और जो इंटरनली लग रहा है दिस इज कॉल्ड एट टाइम्स इंटरनल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इनडायरेक्टली. तो हम एक्चुअली गैस का प्रेशर नापते कैसे हैं? इनडायरेक्ट तरीके से नापते हैं. हम कहते हैं कि एक्सटर्नल मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ा सो दैट दिस पिस्टन कुड नॉट मूव अपवर्ड और व्हाटएवर इन फॉर टू मेंटेन दिस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हियर, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये गैस का प्रेशर निकाल लेता हूं. ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इट ऑलवेज. अब मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा हीट करना चालू कर दिया. आई स्टार्टेड हीटिंग इट थ्रू अ, फॉर एग्जांपल, बंसन बर्नर.
और तो क्या हुआ, दिस विल हीट अप, ये इसका काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी, इनके कोलिजन्स बढ़ेंगे, इनका प्रेशर बढ़ेगा. सो लेट्स सपोज ये प्रेशर इंक्रीज कर गया. नाउ दिस इज P डैश व्हिच इज हायर देन द प्रीवियस वैल्यू. तो क्या होगा, अंदर की तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है, बाहर से फोर्स कम लग रहा है. मैं बाहर का चेंज नहीं कर रहा कुछ भी. तो क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा लग रहा है तो दिस विल मूव अप. द मोमेंट इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करने लगेगा. वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो गैस का अपना खुद का प्रेशर डिप करने लगेगा. तो इसका मतलब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है, और वैसे ही वैसे गैस का खुद का प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है. कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक बाहर वाले के बराबर नहीं आ जाए. सो हुआ क्या कि हर इक्विलिब्रियम स्टेट पे, कौन सी इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है, हर इक्विलिब्रियम यानी कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब जब पिस्टन रुकेगी तब तब हमेशा गैस का प्रेशर उतना ही होगा जितना मैंने बाहर से लगाया. और अगर मैं बाहर का प्रेशर ना चेंज करूं तो हर उस सिचुएशन में जब ये पिस्टन मूव नहीं कर रही है, गैस का प्रेशर कितना होगा, जितना मैं बाहर से लगा रहा हूं. तो दैट्स हाउ आई एम मेंटेनिंग द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस. गैस का प्रेशर ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर रहा होगा, अंदर चेंज करेगा बट मोमेंटली चेंज करेगा, थोड़ी देर के लिए चेंज करेगा, वापस इसके बराबर आ जाएगा. लेट्स सपोज गैस का प्रेशर कम हो गया तो अकॉर्डिंगली ये पिस्टन नीचे आने लग जाएगा. नीचे आएगा तो अंदर प्रेशर फिर बढ़ने लग जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. बढ़ के किसके बराबर आ जाएगा, इसी के. तो आपने क्या किया, आपने एक तरीके से बेंचमार्क सेट कर दिया कि गैस का प्रेशर हमेशा क्या हो रहा होगा, ईदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल ऑलवेज ट्राई टू कम डाउन टू दिस वैल्यू. ठीक है. तो एट एवरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि एट एवरी स्टेट वेयर दिस पिस्टन इज स्टेशनरी, द प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इफ द पिस्टन इज टेकन टू बी massless friction. अगर massless मास है, फ्रिक्शन है, तो वो फोर्सेस भी इंक्लूड कर लेंगे. दैट्स इट, टू गेट द प्रिसाइज वैल्यू. तो ये लॉजिक समझ में आया. तो दैट्स हाउ यू आर मेंटेनिंग द कांस्टेंट प्रेशर. नाउ इफ आई कंक्लूड द टू केसेस ऑफ इनर्ट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि दो सिचुएशन है. सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इज द case what I'm applying, but in two cases, one is the case of constant volume, another is the case of constant pressure. ये जो मैंने constant volume constant pressure बताया, ये पूरा thermodynamics में exactly ऐसी यही है. So जब भी आप CP CV ये सब बात कर रहे हो तो exactly यही तो हो रहा होता है. So constant volume condition का मतलब ये है, constant pressure का condition का मतलब ही यही है. So मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है. So वही वो जो आप thermodynamics में आपने पढ़ा है, the same thing I'm telling you. So this is something like a isobaric pressure process, and this is something like a isochloric process. ठीक है, तो वही हो रहा है. अब मैं उसी को बस दूसरा नाम दे रहा हूँ. ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पे आइसोकोरिक आइसोबारिक से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी स्टडी नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर क्या स्टडी कर रहा हूँ कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ, डिस्टर्ब हुआ तो किस डायरेक्शन में जाके वापस एस्टैब्लिश हो रहा है. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. तो इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम won't get disturbed. In case of constant pressure, equilibrium may get disturbed. It can get disturbed or may get disturbed because of increase in volume. So what you have to do is you have to just look up for the case कि volume किस तरफ, मतलब volume increase होने से reaction किस तरफ move करेगी. अगर delta G zero है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और accordingly फिर अगर delta G non zero है तो आप देख लीजिए किस तरफ gaseous moles ज्यादा हैं. The side where gaseous moles are higher, equilibrium will shift in that direction. ठीक है? Got it? Good. Shall I erase it? Fifth case is effect of temperature. So temperature affects the equilibrium of the reaction, that is true. And how does it affect the equilibrium of the reaction? That is pretty simple. If you remember, I told you that equilibrium constant can be changed of a reaction by only two things. One is you change the reaction itself, or second you change the temperature, which means in this situation, on changing the temperature, your QC is not changing, but what is changing is KC itself is changing. ठीक है? Now let's see how does it impact. ये देखते हैं. तो मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारा, लेट्स सपोज Kc हो गया. दिस Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर.
हाउ डज इट डिपेंड, इसको फिगर आउट करने के लिए मैंने कहा कि मैं दो सिचुएशन ले लेता हूं. What I did is I took temperature T1 and I took temperature T2. At temperature T1, the value of Kc is, let's suppose, Kc1. At temperature T2, the value of Kc is Kc2. ठीक है, इसका एक पूरा डेरिवेशन है, बट अभी करने का पॉइंट नहीं है. When we'll be studying chemical kinetics, I'll tell you the derivation. ठीक है, right now it's not important. You can just directly jump to the formula. That formula is, if I have these two values, then they will be related to each other through this relation. Got it? ठीक है. So in this case, this is what? Equilibrium constant for the second case, equilibrium constant for the first case. Delta H is the enthalpy change of the reaction. So this is enthalpy change of reaction. This is R is gas constant. ये joules में लिया जाता है usually. T1 is temperature at the first condition, T2 is temperature at second condition. Temperatures हमेशा Kelvin में लोगे. ठीक है, ये तो यूनिट्स जो भी होंगी कैंसिल हो जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. R का यूनिट कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे. इफ यू हैव मेजर्ड डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स तो ये जूल्स में आएगा, ये कैलोरी में लिया है तो कैलोरी में आएगा, ये लीटर एटमॉस्फेयर में तो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा. ठीक है, प्रीटी सिंपल. नाउ अब हमें फिगर आउट ये करना है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. ठीक है, ये हमें फिगर आउट करना है इस फॉर्मूले को यूज करके. ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. ये लिख लिया आपने, तो बस ये एलसीएम ले रहा हूं, कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट राइटिंग दिस T2 minus T1 अपॉन T1 T2. ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड दिस लॉगरिथम प्रॉपर्टी. मेरे पास log बेस 10 है, लेट्स सपोज log x. ठीक है, दिस इज बेस 10. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये कह सकता हूं. एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर x की वैल्यू 1 है तो log x जो log बेस 10 लूंगा x का वो पॉजिटिव आएगा. एंड कन्वर्स ऑल्सो, यानी कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ये प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करने वाला हूं. ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये सारा का सारा टर्म पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है. ग्रेटर देन 1 है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, लेस देन 1 है तो डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब ये सब नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इनको देखना ही नहीं है, पॉजिटिव ही है. T1 T2 केल्विन में लिए जाते हैं तो हमेशा इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू 0 है. ठीक है, T2 minus T1 अब हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, डिपेंड करेगा टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम है. तो लेट्स अज्यूम, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे मैंने मान लिया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1. आई हैव अज्यूम्ड दिस. कोई भी केस तो मानना ही था, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं, तो मैंने एक सिचुएशन मान ली दैट आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड नाउ आई वांट टू सी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज और विल डिक्रीज. ठीक है, तो ये टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, ये टर्म पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव आ गया. ये अब यानी कि सिचुएशन किस पे डिपेंड करेगी, इस पे. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ये पॉजिटिव आएगा और एक्सो होगी तो नेगेटिव आएगा, यानी कि सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है. तो मैंने कहा दो सिचुएशन है, डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव. दिस इज द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. राइट? ठीक है, now in this situation if this is an exothermic reaction then ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव हो ही चुका था, दिस पार्ट जो भी हमने करा, ये नंबर है, ये नंबर है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. डिफरेंस पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, तो ये पॉजिटिव यानी कि ओवरऑल द एंटायर वैल्यू इज पॉजिटिव. नो, डेल्टा एच पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, इस वाले केस एंडोथर्मिक का केस लेके चल रहा हूं. इन दिस केस ये पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, which means I can say that log of Kc2 upon Kc1 is greater than 0. And similarly यहां वाले में ठीक है, ठीक है, लिख लिया. ये इरेज कर दूं ऊपर वाला पार्ट. नाउ following the same situation of endothermic process and exothermic process, so in this situation what I figured out is that
Kc2 upon Kc1 is greater than 1. लॉग वाला प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, as it is. और in this situation Kc2 upon Kc1 is less than 1. ठीक है, तो as I can see Kc2 is greater than Kc1 and Kc2 here is less than Kc1. Is it clear? A erase कर दूं? So what I can conclude from these two situations is that on increasing the temperature, value of equilibrium constant increases in case of endothermic reactions. और यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, on increasing the temperature, equilibrium constant decreases in case of exothermic reaction. ठीक है, and vice versa as well. ये डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, and vice versa. Correct? So now if you remember this conclusion जो मैंने रेड से लिखा है लास्ट में, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं एंडो में इट्स लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ केस कि टेंपरेचर इंक्रीज करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर गया, टेंपरेचर डिक्रीज करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर गया. And in this, like it's sort of like inversely relation case where on increasing temperature equilibrium constant will decrease and on decreasing temperature equilibrium constant will increase. तो एक्सो में उल्टा हो रहा है और एंडो में एग्जैक्टली एकदम डायरेक्टली चल रहा है रिलेशन. ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है हमें इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग के हिसाब से वो देखते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये रेस कर दो, लिख लिया आपने? अब आपके पास कोई भी रिएक्शन है, मतलब इट डजंट रियली मैटर कि कौन सी रिएक्शन, लेट्स सपोज कोई भी रिएक्शन है, तो मैं फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन ले लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, या फिर एक काम करते हैं कोई और दूसरा रिएक्शन लेते हैं. लेट मी टेक दिस रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास प्रोसेस है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये पता भी है. फेज चेंज हो रहा है लिक्विड टू गैस, ऑब्वियसली हीट लगेगी. ठीक है ना, तो दिस इज द केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस. नाउ ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर व्हाट विल हैपन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू विल इंक्रीज. ठीक है, नाउ तो मान लेते हैं इस रिएक्शन का केसी है ये. ठीक है, इक्विलिब्रियम अभी आया हुआ है और क्यूसी की वैल्यू है ये. ठीक है, this is at temperature T1. Now I'm increasing the temperature where T2 is definitely greater than T1. ठीक है, now अब क्या हुआ, KC और QC बराबर है, KC फिक्स है, QC भी फिक्स है अभी, मतलब इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, नो चेंज इज हैपनिंग इन द रिएक्शन. आपने कहा कि वही हमें कुछ छेड़खानी तो करनी है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन का. So moment you increase the temperature, what will happen in case of endothermic reaction? QC को कुछ नहीं हुआ, ये KC है राइट में, ये इंक्रीज कर गया. अब QC सोच रहा है यार ये क्या हुआ, मैं मतलब आई वाज जस्ट इक्वल टू दिस वन, दिस KC, ये KC कहां गया, मतलब हमारे कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, बट व्हाट हैपेंड टू KC, मतलब अभी तो बराबर था, ये कहां शूट अप कर गया. तो उसने कहा कि ये चलो, लेकिन मेरा तो धर्म है, आई हैव टू बी इक्वल टू KC. सो इन अ वे द सिचुएशन इज QC लेस देन KC, क्योंकि KC इंक्रीज कर गया, QC को कुछ नहीं हुआ, इट्स स्टिल द सेम. But your KC has increased, so QC will again try to be equal to KC by net forward movement because it's less in this case. So this has moved to KC dash, and QC is still the case. So and I know it's positive, so it means KC dash is greater than KC, which means this is greater than this. So QC less than KC situation आ गई at this temperature. This situation definitely is not at equilibrium. इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है एंड रिएक्शन विल रीएस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम बाय नेट
फॉरवर्ड मूवमेंट, और इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं नेट फॉरवर्ड मूवमेंट को, दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेट फॉरवर्ड मूवमेंट को, नेट बैकवर्ड मूवमेंट को ऐसे बोल सकते हो शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी टर्म यूज होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं आपको एक केस दूं, लेट्स सपोज what will happen on increasing the temperature in this reaction। इस केस में क्या होगा, आपका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड, इस केस में एक्सो में कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिर जाएगा। तो अभी क्या है कि क्यूसी केसी बराबर है, केसी गिर गया, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, व्हिच मींस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। गुड। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप किसी भी केस ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फिगर आउट कर सकते हो कि रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो यानी कि यहां पे और यहां पे आप निकाल सकते हो। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, बट स्टिल व्हाट हैपेंस एट टाइम्स, कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि इसमें दो तीन कॉम्प्लिकेशंस है ना, कि वो थोड़ा लंबा सा प्रोसेस स्टेप हो गया कि पहले केसी देखो कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे क्यूसी अब उसके केस में उससे छोटा रह गया कि बड़ा हो गया, फिर उसके हिसाब से आप बैकवर्ड फॉरवर्ड निकालोगे, तो इसलिए कि 2-3 स्टेप ऑफ लिंक है। तो एट टाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है। देयर इज अ सिंपल वे वी कैन रिमेंबर इट, दो दैट इज नॉट द वे इट कैन बी एक्सप्लेन। मतलब यानी कि वो कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट्स जस्ट अ हैक थ्रू व्हिच वी कैन रिमेंबर इट इजीली। द हैक इज प्रीटी सिंपल। व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स सपोज मेरे पास देयर इज अ सेट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, if heat is absorbed, what I'm doing is I'm writing the heat as a part of reactant. What happened? This is a doubt. How the pressure will ये तो हो गया ना? Please give another example. Okay. This is the case of combustion reaction. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपको फिगर आउट करना है इस प्रोसेस में इन विच डायरेक्शन equilibrium will shift on decreasing the temperature. Okay, let's see. In which direction equilibrium will shift on decreasing the temperature? Now, since this is the case of exothermic reaction, equilibrium constant is related inversely to temperature. ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले में इनवर्स में आ रहा है, पॉजिटिव वाले में डायरेक्ट है। That's it. ऐसे भी याद रख सकते हो। अदरवाइज मैंने इन पूरे का बहुत एक सिंपल हैक बनाया हुआ जो भी बताता हूँ, तो उससे तो बहुत और भी सिंपल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, तो यानी कि ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको मानना है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन ऑलरेडी थी एंड क्यूसी और केसी बराबर थे। अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ क्या है, इंक्रीज कर गया। सो दिस हैज इंक्रीज टू फॉर एग्जांपल केसी डैश, क्यूसी उतना ही रहेगा, तो ये वैल्यू डेफिनेटली इससे ज्यादा हो जाएगी। तो क्यूसी लेस देन केसी सिचुएशन में क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब रियलाइज हुआ थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, स्पेशली एक्सोथर्मिक के केस में। एंडो में फिर भी इट्स इजी, एक्सो में इट विल बी डिफिकल्ट। तो लेट्स फिगर आउट कि कैसे इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये चीजें थोड़ा सा हमारे लिए और इजी हो जाए। सो दो तरीके हैं कंक्लूड करने के, आई टेल यू बोथ। ये मिटा दूं,
often use a term called favor the reaction. जैसे फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है ये पढ़ा होगा कि in this random reaction on मतलब increase in pressure favors the reaction, decrease in volume favors the reaction, ठीक है, increase in temperature favors the reaction, something like that. ठीक है, तो what do we mean by favor the reaction? ठीक है, ये समझते हैं. ये देखो अब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. ठीक है, ideally what I expected out of them that they all will get exhausted and will form the product and no reactant should be left behind. सब कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. That's what I expected. But what happened कि यार ये बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगी, तो ऑब्वियसली 100% कन्वर्जन नहीं हुआ. अब मैं क्या चाहता हूं कि चलो 100 नहीं हुआ कोई बात नहीं, जैसे ना 100 मार्क्स नहीं है कोई बात नहीं, 90 आ जाए, 80 आ जाए, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उतने आ जाए. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज जितना मैक्सिमम परसेंटेज कंप्लीशन हो पाए उतना हो जाए. ठीक है, सो एनीथिंग व्हिच इज मेकिंग दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और व्हिच इज इंक्रीजिंग द नेट फॉरवर्ड मूवमेंट, उससे क्या होगा, जितना नेट फॉरवर्ड मूव करेगा उतना रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट फाइनली ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे. या ऐसे कह लीजिए इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि आपका जब इक्विलिब्रियम आए उस टाइम पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बने हुए हो और रिएक्टेंट कम बने हो, तो जितना मैं फॉरवर्ड शिफ्ट करता जाऊंगा उतना परसेंटेज कंप्लीशन इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाना. सो एनीथिंग व्हिच इज शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवरिंग द रिएक्शन. सो फेवरिंग द रिएक्शन मींस shifting the equilibrium in तो अब कोई भी आप जिसने भी अभी तक आपने 4 केसेस पढ़े हैं और ये दिस इज द 5th वन, आप सबको इससे रिलेट कर सकते हो. तो आप एक ध्यान रख लो, फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड का ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा. ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर वन केस व्हिच इज द फॉरवर्ड वाला. ठीक है, नाउ अब इस केस को, अभी जिस क्वेश्चन को वापस देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टेम्परेचर डिक्रीज किया था. टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया था. QC लेस देन KC, रिएक्शन कहां शिफ्ट हुई थी, फॉरवर्ड. तो व्हिच मींस कैन आई से दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है. अब ये तो रिएक्शन डिपेंडेंट ही नहीं है ना, ये रिएक्शन कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. किस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. तो क्या मैं ये कंक्लूजन सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए निकाल सकता हूं? यस. सो फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब इसी चीज को मैं सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करता हूं. मैं कह रहा हूं कि लोअर टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, लोअर टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हिच मींस एनी exothermic reaction will see a forward movement or net forward movement or shifting in forward direction by decrease in temperature. यानी कि जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना ये फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी और जितना टेम्परेचर हाई करते होंगे उतना ये बैकवर्ड में जाएगी. तो इसी चीज को मैंने कंक्लूड कर दिया कैसे, फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर मान लो मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से कंक्लूड करूंगा. तो हायर टेम्परेचर विल फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो आप ये भी एक छोटा सा कंक्लूजन है जिसके थ्रू याद रख सकते हो कि एंडो में क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना फॉरवर्ड में जाएगी एंड जितना कम करोगे उतना बैकवर्ड में जाएगी. सिंपल. एक्सो में उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बैकवर्ड भागेगी और कम करने पे वो फॉरवर्ड में जाएगी. ठीक है, देयर इज अनदर वे यू कैन रिमेंबर इट, दैट इज द हैक आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हैक. सो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ सेट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, इनका आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है. लेट्स सपोज दिस द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है. तो मैंने क्या किया, मैंने हीट को एक तरीके से कुछ देर के लिए ऐसे ही, मतलब क्योंकि सब कुछ हाइपोथेटिकल चल रहा है ना, मैं तो सिर्फ हैक बना रहा हूं, तो मैंने हीट को मान लिया रिएक्टेंट है. ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं सिस्टम में तो एक तरीके से मैं सिस्टम को और ज्यादा हीट दे रहा हूं. तो इन अ वे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम
increasing the reactants, reaction will move in forward. If I'm decreasing the temperature, I'm decreasing the heat, reaction will move in backward. ठीक है? Another case, exothermic reaction में heat release होती है, तो heat को product मान लो. Now if I'll increase the temperature, what I'm increasing is a product. The reaction will shift in backward direction, and on decreasing the temperature, ऐसे भी याद रख सकते हो, बट इससे कभी एक्सप्लेन नहीं करना, अदरवाइज दे विल आस्क यू कि किसने पढ़ाया, एंड नॉट इन डेफिनेटली नॉट इन अ गुड सेंस. ठीक है, क्योंकि ये मतलब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो वही है जो हमने भी पूरा पढ़ा है. ये सिर्फ एक हैक है याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आती है, क्योंकि लिंकिंग 2-3 थिंग्स कि पहले आप केसी केपी में इंक्रीज देखोगे, डिक्रीज देखोगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, फिर आप देखोगे क्यूसी केसी के हिसाब से वो बढ़ा घटा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल अंडरस्टैंड द शिफ्टिंग. ठीक है, दिखा इसका तो last case, effect of catalyst. Now a catalyst does not affect the equilibrium, it does not disturb the equilibrium. Why it does not disturb the equilibrium? It's pretty simple. Equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward by rate constant of backward reaction. ठीक है, so what does a catalyst do? Catalyst क्या होता है? एक substance होता है जो कि reaction के rate को alter करता है. It can either increase the rate of reaction or it can decrease the rate of reaction. हाँ, that's the truth. So catalyst reaction के rate को increase भी कर सकते हैं और decrease भी कर सकते हैं. Those who increase the rate of reaction are called positive catalyst, and the ones who decrease the rate of reaction are called negative catalyst. इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में है एक चैप्टर, बट जस्ट लाइक एक रफ आइडिया दे रहा हूँ. लेकिन क्योंकि मोस्टली कैटलिस्ट 99% ऑफ द कैटलिस्ट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो इसलिए हमारा नोशन बन जाता है कि कैटलिस्ट कौन है जो इंक्रीज कर रहे हैं रेट को. तो अब मान लेते हैं इंक्रीज वाला ही सिचुएशन चल रहा है. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्चुअली में कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है, तो वो फॉरवर्ड के रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा. लेट्स सपोज ये वैल्यू डबल हो गई, तो ये वैल्यू भी डबल होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों में इंक्रीज बराबर आ रहा है. तो ये फॉर एग्जांपल ये kf से हो गया 2kf, ये हो गया kb से 2kb, तो 2 कैंसिल हो गया. ये 1.5 टाइम्स हुआ, ये भी 1.5 टाइम्स हुआ. So what catalyst is doing is it is actually increasing the rate of forward as well as backward reaction to the same extent, which means it will not impact the equilibrium constant. तो यानी कि in the presence of a catalyst equilibrium की पोजीशन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब उसका पोजीशन, उसका मतलब स्टेट, nothing will get disturbed. If reaction is already at equilibrium, it will not get disturbed. But what will happen? क्योंकि आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बढ़ गया है, तो होगा क्या कि इक्विलिब्रियम आपका बहुत जल्दी आ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन इज इट विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एट ऑल, बट टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम will decrease if it's a positive catalyst, which means कि let's suppose नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया जो बन रहा है उसका इक्विलिब्रियम 1 आवर में आ रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो इक्विलिब्रियम 5 मिनट्स में आ जाएगा. क्या कोई डाउट है? डज प्रेशर चेंज बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट? नो. तो डिक्रीज, तो टाइम बढ़ जाएगा. हाँ, वो फॉर एग्जांपल हो सकता है 2 आवर्स 3 आवर्स या 10-20 आवर्स में हो रहा हो. ठीक है, कैटलिस्ट विल नॉट बी चेंजिंग द प्रेशर. Acha, why? Okay, so basically what will be happening, so catalyst can change the pressure only in one case, that is the case of homogeneous catalysis. ठीक है, in such a case what will happen is the pressure of the system though will change but will be affecting the forward as well as backward reaction to the same extent. ये हम थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आई थिंक तब ज्यादा बेटर क्लियर होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग कैटलिस्ट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके होंगे. सो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड दूसरे होते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट. होमोजेनियस कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं,
हेट्रोजीनियस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे जस्ट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जिस पे रिएक्शन हो रही होती है. तो in the case of homogeneous catalyst there is a possibility. Please explain the addition of inert gas at constant pressure. Okay, I'll explain again. Okay, so in this case what will happen is, in the case of homogeneous catalyst there is a possibility that pressure will change, but it will be affecting the forward as well as backward reaction to the same extent, because that is the effect of catalyst. और क्योंकि दोनों के लिए उसका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, जैसे sulfur dioxide gas is reacting with oxygen gas to form sulfur trioxide gas. ये रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है. इसमें मैं दो तरह के कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं. वन ऑफ द टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, दिस इज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट. अनदर टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड व्हिच इज अ सॉलिड, दैट्स अ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट. मैं छोटा सा आइडिया देता हूं. होमोजेनियस कैटलिस्ट होते हैं जिनका फेज सेम होता है एज रिएक्टेंट, और हेटेरोजेनियस होते हैं जिनका फेज डिफरेंट होता है. तो इस केस में क्या होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पर इसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब ये हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा. क्या चीज ये, तभी इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज एक्चुअली अभी क्लियर नहीं होगी क्योंकि कैटलिस्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है. तो अभी के लिए ये मान लो कि इट वुड नॉट बी अफेक्टिंग द प्रेशर, एंड इवन इफ इट डज, इवन इफ इट इज अफेक्टिंग द प्रेशर, it will still not disturb the equilibrium constant. We have to assume this situation right now because there are cases when this rule will not be valid, and we'll be talking about that in case of catalyst. मतलब there's a chapter called surface chemistry जिसमें आप catalysis बहुत डिटेल में पढ़ते हो in 12th class, and we'll be talking about that case. ठीक है, अभी वो आएगा नहीं क्लियर क्योंकि catalyst के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो फिर वो क्लैरिटी होगी, ये बार बार कंफ्यूजन होता रहेगा. ठीक है, जो आपका कौन सा डाउट है, addition of inert gas at constant pressure. Oh my god. ठीक है, let's assume that we already have a reaction going on here which is already at equilibrium. ठीक है, so in this reaction, is there any other doubt here? Huh? No, that's it. Now, so this reaction is already at equilibrium. It's there in the container. No amount of gas is changing. It's constant. Moles of nitrogen is A moles, that of hydrogen is B moles, and that of ammonia is C moles. Okay. Now, what I'm doing is I'm applying a constant pressure here, which means the external pressure we are applying here is constant. Usually, this is done in a very simple manner. You take a small weight and just put it up on the piston. आपने कोई वेट उठाया, पिस्टन के ऊपर रख दिया, that weight will be applying a constant force downward and thereby will be applying constant pressure downwards. So that's external pressure is constant, which means internal pressure of a gas can change but momentarily, थोड़ी देर के लिए चेंज होगा बट वापस से फिर कांस्टेंट आ जाएगा. और किस वैल्यू के कांस्टेंट आएगा, इसके हिसाब से. ये हमने समझ लिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नाउ अब मैं कह रहा हूं कि इस कंटेनर में मैंने क्या किया, हीलियम गैस इंसर्ट कर दी, कुछ मोल्स, लेट्स सपोज A1 मोल इंसर्ट कर दी, कोई कितना भी अमाउंट कर दिया. तो क्या होगा, जैसे इस कंटेनर में गैस और इंसर्ट होगी तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. जैसे बलून के अंदर होता है ना, बलून में आपने और एयर ब्लो इन करी तो क्या होगा, बलून इन्फ्लेट करेगा. और ठीक है ना, तो उस इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे भी एक तरीके से वही चीज हो रही है बलून की तरह. तो आपने और गैस इंसर्ट करी तो ये एक्सपैंड करेगा. या फिर आप इसको टेक्निकल टर्म्स में देखो तो क्या हो रहा है, आपने और मॉलिक्यूल्स डाले तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ी देर के लिए इससे ज्यादा हो जाएगा. ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, जब ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम इंक्रीज करने पे अंदर गैस का प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, बाहर का कभी चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो किसकी वजह से, वो वेट की वजह से है. वो वेट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना. मैं इसको स्पेस में तो मूव करा नहीं रहा हूं कि इसका वेट वुड चेंज. ठीक है, तो यानी कि ये कांस्टेंट ग्रेविटी सिचुएशन है. तो नाउ द प्रेशर ऑफ दिस गैस विल डिक्रीज एंड विल बिकम फर्दर कांस्टेंट टू दिस वन. नाउ अब मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे इक्विलिब्रियम को फर्क किस चीज से पड़ रहा है, मेरे इक्विलिब्रियम को फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि क्या हुआ, यहां पर हीलियम डालने पर वॉल्यूम बढ़ गया. जैसे यहां पे मैंने हीलियम डाली, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एंड व्हाट आई वुड ऑब्जर्व कि इसका वॉल्यूम पहले से बढ़ चुका है.
प्रेशर अंदर बाहर अभी भी बराबर लग रहा है, बट पहले से टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अगर टोटल वॉल्यूम पहले से इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरी स्टोरी को व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि द मोमेंट आई इंसर्ट एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, दैट्स इट, राइट। तो जब भी मैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि आपका वॉल्यूम चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाट यू कैन से, एंड यू आर मेंटेनिंग दिस प्रेशर एज कांस्टेंट, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। नाउ इफ यू जस्ट इंसर्ट अ इनर्ट गैस हियर, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम। अब आपको यानी कि आपका अब भूल जाओ कांस्टेंट प्रेशर वगैरह सब कुछ भूल जाओ, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है इस केस में। अब आपको देखना है कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब आपका इक्विलिब्रियम में यहां पे फर्क पड़ेगा, यस। किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा? जिस तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा है। किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा कि मैंने इसकी जगह ये वाला केस ले लिया, PCl5 गैस फॉर्मिंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इस पर फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कहां पे ज्यादा है? फॉरवर्ड में, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने ये रिएक्शन ले ली, इसमें वॉल्यूम चेंज करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बराबर है। इसका मतलब क्यूसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म आएगा ही नहीं। दिस इक्विलिब्रियम विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड इवन इन दिस केस। बस यही मैं बता रहा था, तो ये कंक्लूजन समझ में आ गया। सो इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम विल नॉट इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर equilibrium may not get disturbed, but one thing I'm very sure about, that volume of the container will increase on addition of inert gas at constant pressure. Volume of container increase. If volume of container will increase, then it may not impact the equilibrium. If delta Ng is non-zero, it will impact the equilibrium. If delta Ng is zero, will not impact the equilibrium. If delta Ng is non-zero, then equilibrium will shift in the direction of more number of gaseous moles. ठीक है? ठीक है, रेस कर दो सब। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो हमने ले शैडलर प्रिंसिपल के सारे केसेस कर लिए। लेट्स अप्लाई देम नाउ इन अ सिचुएशन। सो कमिंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम विद विच वी स्टार्टेड इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम पढ़ने क्यों आए थे? क्योंकि हमारे प्लांट में अमोनिया कम बन रहा था। याद आ गया? भूल गए थे इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते, तो हम एक्चुअल चीज तो भूल गए। ठीक है, so we started equilibrium, I started equilibrium with this note, if you remember, कि भाई अगर ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होती तो ये कंप्लीट मूव कर जाता और उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड मोल से उतने बनते, लेकिन क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो रही है तो 100% कंप्लीशन नहीं हो रहा रिएक्शन का, विच मींस जितने मोल्स एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं बनेंगे, उससे काफी कम बन रहे होंगे। अब मैंने कहा कि मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है। नाउ व्हाट ऑल आई कैन डू so that in the same situation I can still increase more amount of ammonia, or I can produce more amount of ammonia with the same reactant. Amount of concentration of reactant, मैंने कह रहा हूं same amount of reactant. You can, because this reaction is exothermic in nature, so low temperature favors point number 1. Point number 2, because delta Ng of the reaction is non-zero, so increase in pressure will favor the reaction, or I can say that will shift the reaction in the lesser number of gaseous moles, which is forward. ठीक है, और अमोनिया बनेगा। हाँ, अब इसमें आप थर्ड चीज ये कह सकते हो कि यार अगर ये अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो इस अमोनिया को अगर मैं बाहर निकाल लूं, विच मींस डिक्रीजिंग द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? अमोनिया और हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये तीनों गैसेस एक ही कंटेनर में मिक्स्ड हैं। इन तीनों में से दिस इज द मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल गैस, तो थोड़ा सा कंडीशन ऐसी रखेंगे कि अमोनिया बनते लिक्विफाई हो जाए, और मे बी एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द अमोनिया शुड गेट लिक्विफाइड। जैसे लिक्विफाई हुआ, उस लिक्विड को सेपरेट कर लिया, तो गैसेस के मिक्सचर में अमोनिया कम हो गया, तो यानी कि बाय
तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू रिमूविंग द प्रोडक्ट। और डेफिनेटली जो आपने कहा पहले कि आप और नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली पंप करते जाओ, इंस्टेड कि आप एक बार भर के छोड़ दो, आप कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन हाइड्रोजन पंप करते जाओ बाय प्रोवाइडिंग मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं? वॉल्यूम वाला वो प्रेशर में ही आ गया, दोनों रिलेटेड होते हैं एक्चुअली। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कंटेनर का अपने आप कम हो जाएगा, है ना। और हो गए सारे, ठीक है। तो यानी कि लो टेम्परेचर रखना है तो ऑफन इसका टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 700 केल्विन, प्रेशर इज 200 atm। ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आप कहोगे 700 केल्विन तो ये तो ज्यादा है। सो लो का मतलब ये नहीं है कि इसको फ्रीज कर देना है। Keeping a low temperature means that you should not keep a high temperature. Often the habit we have is that कि whatever reaction you're conducting, its rate increases at high temperature, which is true also. ठीक है भाई, if for example at home in the kitchen मैंने क्या किया, I've taken some water, I've taken some tea leaves and I've taken some sugar, और मैं उनको डाल के पैन मतलब वो completely lid close करके बिना गैस स्टोव ऑन करे सोचो कि चाय बन जाएगी, तो बन जाएगी, बट बहुत टाइम लगेगा। Which means they would react, they would mix, but it will take lot of time. But the moment I increase the temperature, it will happen soon. ठीक है, तो बस वही हो रहा है। तो नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारी रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, तो हमारा परसेप्शन ये होता है कि हम हाई टेम्परेचर रखें। सो द मोमेंट आई एम सेइंग लो टेम्परेचर, इसका मतलब मुझे उतना टेम्परेचर तो रखना है कि रिएक्शन हो जाए। ऐसा ना होना कि इतना लो टेम्परेचर कर दिया कि रिएक्शन की फीजिबिलिटी ही हो गई, डेल्टा जी नेगेटिव वाला केस, कि रिएक्शन फीजिबल ही नहीं बची। बट इतना हाई भी नहीं रखना कि रिएक्शन कि वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में जाने से रोक रहा है। तो यू हैव टू कीप लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, दैट्स व्हाट द आइडिया, कि जितना मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वो रखना है आपको ना। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं एक और चीज कर सकता हूं जिससे प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। भाई लेट्स सपोज मैंने कहा कि 100% कन्वर्जन नहीं होता था तुम्हारा, बट मैंने 90% तक ले आया। ठीक है, तो आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट for this guy and I made a lot of money. Now I went back to him again and I said कि यार मैं एक और चीज कर सकता हूं, this will increase your production to 10 times. ठीक है, so obviously जो मेरा paycheck है that should also increase to 10 times. Now so what I can do is I can add a catalyst. अब आप कहोगे कैटलिस्ट से तो सर फर्क ही नहीं पड़ता था, कैटलिस्ट से क्या हुआ? कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो रहा है। कि यानी कि वही इक्विलिब्रियम जैसे ये सब कुछ, फॉर एग्जांपल ही यूज्ड टू डू इन फॉर एग्जांपल 1 hour, नाउ द सेम थिंग कैन बी डन इन फॉर एग्जांपल 5 minutes। तो आपकी यार मशीन वही चल रही है, लेबर उतना ही काम कर रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर 6 times 10 times हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम हो गई ना। ठीक है, तो फिर फायदा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ऑफन कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe2O3 विद सम अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। ठीक है, सो दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ ले शैटलर प्रिंसिपल। क्लियर? इसी के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जैसे एक इक्वेशन दिया होता है और ऑप्शंस में पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल favor the reaction or which of the following will increase the production of the product or whatever. अब इसी का के और एप्लीकेशन समझते हैं, ये बता दूं। तो केमिकल रिएक्शन वाले केसेस आप कर लोगे क्या? कोई डाउट है? हाउ वी कैन से दैट रिएक्शन रिवर्सिबल, एनी ट्रिक विदाउट एक्सपेरिमेंट? I'll cover. ठीक है, second is the case of physical equilibrium. ठीक है, physical equilibrium is nothing but a physical change which is happening and that is also maintaining an equilibrium reaction. Something similar to कि मेरे पास H2O liquid है which is evaporating to form H2O vapors and they are condensing at the same time. तो at the situation where rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, equilibrium आ जाएगा. And because there is only a physical change which is happening either ways, so I will call this as a physical equilibrium. Equilibrium is plural form. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना।
अब इन सिचुएशन में भी सारी वही चीजें एप्लीकेबल हैं जो हमने वहां पढ़ी हैं, बट एक केस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, दैट इज प्रेशर. सो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन? जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स और पास आएंगे. ठीक है, यानी कि रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ पार्टिकल ज्यादा क्लोजर है. इसी चीज को मैं सिंपल टर्म्स में ये बोल सकता हूं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया, रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हायर डेंसिटी. हायर डेंसिटी मींस बेटर पैकिंग और क्लोजर पैकिंग. तो यानी कि इस केस में टुवर्ड दिस साइड. सो इन फिजिकल इक्विलिब्रिया, on increasing the pressure, equilibrium shifts in the direction of increasing density. ठीक है? So now in this process, so here comes the question. ठीक है? इस प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाता हूं, चलो एक काम करते हैं, पहले प्रेशर बढ़ाते हैं. सो आई विल इंक्रीज ओनली प्रेशर, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लिक्विड है, डेंसिटी इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा. ठीक है? अच्छा, अब मैं खाली टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. कैसे? इट्स अ फेज ट्रांजिशन प्रोसेस, लिक्विड टू गैस. ये एंडोथर्मिक होता ही हमें पता है, मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है एंडोथर्मिक होता है. That is good enough for me to handle the temperature. So in case of endothermic reaction, higher temperature favors the reaction, which means more vapors will form. ठीक है? Got it? Great. Now let's see this similar example, H2O solid to H2O liquid. What will happen on increasing the pressure? टेम्परेचर तो बता दोगे, एंडोथर्मिक है ये भी, फॉरवर्ड जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. तो प्रेशर में क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सबको यही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है? समझ में आ गया कि गलत लग रहा है? कि क्यों गलत लग रहा है? बिकॉज देखो, आपका अप्रोच ठीक है कि रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ डेंसिटी ज्यादा है. दैट्स ट्रू. यूजुअली सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, बट ये तो एक्सेप्शनल केस नहीं है. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका डेंसिटी इससे कम है, तो डेंसिटी कहां ज्यादा है? उस तरफ. तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां मूव करेगी? विच मींस मोर आइस विल मेल्ट बाय इंक्रीज इन प्रेशर. दैट इज द रीजन व्हाई यू स्केट और हाउ यू कैन स्केट. जब हम स्केटिंग करते हैं आइस पे, तो क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करने से कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट्स व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द स्केट. तो वो जो आइस मेल्ट करी, तो वहां पर क्या हो गया? उस पोर्शन में फ्रिक्शन क्या हो गया? बहुत लो हो गया, तो वो स्लाइड करेगा. ठीक है? गॉट इट? क्लियर? इरेज कर दो सब कुछ. no. Reversible and irreversible reactions. Now what is this? In case of reversible reactions or irreversible reaction, what is happening? Let's consider two situations. In a container, I have got calcium carbonate solid, which is decomposing to give us calcium oxide and carbon dioxide gas. ठीक है? In another container, very same situation is happening. Calcium carbonate solid is decomposing to give you calcium oxide solid and carbon dioxide gas. ठीक है? But the difference in the two situation is that this is happening in a closed container, this reaction is happening in an open container. ठीक है? If this reaction is happening in an open container, तो ये दोनों तो solids हैं, तो ये दोनों तो यहीं नीचे पड़े रहेंगे. But because this being a gas and container is open, so this will escape. If this carbon dioxide is escaping from this reaction or this reaction mixture, so can I say that continuously one of the product is decreasing from the reaction? अगर ये इसका क्वांटिटी डिक्रीज कर देगा तो रिएक्शन कहां मूव कर दी जाएगी? ऑलवेज फॉरवर्ड में.
और ये डिक्रीज करता जा रहा है, जैसे ही बना ये भाग गया, बिकॉज ये आ गया, तो रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोडक्ट को और इंक्रीज करो, प्रोडक्ट को और इंक्रीज करो, विच मींस फॉरवर्ड शिफ्ट करते रहो करते रहो करते रहो, इवेंचुअली क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे कि ये तो इरिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्स ये भी कर रही थी, बट फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, इरिवर्सिबल। तो इस तरह की रिएक्शंस कहलाती है इरिवर्सिबल, जिनमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते 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 नहीं हो पाया, ठीक है, एंड रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। भाई यही तो कर रहा था, अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ, एंड देन जस्ट लाइक लास्ट में, ओ माय गॉड, रिएक्टेंट इज ओवर। तो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। This kind of situation will happen, but in this case, because the CO2 cannot escape from the container, which means they will be maintaining a equilibrium, and I would be calling this reaction as reversible reaction. So this is the case of reversible reaction. Can you give me an example of any other case of irreversible reaction? Reversible तो बहुत सारे हो गए example. Irreversible का कोई और example बता सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, बताता हूं। देखो ये इरेज कर दूं ऊपर वाला पार्ट, जस्ट देखो, अभी जस्ट आपने पढ़ा, हम फोटोसिंथेसिस वाला भी कह सकते हो, और बिल्कुल इससे और सिमिलर वो फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरे पास ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज हैपनिंग, राइट। ये दोनों ने आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है, बट व्हाट इफ दीज वेपर्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन ओपन कंडीशंस। तो ये क्या होगा, ये वो वाटर वेपर हट जाएंगे वहां से। अगर ये वहां से हट गए, इन अ वे आई कैन से दैट इट इज एस्केपिंग फ्रॉम द सिस्टम। अगर ये बार बार निकलता जा रहा है वहां से, तो इक्विलिब्रियम इसका बार बार फॉरवर्ड में शिफ्ट करता जाएगा, एंड इवेंचुअली ये सब सारा का सारा H2O इवेपोरेट कर जाएगा। हमारे गीले कपड़े ऐसे ही तो सूखते हैं, राइट। हाउ डू वी लाइक ड्राई और क्लोथ, सेम एक्चुअली द सेम फिनोमेना, कि मेरे पास ये फैब्रिक है, दिस कंटेन्स H2O लिक्विड, यहां पे इसके H2O वेपर्स बन रहे हैं जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा ड्राई या फिर लेस मॉइस्ट एयर आई, उसमें ये H2O के वेपर डिफ्यूज कर जाएंगे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए एयर ने इनको कैरी कर लिया अपने साथ, तो ये यहां से हट गए, तो ये और वेपर बनाएगा, फिर वो भी यहां से हट गए, फिर और वेपर बनाएगा, और वो भी सब हट जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा, ऑल H2O will convert to H2 vapors. Another case, I've taken NaCl aqueous and AgNO3 aqueous, and I've mixed the two. On mixing, what I have found is AgCl and NaNO3 aqueous. So what is happening in this case is this AgCl being insoluble in water will precipitate. So it will start settling down. It's coming out of the reaction mixture. तो यानी कि आपका इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट जो है ये मिक्सचर में नहीं रहा ना, यानी कि पानी में ये क्या बिल्कुल सेपरेट हो गया, नीचे बैठ गया, इट्स नॉट इन द सॉल्यूशन। तो Ag प्लस और Cl माइनस साइंस क्या होने, सॉल्यूशन में से हटते जा रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड में जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, एंड इवेंचुअली कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स। ये रेस कर दूं, So next portion of the equilibrium is ionic equilibrium. So what we have done is we just divided the entire chapter into two portions. One is called chemical equilibrium, another is ionic equilibrium. So in ionic equilibrium, we are dealing with the same concept, same logic, what you have studied so far, but you would be applying them in the situations of ions, as the name suggests. ठीक है, तो ions कब आते हैं हमारे पास, dissociation में. Calcium carbonate was dissociating, was it forming ions? No. हाँ, aqueous solution में कोई dissociate कर जाए तो भी जरूरी नहीं है कि ions आएंगे.
इलेक्ट्रोलिसिस नहीं नहीं। अच्छा देखो एक बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं, डिसोल्यूशन। आई एम डिसॉल्विंग समथिंग in something else, ठीक है। Let's assume two scenarios. One is you have got two glasses of water, pure H2O, exactly same amount of water, same conditions, everything is same, ठीक है। Now what you have done is you have taken 1 spoon of sugar available at home, ठीक है, and you have taken 1 spoon of common salt which is NaCl, आपने दोनों glasses में एक एक ये डाल दिया, both will get dissolved eventually even if you do not do the stirring, ठीक है। और डजंट रियली मैटर, अभी स्टीयरिंग कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कर दिया, ये दोनों डिसॉल्व कर गए, दोनों गायब हो गए पानी में, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू देम? एंड शुगर में तो यानी कि व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि सॉल्ट में यू वुड ऑब्जर्व आयंस, दिस NaCl will ionize into Na plus and Cl minus ions, these Na plus ions will get surrounded by water, these Cl minus ions will get surrounded by water, which means I would say Na plus aqueous yani aquated ion or hydrated ion, and Cl minus will be again aquated or hydrated ion. The same thing will happen in this case of NaCl or any other salt. But in case of sugar, this is not happening. No ions are forming. So what is happening in case of sugar? डिसॉल्व तो वो भी कर रहा है, आइंस वहां पे बने नहीं, तो कैसे डिसॉल्व किया वो? कंप्लीटली डिसॉल्व तो NaCl भी किया है। क्या यार, बचपन से शुगर डिसॉल्व करते आ रहे हो वाटर में, ये नहीं पता कैसे डिसॉल्व हो रहा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ शुगर इज, देखो बहुत सिंपल सा केस है कि क्या हुआ, मेरे पास वाटर है एंड देन फॉर एग्जांपल आई हैव अ शुगर क्यूब, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास पहुंचेंगे तो दीस शुगर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O मॉलिक्यूल्स, तो वन मॉलिक्यूल विल कम आउट ऑफ द लैटिस और दैट सॉलिड स्ट्रक्चर, एंड वो मॉलिक्यूल मिक्स कर जाएगा वाटर के साथ में, फिर ऐसे करके एक एक और मॉलिक्यूल आएगा, एक एक और मॉलिक्यूल आएगा, एंड इवेंचुअली ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स which were earlier staying together as a part of one big solid structure now are separate and mixed homogeneously with all the water molecules. क्योंकि अब शुगर का एक एक पार्टिकल is its one molecule and that is so small that I cannot see it, that is why it's completely disappeared, ठीक है। point number 1. point number 2, in this case a molecule is separated from its structure, यानी कि जो solid piece है, but that molecule did not dissociate further or ionized further, उसके कोई आयन कोई और छोटे पार्टिकल नहीं बने, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास NaCl है, तो इसमें एक पार्टिकल अलग हुआ, एक पार्टिकल अलग हुआ, उसको वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया एंड सो ऑन, एंड व्हाट यू फाइनली फाउंड इज Na plus and Cl minus ions. आयनिक कंपाउंड्स में कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, उसमें पहले से ही आयंस होते हैं, तो वही आयन सेपरेट हो गए और उनको वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। बट इन दिस केस समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग हियर. व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन टू केसेस इज वेरी सिंपल, इज दैट कि यहां पर जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहा है, वेदर इट कंटेन्ड मॉलिक्यूल और डिड नॉट कंटेन मॉलिक्यूल, वो अपने आयंस में टूटकर डिसॉल्व कर रहा है. इस प्रोसेस को आप आयनाइजेशन भी बोल सकते हो और इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है. ठीक है. इनफैक्ट इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ही वो कौन होते हैं व्हिच आयनाइज इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है. मॉलिक्यूलर डिसोल्यूशन कौन देते हैं? जो आयनाइज नहीं हो पा रहे. ठीक है. तो वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल एज इट इज अपने सॉलिड स्ट्रक्चर से सेपरेट हो जाएगा या लिक्विड स्ट्रक्चर से सेपरेट हो जाएगा एंड विल मिक्स नॉर्मली. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे आसपास एयर में O2 मॉलिक्यूल्स हैं, N2 मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर मिक्स्ड होमोजेनियसली. अब ये मॉलिक्यूल से टूटा थोड़ी ना हुआ है किसी आयन में, बट ये होल मॉलिक्यूल इज मूविंग. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. देयर आर लॉट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स और उनके बीच बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं. सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां शुगर के मॉलिक्यूल कम है, यहां पे ज्यादा है. मतलब उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा पूरे टाइम पे, इसीलिए हर सिप में टेस्ट सेम आएगा. ठीक है. तो यानी कि एक चीज बहुत क्लियर है इस केस में, इस पूरे इस पोर्शन ऑफ टॉपिक में वी विल बी डीलिंग ओनली विद दिस केस, बट वी शुड नो दिस वन. व्हाई? आई विल टेल यू वंस विल रीच अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर इट विल बी रिक्वायर्ड मच. ठीक है.
तो नाउ व्हाट आई कैन सिंपली से बेटा कि in this chapter I'm dealing with electrolytes. So what are electrolytes? Which ionize into the respective ions in polar solvents. ठीक है? I can classify the electrolytes into two cases. One is called a weak electrolyte and another is called a strong electrolyte. ठीक है? What is a strong electrolyte? The one which ionizes or dissociates completely. The one which does not ionize completely is a weak electrolyte. So I can say that complete ionization or incomplete or partial ionization. ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में. ठीक है, अच्छा अब हम केमिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से डील करते हैं. तो किस तरह के सब्सटेंस एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन करते हैं? सॉल्ट्स है ना, अभी जब हमने बात भी करी तो सॉल्ट्स डेफिनेटली आइंस में टूटते हैं. और कौन से सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर आइंस में टूट जाते हैं? एसिड H+ देता है, Cl जैसे HCl हो गया, तो एसिड्स डज दैट, बेसिस भी करते हैं. तो कैन आई से दैट दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ वे. ठीक है, तो दे वुड आल्सो बी गेटिंग कैटेगराइज्ड हियर. All salts ionize completely in water, which means all of them are strong electrolytes. Now the situation comes with the acid and base. The ones who ionize completely are called strong acids. The one who could not ionize completely are called weak acids. Same goes with the base, weak base and strong bases. तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, समझ में आया? ये बहुत छोटी सी चीज है, बट आपको क्या करना है कि बस ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है. ठीक है, कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते, एक वो जो कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं. Salts, all salts ionize completely. That's what I've assumed here, and that is what usually happens also. Acids को I can categorize into strong and weak. तो strong acids कौन से होते हैं? जो completely ionize करते हैं, और weak acids कौन से होते हैं? जो completely ionize नहीं करते. ठीक है, ये रेस कर दूं. Now, अब आपको अगर एक एसिड है आपके पास, तो आपको कैसे पता चले कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है? ऑब्वियसली एज आई सेड हियर, नहीं, पीएच से नहीं पता चलेगा. पीएच जो है वो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है. पीएच इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस नहीं है. ठीक है, मतलब अगर मैं वो कुछ मैंने पीएच के थ्रू मैं मेजर कर सकता हूं, बट पीएच विल ऑलवेज नॉट गिव यू द राइट रिजल्ट कि ये एसिड स्ट्रांग है, ये एसिड वीक है. मतलब मैं एक वीक एसिड से भी लोअर पीएच लेके आ सकता हूं और एक स्ट्रांग एसिड से हायर पीएच लेके आ सकता हूं. कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देता हूं. एक पानी में बहुत एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ HCl डाल दिया बहुत सारे पानी में, और एक थोड़े से पानी में खूब सारा मैंने एक वो डाल दिया वीक एसिड, तो प्रोबेबली जो H+ ये दे रहा है वो ज्यादा आ गए और ये H+ जो दे रहा है वो कम आ गए. इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसका पीएच लो आ जाएगा, इसका पीएच हाई आ जाएगा. तो आई वुड से दिस सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक, बट दिस डज नॉट मीन दैट द एसिड इज मोर एसिडिक. ठीक है ना? I can talk about, so pH would help you in comparing the solutions, would not help you much on comparing the substances. ठीक है, तो जब आपको प्रॉपर सब्सटेंस कंपेयर करना है कि ये एसिड स्ट्रांग है कि ये एसिड वीक है, तो आप इसके थ्रू नहीं देखोगे, किसी और चीज के थ्रू देखोगे, which is degree of ionization. Yes, you can use degree of ionization, but the right way through which you do is, let's suppose I have this acid HA which is ionizing into H+ and A-. I don't know it's a strong acid or weak acid. I'm assuming that every reaction is reversible. है ना? Irreversible तो वो हो जाएगी तो बात अलग है, otherwise every reaction is reversible. ठीक है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc. ठीक है, higher the equilibrium constant of this reaction, higher the extent of reaction. यानी जितना एक्सटेंट ज्यादा होगा उतना H+ ज्यादा फॉर्म होंगे, उतना सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. अब मेरे पास एक दूसरा एसिड है Hb, ये H+ बना रहा है, ये A- बना रहा है, इसका भी मैंने Kc कंपेयर कर लिया. व्हाट आई फिगर्ड आउट कि इसका Kc फॉर एग्जांपल इज 10 की पावर 3, इसका Kc इज 10 की पावर -3. सो व्हिच मींस इसका एक्सटेंट बहुत लो है फॉरवर्ड में, इसका एक्सटेंट बहुत हाई है फॉरवर्ड में, तो दिस विल प्रोड्यूस मोर H+, दिस विल प्रोड्यूस लेस H+,
इन आइडेंटिकल कंडीशंस, कि मैंने इसका और इसका सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया, ये भी सेम टेम्परेचर पे, ये भी सेम टेम्परेचर पे, एवरीथिंग एल्स इज सेम. So now they're differentiating only on their own property, which is to dissociate and to give H plus. So this is giving more H plus, this is giving less H plus. So definitely this is a stronger acid, this is the weaker acid. यानी कि अगर मुझे कभी भी कंपेयर करना है एसिड्स को, तो what I would be comparing is their equilibrium constants. ठीक है? Now, an interesting thing which comes in ionic equilibrium section is, यहां पर हम लोग क्या हुआ है कि केसी यूज करते करते बोर हो गए. ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो केस हम डिस्कस कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली विल चेंज द नेम ऑफ केसी. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड. तो इसका केसी ही है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ न्यू थिंग, इट्स द सेम केसी थिंग, बट आई विल बी कॉलिंग इट के. इन केस ऑफ बेस आई विल बी कॉलिंग इट के. तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, बच्चा अलग अलग लग रहा है. वो पहले मोनोटोनस हो गया था कि ये वही, कि अब वही केसी बार बार बोले जा रहे हैं. सो नाउ के इज नथिंग बट दी equilibrium constant of this ionization, which means dissociation constant or ionization constant of acid. So can I say that higher the Ka, stronger the acid? इनफैक्ट एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए भी आपके पास टेबल होता है जिसको आप के टेबल या पीके टेबल बोलते हो. पीके क्या होता है अभी थोड़ी देर बता दूंगा. पीके सुना हुआ है? Okay, so it's pKa, not pK. ठीक है, so it's pKa table. So basically pK is nothing but minus of logarithm of Ka, और ये log base 10 लिया हुआ है. So इसमें क्या होगा, higher the value of Ka, lower the value of pK. तो एक्चुअली क्या होता है, pK की वैल्यूज लाइक मैनेजेबल नंबर में आ जाती है. जैसे K की वैल्यूज फॉर एग्जांपल किसी के लिए आ रही हैं 2.35 into 10⁻⁻6. ठीक है, इसके लिए आ रही है कुछ 2.76 into 10⁻⁻7. तो क्या होगा कि मतलब इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर्स हो गए, थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है. तो पीके की वैल्यूज में क्या होता है, ये एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, मतलब कि 2-3 डेसिमल प्लेसेस में सीधा डायरेक्ट नंबर होंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं होगा. एंड इट बिकम्स इजियर टू कंपेयर पीके. तो लोअर द पीके, स्ट्रॉन्गर द एसिड. ठीक है, हो गया. इरेज कर दें. Okay, now there are certain theories of acids and bases. ठीक है, which you have to understand. So there are 3 theories of acid and bases which we primarily use in case of this ionic equilibrium situation, or in fact in a lot of places in chemistry. The first theory is Arrhenius theory of acids and bases. ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई एसिड है, तो मतलब कोई सब्सटेंस है, तो ऑन व्हाट बेसिस आई विल बी कॉलिंग दैट सब्सटेंस एज एन एसिड. अरीनियस के हिसाब से एसिड कौन है? बताओ.
those who furnish H plus ions, or I would say H3O plus ions in water. ठीक है? And bases कौन है? Those who furnish hydroxyl ions in water. ठीक है? Now there is another theory called Lewis theory of acid and bases. तो Lewis theory के हिसाब से acids कौन है? The ones who accept an electron pair. So I can say that electron pair acceptor or their electron pair donor. ठीक है? Now, so any example for this case? NH3 is a Lewis base. It contains an electron pair which it can donate. Any example for the Lewis acid? BF3. Boron contains a vacant orbital in which it can accept a lone pair of electron. So this is a Lewis acid. ठीक है? Now, एक छोटा सा question. I have this substance. This is called carbene, or you can take this one. In fact, this is precisely called dichlorocarbene, right? Is this substance a Lewis acid or a Lewis base? ये substance जो है ये Lewis acid है या Lewis base है, ये पूछा है उसको. It should be a Lewis base because it has a electron pair which it can donate, but it's not. It's a Lewis acid. क्यों? because I ask questions and their answers are not what expected. ठीक है? That is the reason why I ask questions, to challenge your thinking. Okay, now see. So I have this dichlorocarbene in which it seems like that there is an electron pair and it would be donating. But now just look at the situation of this carbon. इस कार्बन के पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर मैं ये शेयरिंग वाले, जो एक तो कार्बन का हो गया बट एक क्लोरीन का है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है. इवन इफ आई मतलब कंसीडर कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग में रूल होता है कि मैं जब भी मेरे से पूछा जाएगा तो आई विल इंक्लूड योर्स आल्सो. तो 2 + 2 4 + 2 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है? एंड यू कैन आल्सो सी दैट कि यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है. एंड सिंस दिस कार्बन बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, though it does not have any positive charge on it, this carbon is electron deficient and has a vacant orbital. It will always be accepting a electron pair. So it's a Lewis acid, not a Lewis base. ठीक है? Now, is this a Lewis acid? No. But there is one more thing attached to it. Why? You also have to explain that. So you can at least predict that this is certainly not a Lewis acid. ठीक है? So now the question actually changes to why it's not a Lewis acid. Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करवा रहा हूं. पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अगर ये पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? राइट? यही तो बनाएगा भाई. यहां पर ये क्या है? 1s2 2s2 2p6. अगर इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करा दूंगा तो कहां जाएगा? इसका वैलेंस शेल थर्ड है जो कि अभी वैकेंट है. अदरवाइज 3s1 होता है ना. तो अगर मैं 3s में इलेक्ट्रॉन 2 एक्सेप्ट कराता हूं तो ये बनाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2. तो एक तो ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. दूसरा, इट्स गेनिंग अ नेगेटिव चार्ज, बीइंग अ मोर वेरी
less electronegative element or more electropositive element, it will not be able to hold this charge, यानी कि highly unstable state में होगा, तो it would never have a tendency to gain electron pair. तो यानी कि इसमें यानी कि मैं पर्सपेक्टिव ये दोनों एग्जांपल्स में ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ब्लाइंडली ये नहीं करना है कि बस लोन पेयर देखा तो लुईस बेस और प्लस चार्ज देखा मतलब लुईस एसिड. दिस इज द थिंकिंग व्हिच आई एम चैलेंजिंग. और ये दोनों एग्जांपल बहुत इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली चूज करें क्योंकि इनमें वो बिल्कुल उल्टा केस आएगा. बट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा. जैसे लेट्स सपोज H+, इज इट अ लुईस एसिड? यस, इट्स अ लुईस एसिड. ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर because it will form the H- which is stable also. ठीक है. और फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इट्स कंबाइनिंग विद O-, तो इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड विल फॉर्म, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा अमोनिया माइन वाला केस. Right? So here nitrogen is donating a lone pair of electron to H+, which is accepting this electron pair and then forming ammonia mine. Right? नहीं, नथिंग. देखो पॉइंट ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एक्सेप्ट जबरदस्ती करवा देंगे. हम ये कह रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है या नहीं है. तो मैंने कहा अगर मैं चाहूं तो करवा सकता हूं. ऐसा नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करवा सकता इसको. बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करवा रहा हूं तो ये क्या बना रहा है? Na- नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना लूज कर रहा है. तो यानी कि ये काफी अनस्टेबल स्टेट में आ रहा है, विच इट वुड नॉट एवर लव टू हैव. यानी कि इसका मतलब ये खुद से कभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी टेंडेंसी नहीं होगी. हम जबरदस्ती कराना चाहें तो बात अलग है. तो अगर ये खुद से नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका एसिड वाला बिहेवियर है ही नहीं. तो इट्स नॉट अ लुईस एसिड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बेस का ये काम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है जो ये डोनेट कर सकता है. तो हाँ, ये मतलब नीदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस. सिंपल. अब लुईस बेस यूजुअली पहचानना काफी इजी होता है क्योंकि लुईस बेस के अंदर क्या होता है कि आपको बस ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है व्हिच इट कैन डोनेट और नॉट, एंड डेफिनेटली इफ इट कैन तो इट विल बी अ लुईस बेस एंड इट बिकम्स अ प्रीटी सिंपल केस टू हैंडल. लुईस एसिड फिगर आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. ठीक है. सो एक सिचुएशन क्या होती है लुईस एसिड की कि जब आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे कि मैंने अभी H+ वाला एग्जांपल दिया. ये एक लुईस एसिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. BF3 वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये भी एक लुईस एसिड है. ठीक है. तो इसमें क्या प्लस चार्ज है और खाली ऑर्बिटल है. इसमें यहां पर कोई प्लस चार्ज नहीं है. बट वी नो दैट BF3 में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट्स बोरॉन का नॉर्मली क्या होता है? 1s2 2s2 2p1. तो वैलेंस शेल है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दिस इज बिफोर बॉन्डिंग. पर लेकिन जब ये बॉन्ड करता है तो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां चला जाता है 2p में. इट फॉर्म्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, which means इसका p का एक ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है. तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरॉन, एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऊपर से इन 3 फ्लोरीन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है. तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड. क्लियर? गुड. नाउ अब मैंने कहा कि लेट्स कंसीडर दिस सिचुएशन. कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट अ लुईस एसिड? क्यों? कार्बन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, इट डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल, तो इट शुड नॉट बी अ लुईस एसिड, बट इट इज. So now for example I have a base, this has an electron pair which it can donate to carbon. ठीक है. now देखो अब क्या हो रहा है? this oxygen is more electronegative than carbon, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, ये यानी कि this carbon will be electron deficient. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एवरीथिंग इज देयर, इट डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल, बट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. नाउ अब क्या होगा कि ये बेस इसके पास पहुंचा, कार्बन के पास, एंड बेस ने कहा कि यार ओह यू आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डू यू नीड माय हेल्प? तो बेस तो इसने कहा कि हाँ यार इफ पॉसिबल, बट आई डोंट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्म अ बॉन्ड विद यू. मतलब आई वुड लव टू फॉर्म अ बॉन्ड विद यू बट आई डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद यू. तो बेस ने कहा ओ नो नो, you have the possibility of form a bond with me. It's just you have to decide what, that do you want to form a bond with oxygen or you want to form a bond with me?
सिंपल, ठीक है। तो अब उसने कहा यार नहीं नहीं, ऑक्सीजन के साथ तो मतलब इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये बॉन्ड तो है, ये नहीं ब्रेक कर सकते। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ऑक्सीजन को किक आउट करना है, ऑक्सीजन को रखना है, बट ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है उसे हटा दो क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, और मेरे साथ सिग्मा बॉन्ड बना लो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो है ना, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो पाई एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसे पुल कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड से भी पुश कर रहा होता है, सॉरी पुल कर रहा होता है। सो बेसिकली कार्बन इन द विसिनिटी ऑफ दिस एटम, कार्बन will break this pi bond and will form a bond with this boron, this not boron, a base. This kind of situation will happen. Whether this situation will be temporary or permanent, that would vary from situation to situation. But in this case, this atom or this group of atom has acted as a Lewis base and this has acted as a Lewis acid. ठीक है, यानी कि मैं अगर तीनों सिचुएशन को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक तो सिचुएशन आ रही है कौन सी, कि मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि डायरेक्टली विजिबल है, विच इज दिस केस। सेकंड इज मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है, बट सिंस आई नो केमिकल बॉन्डिंग आई कैन सी कि इसमें इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन प्रेडिक्ट कि ये लुईस एसिड का काम कर सकता है या नहीं कर सकता। थर्ड सिचुएशन इज कि इट्स नीदर विजिबल नॉर अवेलेबल, कि दिख भी नहीं रहा और है भी नहीं एक्चुअली में, बट इट कैन बी मेड अवेलेबल अंडर अ सर्कमस्टेंस, एंड यूजुअली दैट सर्कमस्टेंस इज कि आपके पास एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है विच इज बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू अ पाई बॉन्ड। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा अगर कोई लुईस बेस इसके पास पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो पॉसिबली ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके उस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, this is the kind of case you would see a lot of times in organic chemistry. ये वाला सिचुएशन जो मैंने बताई है, ठीक है। ये चलो, is this so what I think there is some confusion about this case. So what I'm doing is I'm explaining the same case but using different example. Let's suppose मेरे पास एक compound है, ये this compound is called formaldehyde, ठीक है, and I have got a Lewis base OH minus where this oxygen has got 3 electron pair but it would prefer to donate only 1, ठीक है। This carbon being attached to oxygen which is more electronegative than carbon, तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, इसका सिग्मा बॉन्ड से भी पुल कर रहा होगा और इसके पाई बॉन्ड से भी पुल कर रहा होगा, यानी कि ये कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये ऑक्सीजन अगर इस कार्बन को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दूंगा और विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, देन दिस कार्बन कैन पॉसिबली break this pi bond and can tell the oxygen that you have always been harassing me for these pi bond electrons, let's keep it with you, I'm forming a sigma bond with this oxygen, ठीक है। If this will happen, then what would happen is the situation you will observe is CHO minus, because एक इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से थे, ठीक है, H and OH, ठीक है। ये बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कार्बन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो आई कैन से दैट दिस इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड एंड प्राइमरीली एट व्हिच एटम, दिस कार्बन। तो यानी कि अगर मैं इनको देखूं तो ये वाला केस या कार्बन डाइऑक्साइड वाला केस में, दोनों में क्या हुआ कि मेरे पास एक एटम है जो कि दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड बना रहा है, ईदर 1 और 2, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर, एंड देयर इज अ लुईस बेस which has electron pair to donate. Since this being electron deficient and this being electron rich in this situation, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये अपना पाई बॉन्ड इसको ब्रेक कर देगा या उस तरफ हेटेरोलिटिकली शिफ्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पे टेम्परेरीली वैकेंट ऑर्बिटल को वो क्रिएट कर देगा। अगर इनका बॉन्ड बन पाया तो इट वुड बी लाइक अ
दिस सिचुएशन केस कि भाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अगर नहीं बन पाए तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ये आया बॉन्ड बनाने लेकिन नहीं बना पाया, तो ये रिवर्स सिचुएशन हो गई, दैट्स द केस. सो इन दिस सिचुएशन this kind of species will be acting as a Lewis acid. ठीक है. Is there any other doubt? H plus will attain. Okay, so there is a doubt that H plus will attain noble gas configuration of which noble gas? H plus does not have any noble gas configuration. H minus will have a noble gas configuration of helium. If I make H plus to accept an electron pair, it will be forming H minus, which is 1s2, which is the noble gas configuration of helium. Is it something 1K hyperconjugation? What? Which? I don't know, there is a doubt that is it something similar to 1K hyperconjugation. I couldn't get the doubt really well. I don't know, 1K hyperconjugation. Probably there's a typo mistake. Okay, like LK. Oh. Okay, is it like hyperconjugation? No, it's not like hyperconjugation. Have you studied hyperconjugation? Huh? No? Some have studied, some have not. Okay, this is definitely not hyperconjugation. This is the case of electromeric effect. Have you studied electromeric effect? आपका वो चैप्टर कवर हुआ है, some basic concepts of organic chemistry? हाँ, हुआ है, or principle of mechanisms of organic chemistry? No. There's an effect called electromeric effect, which is nothing but a temporary shifting of the pi bond and onto one atom, or you can say that temporary heterolytic breaking of a pi bond in the vicinity of attacking reagent. जैसे let's suppose क्या हुआ, मेरे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके मैंने कहा कि there is a group of atom or there is some substance which can form a bond with one of these carbon, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉसिबली बाइंड कर सकते हैं, लेकिन तब जब इस कार्बन के पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर मे बी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खुद से है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो इसकी विसिनिटी में अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है किसी भी एक एटम पे, डजंट रियली मैटर, लेट्स सपोज ये ब्रेक कर गया, तो अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और ये खाली ऑर्बिटल होगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दिस कार्बन and will ask for its electron pair. This will be acting as a sort of a Lewis base and this will be accepting electron pair, will be acting as a Lewis acid. तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो सिचुएशन कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O केस था, ये वाला सिचुएशन लिया था ना मैंने, और मैंने अटैक कराया था किसी ऐसे सब्सटेंस से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक में इनको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास लेट्स सपोज एक न्यूक्लियोफाइल है, सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच द इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, यानी कि ऐसी पोजीशन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, विच इज कार्बन, और कार्बन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ब्रेकिंग ऑफ जो पाई बॉन्ड हो रहा है टेम्परेरीली, यानी कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आए तो ये कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाए बिना चला जाए तो ये कार्बन वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, विच मींस इट्स जस्ट अ टेम्परेरी इफेक्ट. आई बात समझ में? नहीं, मैं ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझाना चाह रहा हूं. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर मेरे पास दो एटम, इनके बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट डजंट रियली मैटर, हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो लेट्स सपोज ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, इन ये दोनों बॉन्ड्स हैं, इन दोनों एटम्स के बीच में एक दूसरा अटैकिंग एजेंट इनके पास पहुंचा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड करना चाहता हूं, इन दोनों ने मना कर दिया कि हमारे पास जगह खाली नहीं है, हम बॉन्ड नहीं बना सकते, फिर उसने समझाया उन दोनों को कि मैं तुम्हारे साथ सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता हूं, तुम दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है विच इज वीक, तो उसने कहा ओके,
तो ये बात थोड़ी काम की लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हम पाई बॉन्ड अपना ब्रेक कर लेते हैं। तो जैसे ही पहुंचा तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं। अब वो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा हेटेरोलिटिकली, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट कर जाएंगे, या तो दोनों इस पे चले जाएंगे या दोनों इस पे चले जाएंगे। एंड आने वाला अटैकिंग एजेंट भी अपने हिसाब से चूज कर लेगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है तो वो उसके पास चला जाएगा जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, और अगर वो खाली ऑर्बिटल खुद लेके आ रहा है तो उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, व्हाटएवर। ठीक है, तो यही चीज यहां पर हो रही है, ये चीज यहां पर हो रही है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर सिचुएशन है। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है। अब ये आया अटैकिंग रेजेंट, इसने कहा कि हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वो पूरी कहानी इसको इनको समझाई, इन्होंने अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर लिया और ये भाग गया बिना बॉन्ड बनाए। इसने पूरी कहानी समझाई, इनका पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया और फिर कहा कि ये पता नहीं बहुत टाइम ले रहे, मैं तो जा रहा हूं, तो निकल गया। तो अब क्या होगा, दे विल रीफॉर्म द पाई बॉन्ड, व्हिच मींस इट्स जस्ट अ टेम्परेरी इफेक्ट, दे आर ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड टेम्परेरीली इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रेजेंट। और हमेशा ऑब्वियसली अटैकिंग रेजेंट रिएक्ट कर देता है, ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, ठीक है, वो रिएक्ट कर देगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रेजेंट ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बट अगर ये हट जाएगा तो ये वापस फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी इफेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट, कि ये ब्रेक हुआ और अटैक भी हो गया। तो दिस इज द स्टेज, दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट। कहां पे बताया ना स्टोरी, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड तो बेकार वीक बॉन्ड है, सीरियसली यही है। So basically क्या हो रहा है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, so whatever the substance which is coming here is actually supplying electronic charge density, or you can say that it's increasing the electronic charge density at the carbon. So what would happen is carbon, for the better stability, अगर कार्बन को लगता है कि यार यहाँ पे it can form a sigma bond in simple terms you can say that, या फिर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, अपना ऑर्बिटल को इस तरफ शिफ्ट करेगा, और उससे करने के लिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि मतलब अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक करके इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि यानी कि क्या हो रहा होगा, मेरे पास लेट्स सपोज C डबल बॉन्ड O है, एंड लेट्स सपोज Cl माइनस ने अटैक किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या यहाँ पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया। इन दिस सिचुएशन व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इज दिस काइंड ऑफ केस, ठीक है, गॉट इट। तो यहां पे जब ये पहुंचा और ये पाई बॉन्ड टूटा तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना, जिसकी यहां पे मैंने कोई बात नहीं करी है, ठीक है। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हुआ है तो देन आई कैन गिव यू अ ब्रीफ ऑफ इट। अगर आपने नहीं पढ़ा है और ये इट्स ड्यू और टू बी कवर्ड, तो इट्स बेटर दैट वी शुड टच इट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इट, क्योंकि अदरवाइज इट्स इन अ वेज बिगर टॉपिक, ठीक है। तो विल डेविएट आउट ऑफ टॉपिक, तो तभी उसको डिस्कस करते हैं। अभी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है, इरेज कर दूं। नाउ all these four are Lewis acids, ठीक है। I want to know which of them is the strongest Lewis acid, or you can say you can just like tell me what is the decreasing strength of these Lewis acids. बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है सबका, ऑल ऑफ देम आर लुइस एसिड्स। तो बस आपको ये बताना है इनमें से सबसे अच्छा लुइस एसिड कौन है और सबसे बेकार लुइस एसिड कौन है। विच वन? BF3, क्यों? इसलिए so according to you BF3 should be the most acidic Lewis acid, because fluorine being the most electronegative atom will pull maximum electron from the sigma bond, will make it more and more deficient and will increase the tendency of this boron to accept an electron pair, ठीक है ना, ये होना चाहिए। नहीं, there is a concept which is being applied here, I don't know if you have studied or not.
व्हाट इज हैपनिंग, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, प्लानर, ठीक है। इस बोरॉन का क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो इट हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करा रहे हैं, ठीक है। इस फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इसके p ऑर्बिटल में है, ठीक है ना भाई। फ्लोरीन ने तो क्या किया है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, तो वैलेंस शेल में इसके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउट ऑफ विच इट हैज यूज्ड 1 ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है टू फॉर्म दिस बॉन्ड, यानी कि 2p के 2 ऑर्बिटल और 2s का 1 ऑर्बिटल खाली पड़ा हो, मतलब एज एन इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग, इट्स अवेलेबल। तो ये 3 लोन पेयर 2 2s में और एक 2s में और 2 2p में, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज दिस प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज xy प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ द बोर्ड इज xy, तो z कहां पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट, आउट ऑफ द प्लेन। तो this is a 2p z of boron which is vacant, ठीक है, ये vacant हो गया। अब मैंने now I have a electron pair of fluorine which is 2p again here. Now these two orbitals are parallel to each other. इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके ये खाली है, तो दे कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। इस फ्लोरीन ने कहा कि ये क्या मजाक है, सिग्मा बॉन्ड तो मैंने भी बनाया है, तो ये पाई बॉन्ड उसके साथ क्यों बनाया जा रहा है, मैं भी बनाऊंगा पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है, which means all these 3 fluorine atoms are trying to form a pi bond with the vacant orbital of boron, ठीक है। Now this kind of pi bond which is being formed between these 2 atoms is called pi back bonding, ठीक है। Why it's called back bonding? Because usually what happens is कि जो सराउंडिंग एटम होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहा होता सेंटर एटम को, मतलब टू फॉर्म अ बॉन्ड, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके पास खाली ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड बना रहा है, तो सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न गिफ्ट काइंड ऑफ थिंग, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो उसने कहा कि यार ये अच्छा फ्रेंड है तो आई शुड हेल्प हिम, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके इसके साथ में एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। नाउ अब क्या हो रहा है कि तो यानी कि बेसिकली क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, बाकियों के बीच में नहीं बना हुआ, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डीलोकलाइजेशन व्हिच इज हैपनिंग, यानी कि पाई बॉन्ड यहां से भी बन रहा है, कभी यहां से बन रहा है, कभी यहां से बन रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर का ये एक डीलोकलाइजेशन होगा जो यहां पर हो रहा होगा, व्हिच इज स्टेबलाइजिंग द बोरॉन, ठीक है। तो जो हमें लग रहा था कि फ्लोरीन एक्चुअली बोरॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा होगा, यहां पर तो केस उल्टा निकल रहा है। एक्चुअली फ्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू उससे रेजोनेंस करके, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, है ना, पाई बॉन्ड्स बना रहा है, और ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी कर रहे थे, उसका एक तरीके से रेजोनेंस हो गई, ठीक है। सो बेसिकली फ्लोरीन इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस बोरॉन थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग एंड डेफिनेटली इज डिक्रीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। चीज क्लियर हुई, ये समझ में आया सबको कि क्या हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब नाउ लेट्स रेप्लिकेट द सेम कॉन्सेप्ट टू द अदर मॉलिक्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास BCl3 है या BBr3 है या Bi3 है, सब में एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, यहां पर भी इनके पास लोन पेयर है, यहां पर भी इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, दे कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो यहां पर भी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही होगी बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन, ठीक है, और वो डीलोकलाइजेशन टाइप का भी हो रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे क्लोरीन का वैलेंस शेल क्या होता है, 3rd, तो ये जो ऑर्बिटल होंगे कौन से होंगे, 3p के, तो यानी कि यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा दिस विल बी ऑफ द टाइप ऑफ 3p एंड 2p। 2p किसका, बोरॉन का, और 3p किसका, क्लोरीन का। यहां पर जो पाई बॉन्ड बने हैं ये कौन से हैं, फ्लोरीन का 2p और बोरॉन का 2p। अब यहां पे क्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन कर देता हूं, तो क्या होगा, 4p। तो यानी कि यहां पर जो पाई बॉन्ड्स बन रहे होंगे बैक बॉन्डिंग के, वो 4p 2p के बनेंगे, यहां पे 5p 2p के बनेंगे, यहां पर जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे दे विल बी ऑफ द टाइप ऑफ 3p 2p एंड दिस विल बी ऑफ द टाइप ऑफ 2p 2p। नाउ कमिंग बैक टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हिच सेज दैट कि बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग बेटर होगी जितनी, उतना ज्यादा बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। अब ओवरलैपिंग अच्छी कब होती है? जब ऑर्बिटल्स का साइज सेम हो। सो 2p 2p का साइज जब सेम होगा तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। 3p 2p का साइज डिफरेंस हो गया, ये बड़ा हो गया 3p, 2p छोटा ही रह गया, तो यानी कि यहां पर ओवरलैपिंग पुअर होगी, यहां और भी पुअर होगी, यहां पे और भी पुअर होगी, व्हिच मींस जो पाई बॉन्डिंग हो रही है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, वो सबसे अच्छी कहां हो रही है? यहां पे। सबसे बेकार कहां हो रही है? ठीक है, व्हिच मींस कि आपका वैकेंट ऑर्बिटल सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड कहां पर है? BF3 में। सबसे कम यूटिलाइज कहां पर है? तो यहां खाली पड़ा हुआ है ना, क्योंकि आयोडीन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो दूसरे कोई भी अगर ग्रुप ऑफ एटम आएंगे और बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं बोरॉन तेरे को, तो वो क्या बोलेगा? हाँ यार जल्दी दे दो, ये आयोडीन ने वैसे भी कुछ नहीं करना। ये फ्लोरीन इज अ गुड फ्रेंड, इट्स हेल्पिंग प्रोवाइडिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू बैक बॉन्डिंग, तो विल डिक्रीज इट्स लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? तो ये एक्चुअली वो एग्जांपल है जहां पे इट्स लाइक इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द केस, तो दिस इज a perfect example of back bonding actually. Okay. Pi bonding, back bonding is not possible in chlorine because large size. I would not say it's not possible. It's possible, but it happens to a very weak extent. So the question, I'll just tell you the question. The question to the other center is that pi back bonding, which is happening in case of chlorine, is not possible because of the large size of chlorine. So my response to that is that I would not say it's not possible. It's possible, but to a very low extent. Because of the large size of chlorine, this electron pair which will be there will be in the size of 3p, will be a larger orbital, and electron pair which is accepting the electron is a very small orbital, it's of 2p. तो इनका ओवरलैपिंग एफिशिएंट नहीं होगा, एंड ये एक्सटेंड फर्दर और बढ़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी और कम होती जाएगी, क्योंकि आयोडीन के अंदर ऑर्बिटल और भी बड़ा है। तो आपका वैकेंट ऑर्बिटल विल बी मोर अवेलेबल इन केस ऑफ, ठीक है, एंड विल बी लेस अवेलेबल इन दिस केस, एंड देयरबाय दिस विल बी a poor Lewis acid and Bi3 will be a better Lewis acid. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स कौन होते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसिस आर द वंस व्हिच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, नो व्हाट्स अ प्रोटॉन? दिस इज द प्रोटॉन, ठीक है। आई होप दिस इज नॉट अ कंफ्यूजन कि ये प्रोटॉन क्यों कहला रहा है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन में देयर इज अ प्रोटॉन व्हिच इज एट द न्यूक्लियस, ये प्रोटियम की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के अंदर, एंड देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन अवेलेबल इन प्रोटियम। सो इफ आई रिमूव दिस वन इलेक्ट्रॉन, it will become H plus, which is nothing but a proton. ठीक है, so any substance which accepts a proton is a base, any substance which donates a proton is a acid. ठीक है, तो let's suppose there is a reaction which is happening. Ammonia gas is reacting with HCl gas to form ammonium chloride solid. So these two substances are reacting not in aqueous medium but in the gaseous state, and their pure form is reacting. ठीक है, and in this reaction they're forming ammonium chloride. So this is sort of an acid base reaction and a salt formation is happening. पर इसमें तो कोई H plus OH minus नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या? इसका मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट करा है और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा है। सो कैसे? ये हो गया आपका, फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए, लेट्स सपोज
ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन एंड ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो दिस विल फॉर्म अमोनियम आइन एंड क्लोराइड एंड सो क्या हुआ, HCl से प्रोटॉन, HCl ने प्रोटॉन डोनेट करा और अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, तो HCl इज अ ब्रॉन्सिड एसिड एंड अमोनिया इज अ ब्रॉन्सिड बेस। ठीक है, क्लियर हुआ, डाउट कोई? ये रेस कर दूं, ठीक है। अब इसमें लॉरी ब्रॉन्सिड की थ्योरी में एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास, मैंने कहा कि NH3 है, या फिर चलो ऐसे एग्जांपल लिखते हैं, मेरे पास HCl है which can donate a proton and can form Cl minus। ठीक है, नाउ अब हमने कहा कि हर रिएक्शन रिवर्स तो करती है, तो लेट्स सपोज अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन भी रिवर्स तो करेगी। अगर ये रिएक्शन रिवर्स करेगी तो इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग, in this reverse process Cl minus is accepting a proton to form HCl। तो मैं क्या इस बेसिस पे Cl minus को बेस बोल सकता हूं, है ना, कि भाई Cl minus एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस हो गया, HCl एक प्रोटॉन डोनर है तो ये क्या हो गया, एसिड। अब लेकिन ये दोनों जो हैं ये आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं एक तरीके से, इसने प्रोटॉन रिलीज करा तो ये बन गया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा तो ये बन गया, तो कैन आई से दैट द टू आर related to each other or conjugated to each other, so they are called conjugate acid base pair। ठीक है, so now if I'll be referring to Cl minus, what I'll be saying is that Cl minus is conjugate base of HCl and HCl is conjugate acid of Cl minus। Is it p pi bond? Okay. ये क्लियर हो गया? ठीक है, I think there's a doubt with the previous concept. I'll just quickly take a pause in this concept and we'll cover that. So concept is, so the question was, is it a p pi bonding? Yes, it is a p pi bonding. So what's a p pi bonding? It's nothing but it's a complicated name to the same basic situation where what is happening is, give me a pi, any example of pi bond. Ethene. Okay. Now in this case, this carbon is forming a pi bond with this carbon, in which it is using its 2p orbital. It is using its 2p orbital. So when a p orbital is forming a pi bond with another p orbital, this is called p pi bonding. Okay. But when, for example, one of the atom is using its p orbital and another atom is using its d orbital to form the pi bond, this is called d pi p pi bond. So this is nothing but a pi bond. इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, pi bond which is formed by the d orbital of one atom and p orbital of the another atom. अब third situation है कि for example मेरे पास there are two atoms which are forming a pi bond. इस atom ने भी अपना d orbital use किया और इस atom ने भी अपना d orbital use करा to form the pi bond. Then this will be called as d pi bond. ठीक है, so in the case of BF3 वाला केस में, in this case this boron has a vacant 2p orbital, this fluorine has a filled 2p orbital, the two are forming a bond, pi bond. तो ये कौन से टाइप का पाई बॉन्ड हो जाएगा, p pi बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? कोई मुझे आप p pi d pi या d pi का एग्जांपल दे सकते हो?
Can you give me an example of this d pi or p pi bond? अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एक्सप्लेन कर दोगे? करें डिस्कस? हाँ है इसमें? कैन एक्सप्लेन? नो. सो इन केस ऑफ SO3 देखो क्या हो रहा है. पहले इसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हो मुझे? सल्फर की यहाँ पे क्या है, कितनी है? sp2 ये तो निकाल लेते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो sp2 इसकी हाइब्रिडेशन आ गई. अब सल्फर की का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वैलेंस शेल. तो वैलेंस शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. इफ आई लुक एट द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन सल्फर कैन ओनली फॉर्म 2 बॉन्ड्स. ठीक है. बट इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ SO3, इट्स फॉर्मिंग 6 बॉन्ड्स, 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स. ठीक है. एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो शेप हो गया ट्रायगोनल प्लानर. ठीक है. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहां पे अगर यही 2 ऑर्बिटल होते खाली, मतलब एज इन सिंगल सिंगल वाले, तो ये बेसिकली 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता था, लेकिन एक्चुअली ज्यादा बना देता है. कैसे? इसके पास 3d भी अवेलेबल है एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर कैन एक्साइट टू दिस केस. तो अगर ये एक्साइट कर जाता है तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. अगर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन पर एक्साइट कर जाता है तो इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो नाउ इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स. ठीक है. ये इसकी कोवेलेंसी एक्सपैंड करके बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p2d और s2d. नाउ अब दिस sulfur has hybridized only 3 orbitals, 1 s and 2 of p, तो it is sp2. तो यानी कि और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो यानी कि तीनों सिग्मा बॉन्ड किससे बने होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू. ठीक है. अब आपके पास 3 ऑर्बिटल बचे जिनके पास सिंगल सिंगल और लाइक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. दे कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड. ऑक्सीजन के पास भी ऐसा ही है कि 2p में बेसिकली सिंगल होते हैं. ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा? 2p. तो यानी कि वन ऑफ द पाई बॉन्ड which will be formed by sulfur and oxygen will be by 3p of sulfur and 2p of oxygen. So one of the type will be 3p pi 2p pi. अब आप सल्फर के पास आपके पास 3p तो बचा ही नहीं है. क्या बचा है? 3d and 3d. तो यानी कि दूसरा पाई बॉन्ड बना होगा गॉट इट. तो क्लियर हो गया. तो इनफैक्ट ये इस तरह से आप फिगर आउट भी कर सकते हो अगर आपको कहीं और पे भी करना है फिगर आउट तो. ठीक है. बस आपको देखना है कि डी ऑर्बिटल कहां पे यूज हो रहे हैं पाई बॉन्डिंग में, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लोगे. कर दो रेस. लेट्स गो बैक टू द टॉपिक. So we were discussing conjugate acid base pair concept. Now, so for example, I have got H2O. ठीक है. In this case, oxygen has got a lone pair of electron, which it can donate to H plus
if it accepts this H plus or donate a lone pair of electron to the H plus, it will be forming hydronium ion. ठीक है? This H3O plus can lose this H plus and form this. तो इन अ वे मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको किस पर्सपेक्टिव से डील कर रहा हूं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ या डोनेट हुआ. तो H2O जो है, दिस इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन एंड H3O प्लस इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन बैक. ठीक है? तो अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस हो गया. एंड द टू आर एक्चुअली इंटरकन्वर्टिंग टू ईच अदर जस्ट बाय एक्सचेंजिंग अ प्रोटॉन. दिस ये डोनेट करता है तो ये बन जाता है, ये एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है. तो देयर टू आर आपस में कॉन्जुगेटेड टू ईच अदर. ठीक है? So I can say that H3O plus is conjugate acid of H2O and H2O is conjugate base of H3O plus. Now OH minus. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि what is the conjugate acid of OH minus? H2O. भाई conjugate acid कौन होगा? जिसमें से H plus लूज करने पे यही बन जाए. तो what all you have to do is just add H plus to it. तो इसमें H plus ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? H2O. सो बेसिकली इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया? H2O. और H2O कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया? OH माइनस. ठीक है? अच्छा, अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी यहां पे दोनों के केस में, दैट H2O कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स H3O प्लस. इट कैन ऑल्सो डोनेट अ प्रोटॉन एंड कैन फॉर्म OH माइनस. तो in one situation it is acting as a base, in another situation it is acting as a acid. अब Arrhenius थ्योरी में ऐसे सब्सटेंस जो एसिड का भी रोल प्ले कर सकते हैं और बेस का भी कर सकते हैं, they are called एम्फोटेरिक. याद है ना, एम्फोटेरिक बोलते हैं. बहुत ही सिमिलर वही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि एसिड का भी रोल प्ले कर रहा है, बेस का भी कर रहा है. यहां पर हम लोग इन्हें एम्फोटेरिक ना बोलकर एम्फीप्रोटिक बोलते हैं. So amphiprotic are those substances which can act as a Bronsted acid as well as a Bronsted base. ठीक है? तो हमें बस ये देखना है कि कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है. ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब इसके अराउंड आई एम जस्ट गोना आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू देम. There is an ion called HSO4 minus. It's called bisulfate ion. Is it amphiprotic? Bisulfate ion, HSO4 minus. Yes, it is. So if I give it a proton and it accepts it, it forms H2SO4. If it loses a proton, it will form 2 minus. So yes, it's an amphiprotic substance. Is it an amphiprotic substance? H2PO2 minus. होगा ये एम्फीप्रोटिक? नहीं, क्यों? एक्सेप्ट नहीं कर सकता. मेरी शक्ल पे ना जाओ, हो सकता है कर रहा हो. डोंट जज द क्वेश्चंस बाय माय एक्सप्रेशंस कि हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा पक्का. जस्ट क्वेश्चन को नॉर्मली देखो, वो मैं पोकर फेस भी बना सकता हूँ. ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या है. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और इन्वॉल्व डेफिनेटली. ये बेसिकली अगर इसमें आप प्रोटॉन एक्सेप्ट करोगे तो ये बनाएगा H3PO2. ठीक है? दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है? अगर इससे मैं प्रोटॉन रिलीज करवाना चाहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इससे H+ निकालूंगा तो ये बना देगा HPO2 2 माइनस. मतलब नॉर्मल पेपर पे लिखा तो ये है, हो सकता है. एंड आई वुड डेफिनेटली से दैट दिस इज एम्फीप्रोटिक इन नेचर, बट इट्स नॉट. व्हाई? बिकॉज
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसके अंदर अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो सही से, तो इसमें ये हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, इसके बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत हाई होगी, दिस हाइड्रोजन कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H+, बट ये दोनों हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में नहीं निकल सकते क्योंकि फास्फोरस और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है, मतलब दिस इज स्लाइटली हायर देन दिस वन, तो ऑलमोस्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट 2.1 है, तो यानी कि यहां पर ऐसा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस वाला बहुत ज्यादा होगा नहीं, तो दिस H कैन नॉट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H+, एंड दैट इज व्हाई these two hydrogen cannot come out in the form of proton or H+. Now, अब मैंने आपको दिया H2PO2 minus, which means this case, जिसमें से मैंने एक प्रोटॉन ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो क्या इसमें से अब दूसरा प्रोटॉन निकल सकता है? नहीं, तो यानी कि ये सिचुएशन गलत है। बट क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? यस, इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कैन फॉर्म द एसिड विच इट वाज ठीक है, आया समझ में? तो यानी कि दिस इज नॉट एम्फीप्रोटिक इन नेचर, दिस कैन ओनली एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, दिस कैन नॉट एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं क्यों यहां गड़बड़ आ रही है, मतलब एज इन ये तो एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा, बट लेकिन आपको एग्जांपल करने के बाद हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, मतलब हाउ वुड आई नो कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हाँ, तो हमें थोड़ा सबके नहीं भी पता हो तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मिटा दूं? So there are two types of inorganic acids mostly we deal with. एक कहलाते हैं ऑक्सो एसिड्स और दूसरे कहलाते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, I'll cover ऑक्सो एसिड्स फर्स्ट। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? यूजुअली अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में समझूं तो ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनका एक ऑक्सो लिंकेज होता है। ठीक है, मतलब एलिमेंट जो है, दिस इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सो लिंकेज और ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, नाउ दिस एलिमेंट is bonded to oxygen and which is to hydrogen. This may not have other bonds, in which case this hydrogen is acidic hydrogen. Acidic hydrogen means this hydrogen can come out in the form of H+. ठीक है, अच्छा इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी होता है जिसमें ये हाइड्रोजन डायरेक्टली यहां पे अटैच्ड है, बट नो प्रॉब्लम, दिस हाइड्रोजन इज अगेन एसिडिक. So they are called oxo acid or oxy acid because they contain one or more than one oxy linkages. ठीक है, अब किसका ऑक्सी एसिड है? उस एलिमेंट का जिसका ऑक्सो लिंकेज हो रहा है. ठीक है, अब ये लग रहा होगा पता नहीं क्या बता दिया है. ठीक है, इसको मैं भी समझा दिखाता हूं. देखो, सल्फ्यूरिक एसिड पता है? गुड. अभी सल्फ्यूरिक एसिड में से ये पार्ट हटा देता हूं, ये पार्ट ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस इज द ऑक्सो लिंकेज ऑफ सल्फर, दिस इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें से ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर आता है. सो कैन आई से दैट दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर? है ना, बोल सकता हूं. तो बस इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें एक्चुअली ऑक्सो लिंकेज एक से ज्यादा है और OH वाला जो पार्ट है वो भी एक से ज्यादा है. तो ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर आ सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर आ सकता है. तो दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड इट्स नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड. ये वाला, हाँ जी बेटा, ऑक्सो एसिड वाला ना. तो मैं बता रहा हूं कि ऑक्सो एसिड में क्या होता है कि जैसे एलिमेंट के हिसाब से ऑक्सो एसिड डिफाइन होता है. तो जैसे मैंने कहा सल्फर के ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड सो फोर्थ. नाउ व्हाट आर दे एक्चुअली? इन ऑक्सो एसिड्स यू वुड फाइंड ऑक्सो लिंकेज और ऑक्सी लिंकेज, इसी को ऑक्सो या ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं. ऑक्सो लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज क्या होता है? कोई एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो लिंकेज. ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ ऑक्सो लिंकेज, देयर मे बी मोर इन द सेम एलिमेंट, मतलब इज फॉर इन द सेम कंपाउंड विद द सेम एलिमेंट, कि उसने हो सकता है डबल बॉन्ड ओ, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे. ठीक है, बट एटलीस्ट एक है. सेकंड, दिस एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अ एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसा हाइड्रोजन व्हिच कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H+. ठीक है, दिस मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट और मे बी कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन,
दिस इज द मोस्ट कॉमन केस यू वुड ऑब्जर्व. मैंने कहा मैं सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं. इस स्ट्रक्चर में इफ यू ऑब्जर्व देयर इज सल्फर एटम हैविंग अ ऑक्सो लिंकेज connected to a oxygen which is connected to a hydrogen, and that hydrogen is acidic. So if you look at this part, this is something similar to this one. So can I say that this is oxo acid of sulfur? अब आपको कहोगे बाकी पार्ट भी है, कोई बात नहीं, बाकी पार्ट सिमिलर है. मैंने कहा ऑक्सो लिंकेज एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा. डजंट रियली मैटर. मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए. दिस ऑक्सो लिंकेज शुड बी मिनिमम 1 and there should be at least 1 acidic hydrogen, then only it can be called as acid. ठीक है. और क्योंकि ऑक्सो लिंकेज है इसलिए इस तरह के एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स. लिंकेज मींस द बॉन्ड, दैट्स इट. एसिड को ना क्या बोल रहे हैं? ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक एलिमेंट की ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है. ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब यू कैन जस्ट रिलेट इट. ये मिटा दो. Now what do you exactly mean by oxo acids of an element? Let's do it with an example. Oxo acids of chlorine. ठीक है. Now, so मेरे पास क्लोरीन का एक ऑक्सो एसिड है जिसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एक दूसरा ऑक्सो एसिड है जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक तीसरा ऑक्सो एसिड है जिसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, एंड देयर इज फोर्थ जिसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4. ठीक है. If you look at the situation, the element is having a oxo linkage, element is having a oxo linkage, element is having 2 oxo linkages, element is having 3 oxo linkages. Doesn't really matter to me whether it's 2, 3, 4, 5. It does not impact me now. What should be important is that there should be at least 1 oxo linkage, and there should be at least 1 acidic hydrogen. This hydrogen can come out in the form of H+, yes, because chlorine is highly electronegative atom. तो ये H+ की फॉर्म में आ सकता है. ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये भी एसिडिक है. तो ये चारों के चारों आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन. नाउ लेट्स नेम देम. This is called Halous acid. This is called Halic acid. This is called hypohalous acid, and this is called perhalic acid. ठीक है. अब मैंने आपको अगेन लिखा तो क्लोरीन है, यहाँ पे हैलस लिखा हुआ है. सो एक्चुअली ये जो ऑक्सो एसिड्स मैंने बनाए हैं ये क्लोरीन ही नहीं, ब्रोमीन के भी बन सकते हैं, आयोडीन के भी बन सकते हैं, लेट्स सपोज क्लोरीन के भी बन सकते हैं. इनमें कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ स्टेबल नहीं होते. बट अगर ये चारों बनेंगे तो जैसे क्लोरीन के केस में इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड. ठीक है. ठीक है. Now in this case, if you observe this situation and calculate the oxidation state of each element here, it will come out to be +1, it will come out to be +3 here, it will come out to be +5, it will come out to be +7. Higher the oxidation state of this central atom, higher the strength of the acid, which means HClO4 will be the strongest acid amongst all these 4 and then so on. ठीक है. तो ये ऑक्सो एसिड्स में हम लोग रूल लगा सकते हैं. ये सेम चीज इज एप्लीकेबल टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एज वेल. ठीक है. अभी बताता हूं एग्जांपल से. ये क्लियर हुआ? ठीक है. अच्छा, अब इफ आई जस्ट लिंक बैक टू द कांसेप्ट की स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाली कैटेगरी. ठीक है. ऑल्दो एसिड्स को हम हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे तो देयर वुड बी वन व्हिच विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अनदर वुड बी वीक एसिड, बिकॉज़ वी आर जस्ट कंपेयरिंग देम. बट इन जनरल अगर मैं बोलता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट मींस आई एम रेफरिंग दैट एसिड एज कि ये कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा.
and I'm telling that like, or I'm referring one acid as weak acid, it means it will not ionize completely. ठीक है? Now, in such a situation, if I want to ask you, for example, whether HCl is a strong acid or a weak acid, it's a strong acid, it ionize completely. ठीक है? तो अगर मैं इनको कैटेगराइज करना चाहता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल करेंगे या वीक की कैटेगरी में फॉल करेंगे, सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, ये सारे के सारे. तो यू कैन रिमेंबर दिस. यही सेम केस ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के साथ में भी है. तो यानी कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो आपको एक माइंड में वो भी रहेगा रफली आइडिया कि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, इरेज कर दूंगे. So let's quickly go through the oxo acids of sulfur. I'm not referring all the oxo acids of sulfur. I'm just referring the two cases. H2SO4 and H2SO3. Sulfurous acid and sulfuric acid. ठीक है, both of them are oxo acids of sulfur. Now, if you notice one thing here, इसका oxidation state is +6, इसका oxidation state is +4. Definitely, on comparison of the two, this will be a stronger acid than this one. ठीक है, ये दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, और दोनों में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. Second thing which you can also observe is that oxo acids of sulfur, most of the oxo acids of sulfur are actually dibasic in nature, which means they can furnish 2H plus per molecule. ठीक है. And all the oxo acids of halogens are monobasic in nature. आप oxo जो मैंने अभी पिछले एग्जांपल लिए थे halogens वाले में, सब में एक ही मॉलिक्यूल से एक H plus निकल सकता है. तो all of them are monobasic in nature. ये आप लिख सकते हो, मतलब you can just remember it as a rule. ठीक है. Now, ये erase कर दूं. Just last quick two cases. One is of nitrogen, another is that of phosphorus. So नाइट्रोजन में आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास दो एसिड HNO2 एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें +5. डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. स्ट्रक्चर ठीक है, क्लियर. नाउ so this will be stronger acid, this will be weaker acid. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफन इसको मतलब वीक की कैटेगरी में आप कह सकते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग की साइड पे आ जाता है. ठीक है, इरेज कर दूं. लास्ट केस, ये इंपॉर्टेंट है amongst all of them, and we'll conclude with this. Oxo acids of phosphorus. Now why this case is important, let's see. मेरे पास 3 पॉपुलर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैं. ठीक है. अच्छा, मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, कुछ केसेस ले रहा हूं. इट मींस कि खाली ये 3 नहीं, और भी होते हैं. सल्फर के खाली 2 ऑक्सो एसिड नहीं होते, और भी होते हैं. नाइट्रोजन के भी और भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं. ठीक है. तो फास्फोरस के 3 मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड्स हैं. दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड. Now, in this case, if I look at the molecular formula, तो मुझे देख के लग रहा है कि तीनों की जो कहते हैं as in basicity होगी, that will be 3. ये ट्राइबेसिक होगा, ट्राइबेसिक होगा, ट्राइबेसिक होगा, बट एक्चुअली नहीं होते. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर आप इनका स्ट्रक्चर समझो, जो कि याद रखना भी बहुत मुश्किल नहीं है. कैसे? What you should do is you should just draw this frame in all the 3 cases. एक बार ये देख लो, ये याद करना बहुत इजी है, and you would be able to remember this structure. तो ये तीनों में सेम फ्रेम ड्रॉ कर लीजिए. Now distribute oxygen and then hydrogen. तो यहां पर मेरे पास एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस मैंने ले लिया है, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, मैंने 3 को यहां पे डाल दिया, and then हाइड्रोजन. यहां पे 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, डाल दिए, 3 हाइड्रोजन है.
यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा बचा हुआ है और ये that's how you can remember these structures. If you see these structures, this hydrogen is acidic, 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 and acidic, which means this is tribasic, this is dibasic, and this is monobasic. ठीक है. One more thing you can observe here is कि भाई ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसमें दो है, इसमें एक है. These hydrogens often actually get utilized in the reducing property of this compound. So they're also called at times reducing hydrogen. खैर वो छोड़ दो, important नहीं है अभी. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. एक तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है जो जिसके ऊपर मैंने वो जो प्रोटिक वाला एग्जांपल पूछा था, इसी में ये कंफ्यूजन हो रहा होता है. ठीक है. सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो विल बी +1, +3 एंड +5. नाउ एज पर रूल कि if I'm comparing the acidic strength of oxo acids of the same element, then acidic strength increases with increasing oxidation state. This rule is not applicable here. I'll explain it in the next class. Okay, so this is it for today. In the next, I'll just give you a brief of like what we'll be discussing in the next class. So next class we'll be talking about the pH, what it is all about, and how we can calculate pH in various cases of acids, bases, buffer, salt hydrolysis. So I think we'll be able to cover till salt hydrolysis in the next class. Okay. Okay. Thank you. खाना दे दो पहले. खाना दे दो. खाना खा लो, पीछे मत चलो. फ्रेंड पता नहीं कब दे दूंगी, कब वो प्रिंट होगा, कब नहीं होगा. प्रिंट क्यों होगा? माइक का है, माइक ये इसका ये इसका शफल हो जाए.